इंडिया, साउथ इंडिया से के उस क्षेत्र से जहां से सर born and brought up हुए. I'm reading it in Hindi, sir, for the convenience of most of our listener and the participant. Please pardon me. So, Shri T.L. Narasimha Rao sir was born in 15th March 1956 in the Guntur district of Andhra Pradesh, and then he completed his early education in commerce, graduated in commerce in the year 1976 from Andhra Pradesh University, and he's also a graduate diploma holder in materials management from Indian Institute of Materials Management. Inspired by the life story of Yogi Vemana, the 15th century saint of Andhra Pradesh, he embraced the path of yoga during the year 1979. He reached His Holiness Yogacharya Sri Raparti Rama Raoji, who attained the Nirvikalp Samadhi, and under the adept guidance of his master, he learned Hatha Yoga, Asana, Pranayama, Mudra, and other advanced Kriya related to higher practice. And Raj Yoga techniques also, like meditation, Dharana, Dhyan, Samadhi, and etc. And the most important, he exposed to the internal and external practices of yoga in integrity. He is trained in the yoga Siddha Purush of Himalayan tradition pioneered by Yogeshwara Sri Ram Lal Prabhuji Maharaj. And he is a lifetime brahmachari dedicated to yoga. कल्पना कर सकते हैं जब एक ब्रह्मचारी बोलता है तो उसके जो वाणी से ओज तेज वर्चस्व निकलता है वो हम सबके मार्ग को प्रशस्त करता है. और जैसा कि इस बार की थीम है योग, यज्ञ और आयुर्वेदा को जीने वाले हमारे ऐसे महान योगी श्री टी.एल. नरसिम्हा राव जी का भाव भरा अभिनंदन है. ही इज द फाउंडर मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ योगा कॉन्शियसनेस ट्रस्ट YCT Vishakhapatnam, formed by the senior disciples of Master. He participated in advanced training program of Yoga Consciousness Trust. Presently, he is the head of YCT, Yoga Consciousness Trust, and he conducts lot of yoga activities in Andhra Pradesh, and he is in the Telangana region of a particular part of India under this YCT banner. He is well versed with various techniques of yoga, and he has been sailing the path of yoga for last 44 years. 44 साल से योग की साधना में रत ऐसे हमारे आदरणीय टी.एल. नरसिम्हा राव जी का भाव भरा अभिनंदन है. वर्चुअल अप्लॉज से सर मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और सभी हमारे पार्टिसिपेंट जो आपको बेसब्री से सुनने के लिए आतुर हैं उनका मार्गदर्शन कीजिए. ओवर टू यू सर, श्री टी.एल. नरसिम्हा राव सर, प्रेसिडेंट Yoga Consciousness Trust. Thank you. Oh. 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 Om Namo Brahmadibhyo Brahma Vidya Sampradaya Kartrubhyo Vamsya Rushibhyo Mahadbhyo Namo Depression according to WHO, World Health Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Om Namah. Humble salutations to the great Rishis and our beloved Master, to the lotus feet of our beloved Master, Yogacharya Pujya Raparti Rama Raoji, who taught us this yoga, etc. And I offer my salutations to those who attained Yoga Siddhi and who have been striving to attain Siddhi. And I offer my congratulations and my thanks
to the organizers, organized by this program organized by Sri Ram Yoga Training and Research Society, Kanda, uh, uh, of UP Bharat, Pratapgarh, UP Bharat. Pratapgarh maybe. Okay, okay. In collaboration with the Department of Ayush, AIMS, Rishikesh, etc., UK, and Bharat. So I wish one and all the best, and I seek blessings of Almighty for successful execution of this program by the organizers, etc. I pray Almighty to bestow you with His divine showerings day in and day out. This program is mantra, yoga, yagna for well-being of the women. So our subject is yoga and to some extent mantra. So what are the Mahayogas? Women, first of all, the importance of women and the children. Every nation, the development is assessed with the health of offsprings and women. Every woman is a fountainhead of the family. Gruhini, Grihastha. Narayani, Narayana. So every woman is a fountainhead of the family, and she has to take the responsibility of home ministry, inventory manager, and security, well-being, and health manager, etc., etc. All managements are run by women. So woman is fountainhead of the family. Gruhini is very important, and the health of women is very, very important in the family welfare and well-being of the society, well-being of the family, and well-being of the nation by and large. So that is the importance of woman in the society. She gives birth to offsprings. Offsprings, today's children, today children are going to be tomorrow's citizens. So Matadevo Bhava. So our culture, there is some disturbances from participants. I request them to be silent. So I request the organizers to mute the participants. So to avoid unscrupulous disturbances in the talk. So I request coming all the participants to kindly mute. I requested earlier also, otherwise I will remove you yes, from the yes. meeting. I Savadhana, request Savadhana, Savadhana. Bhavan. Okay. So coming back to our subject, the role of women, the role of new offsprings, very, very important. And the nation's building, woman is source of production of good progeny, good generations. So it is our prime responsibility. I appreciate the organizers for having taken up this subject, which is the need of the hour. So women health care is very, very important. She must be at an infant level, mother should look after. In the adolescence, both mother and father have to take care. We have to provide umbrella. Just as we Exactly. use umbrella in the rainy season, whatever way we need, or even against the sun, the care should be exercised by the parents because she undergoes different aspects of her constitutional aspects. So parentage should necessarily take care during their childhood and adolescence, and even in college education. Appropriate care should be taken and appropriate nutrition should be provided. First thing is good nutrition, good healthy habits must be taught by the parentage. Then comes to at the time of say puberty or at the time of changes, cycle changes.
the parent should take care of the child and providing all the required things in respect of food and health care at the time of puberty. After puberty, matrimonial life, and husband should be a guardian for the wife, and he Ardhanarishwaram, half of the body, he should take care of the woman. And at the old days, the children should necessarily take care of Matrudev Sajaskal, we call it. And during Sajaskal, it is the prime responsibility of the children or offsprings to take care of not only mother, father also. It is unwise to give false declarations and put them in old age homes or asylums, giving up their, escaping from their prime responsibility of serving the Matrudevo Bhava, Pitrudevo Bhava. So these are the part of our culture. We should necessarily follow. Why we are getting into disease or problems? We have cast aside, cultural values and cultural virtues established right from our creation, right from our creation. The established cultural values must necessarily be followed by the parentage as well as by and large all the people of the society. So coming back to what are the yogas? Mahayogas are five. One is Laya Yoga. There are 1 crore and 50 lakhs techniques in Laya Yoga. And another thing is, next to Laya Yoga comes in order Hatha Yoga. And Hatha Yoga is better than Laya Yoga. And remember, Hatha Yoga is a preparatory step for Raja Yoga, or preparatory step for, and in between, Mantra Yoga. Mantra is very, very powerful. I want to recall the Bhopal incident. Exhale down. Where left leg, inhale straight. There is some discrepancy. Exhale Somebody down. is teaching practical yoga. Hello. I request the teacher doing practical Exhale yoga down. to be away from us. Sir, So- done. I removed them. No, please. The Sorry thing for is, interruption. coming back to Mantra Yoga and the effect of Mantra Yoga, it was late, 70s and between 70s and 80s. The Bhopal incident we all remember, even today, the place where Pandit Acharyaji, Ramasharma Acharyaji, where he was conducting Homa and Yagna, the beautiful Gayatri Mantra impact. That place was not polluted, even in spite of Union Carbide episode. So I would like to remind them. Next higher is Mantra Yoga. Mantra Yoga, it has 5 aspects, Matra, Vaikhari, Majjama, Para, Pasyanti, Para. Para means that at Pasyanti level, Mantra Yoga and Raj Yoga, Mantra Yoga reaches the level of Raj Yoga. That vibration of mantra purifies. And Hatha Yoga, people are using yoga merely for therapeutic purpose. Therapy is a secondary utility. Main utility of yoga is holistic health. The main aim of yoga is yoga practice. All yoga practices are psychophysical, psychological. The 3 levels, emotional setting, psychological setting, philosophical tuning, and physical well-being. All these aspects are well streamlined in the process of yoga. And still there is discrepancy from the participants. So, Sir, actually, the problem is people have bought smartphone
and they Ask don't them know how again. to mute. And I have asked so many times. Yes, yes. Still, I request all the participants, please, if you want to get the real Indeed. essence of the Yes, particular yes. session, Because please put your um, microphones in a silent and mute mode so that you can listen to such a wonderful experience, Yoga Guru. Please, I then come. request all the participants. So coming back to, and the entire yoga is studied in Gayatri Mantra. So when they reach the Laksha of center of mantra, they get into Raja Yoga. And Hatha Yoga is preparation for good practice of Mantra Yoga as well as Hatha Yoga. Mantra also contains pranayama. Hatha Yoga is containing asana pranayama. So Ashtanga Yoga is embedded yoga, right from, say, Yamanimas, principles and practices, followed by asanas. Asana is the stability and flexibility, and then followed by pranayam for the pranic sheath, and pratyahara, dharana for the manomaya sheath, mental sheath, and anandamaya sheath, jhana and samadhi for purifying the anandamaya sheath. And the last one is yourself. So this preparation is done through Hatha Yoga. And entire system is addressed. Sapta Dhatus are addressed to Hatha Yoga. And not only physical body, that dreams is subconscious body, astral body, and that gets into deep sleep state is causal body. These two inner bodies are also treated through the process of yoga. That we have to remember. We are not treating only physical body. We are treating inner bodies, astral body and causal body. Karan Sharir or Sukshma Sharir, Tejas Sharir. So this treatment is done whether you want to get it or not. The process envisages treatment of three bodies. Annamaya kosha, and all koshas are also purified. Annamaya kosha and pranamaya kosha, manomaya kosha, anandamaya kosha, all sheaths are treated. And these things, the first primary thing is treating the physical body. We start with cleansing systems, etc., etc. And then that is preparatory step for pranayama. And when the system is clean, pranayama can be performed. The bandhas and say puraka rechika and kumbhaka, all this they are strengthened. And mudras are there, various mudras. Mola bandhas are there. Panchavayus, the Mukhya Prana, the main prana, becomes pollution free. The asymmetrical prana travels in a symmetrical way. Savya, apasavya. The apasavya prana is diverted into symmetrical way due to the process of pranayama, etc. That one has to do meticulously under the care of an adept teacher who is well versed, well acquainted with the theory and practice of pranayama. So pranayama, toning up prana and remove. Not only pranayama helps treating the panchavayus, it also panchavayus, the mind runs after panchavayus. Mukhya prana, once it is treated well, mano nirmalyam takes place.
purification of the mind takes place. Then Shushumna awareness one gets into. Once Shushumna is open, with the indication of free flow through both the nostrils, then he is prepared for real meditation. And not only that, he can also sense his inner energy on his eyebrow center, the beautiful vibration. We can call it scientifically, it is also a lessened term. Scientifically, we can call it electromagnetic energy. And not only that, the reverberation of Om are beautiful vibrations created in the biological system can be heard through your right ear once pranayama is well established and the individual practitioner attains perfection in yoga. And the whole process of yoga is not isometric, it is isotonic. All the saptadhatus from skin to bone marrow are tampered, bombarded, and all the pollutants are removed. And you will be able to sense, cognize, and recognize your subtlest energy, that is Kundalini Shakti, Chaitanya Shakti. And in its presence, everything is going on. So that is the importance of yoga. And Raja Yoga and Hatha Yoga teaches you external pranayama. Raja Yoga makes you experience internal pranayama. Okay? So this is the aspect of yoga. And not only healthcare, once the holistic health is retained, one is successful in retention of dharana, the inner energy, and intensification of dharana, that is meditation. And intensified meditation is nothing but a wakeful, deep sleep state, samadhi. And in samadhi, with sankalpa, you can treat your body. In meditation, if you meditate on a particular body, particular part, the spiritual treatment takes place. So treatment is of three types: physical, psychological, and spiritual. Okay. So three-tier treatment we have to do, even therapy also. We are patient is to suffer. Therapist is to treat. To cure is God. Remember that. So coming back to it is very, very important. What are the problems encountered by the women, Most of the Indian women, first, some of the time is less, I will take less time. Most of the women, they suffer from anemia. Most of the women, their blood hemoglobin level is 8 to 11%, not more than that. But they have to retain at least 12 to 13%. They have to keep. But most of the Indian women are known for their anemic conditions. One is iron content food, protein enriched foods they have to take instead of taking more carbohydrates, etc. In addition to that, the Ujjayi pranayama greatly helps. Bhastrika and Kapalabhati, they are very good for respiratory and other excretory functions, etc., etc. And the asanas, Marjari and Vyaghra and Shashanka, Ushtra, etc., etc. And Sarvangasana is queen of asanas. It will take care of even prolapses, etc. All the systems are addressed by Sarvangasana. And Surya Namaskaras, of course, most of the people are doing. They're all helpful. Coming back to another thing is, first thing is the anemic condition, then is menstrual problems. Menstrual problems, there are different types, Right from puberty, they have to be very, very careful. Proper menstruation is good for health. And during the menstrual problems, they face some difficulties, hormonal disturbances, etc., etc. Amenorrhea. Amenorrhea is nothing but spasmodic pain they undergo. That is primary and secondary.
and they get spasm and they get abdominal pain, etc. And once it is proceeding to the menstrual cycle, once the bleeding flow is more, and that gets subsided. And secondary is also there. It is irrespective of age, all ages people will get secondary problem and amenorrhea. So all these things can be addressed through pranayama techniques and asanas, etc., etc. And next one is dysmenorrhea and menorrhea. The painful, this may be due to hormonal changes, emotional or mental disturbances, or fear or guilt or whatever they entertain in the mind. And they can be rectified. Emotional imbalance, undergoing, irregular, painful, irregular, excessive, undergoing emotional imbalance, etc., can be rectified with regular, simple yoga practice. This is possible. So the practices are the beautiful, asanas they can do. Marjari and Naukasana, etc., etc., and sometimes Bhujangasana and before. These are all preventive. During that time, they should not do, and preventive as a care, as an abundant care they can do. And not only that, Marjari, Vyagra, and some other Shashanka. Shashanka is stress relieving asana, and regular pranayama. If you treat your pranamaya kosha well, all these problems can be overcome. So, and one more thing is you must accept things as naturally as they are. Non-acceptance, rejection, not mentally prepared, that calmness and pause, piousness, if you retain that, you can overcome, and automatically, psychological tuning, automatically you will be able to endure and come out successfully, and the pain and discomfort will not bother you, and they cease once you are stable. The stability is restored through yoga, psychophysical exercises of yoga, pranayama and other things. They are all very, very helpful. And Ustrasana. And I would like to tell you, there's a beautiful mudra devised by our master, akin to Udyan, Anala Mudra. You have to keep your stomach free, vacuum, keep your stomach in vacuum condition, but not switch over to, Udyana Bandha. You have to do only Mula Bandha and Jaladhar Bandha, and keep your stomach in vacuum condition. Make abdominal movements in such a way that yogic fire is generated to treat your system. This is called Anala Mudra. My Guruji invented this, and we have administered, and this takes care of all round health of the individuals, irrespective of sex or gender. Okay. So, Anala Mudra, not only that, we have Ashwini Mudra also greatly helps, even post-operative urine dribbling, etc., etc., develop urogenital. I would like to tell you, 27 urogenital problems can be alleviated provided you perfect yourself in Molabandha. For practice of Molabandha, you need to take all the abundant precautions. Okay. So that takes care of it. And not only that, Ashwini Mudra greatly helps. Ashwini Mudra is a prelude for perfection of Molabandha. Remember that. And I taught Ashwini Mudra to those post-operative urine dribbling or urine incontinence, etc., etc. When I switched over to this practice, they got the benefit. And I would love to sell, I'm telling, I must say tell. I would love to tell this Sahajoli
and akin to Vajrauli. Vajrauli not resorting, inserting pipes and all, not necessary. While males and females, while urinating, give passes. Thereby, urethral sphincter gets strengthened, and you can overcome the problems of urine dribbling, etc., even in old age. Okay, and especially those post-operative symptoms like urine dribbling, etc. With this practice and practice of Ashwini Mudra, they were able to encounter. Sir, Huh? thank you so much, sir, for giving us such an enlightening tips. So, And so we have another session okay, planned in line. So I I'm request you to concluding it. kindly wind up. Yes, yes, yes. Huh? And I tell you, all these problems can be the spasmodic, etc., and congestive pains can be averted following. And we also advise internal practices as part of Raj Yoga, etc. Jhana and Dharana, they greatly help you on Shat Chakras. Each system is addressed, the digestive system, reproductive system, and the respiratory system. All these systems are addressed. And we also advocate Panchajnana Mudras. One is the Bhuchari, tip of the nose is the stillness center and center of, you know, health center, and Bhuchari, Majjama, these are the Shushumna centers on your nostrils, and then Chatushpa, the root of the nose. All these centers we have to activate. Bhuchari, Majjama, and Khechari. These are the inner mudras, Jnana mudras, and Shambhavi and Shanmukhi. All these are to be perfected in such a way, and Raja Yoga is superior to Mantra Yoga because Mantra Yoga enters Raja Yoga in its peak. So I advise all the lovers and practitioners of yoga to get into a non-medicinal approach to holistic health, and yoga is a perfect answer to that. At this point of, I must conclude, and I thank one and all for having given me this opportunity. And for all problems, yoga is answer. Not Thank only for you. problems, for holistic health, yoga is answer. Yes, So sir. I conclude with Definitely. this. Hari Om Definitely. Tat Sat. Shubham Hari Astu. Om sir. Shivam Sri Mastu. Thank you Rastu. so God much, sir. bless. Thank you so much, sir. Thank you very Your much. each and every word, the way you spoke was very much soothing, and it was calming us, giving us the peace of mind because it's 44 years of practice. So, Mm. and I'm I- really sorry being as a moderator of this No, session no, no, that no, I you have are to right. interrupt you You are because absolutely right. because I am other also guests are watching my. waiting. Yes, yes. Other The guests are the also waiting. subject is like ocean. I Yeah, could give definitely. only a droplet of ocean. Huh? Thank you Sure, very sir. much. Thank Thank you you very so much. much, sir, God for bless. joining us. Thank you. Hari Thank Om you. Tat Sat. And again, with this, our next prominent speaker, Dr. Rajni Joshi, an eminent professor from IIT Mumbai, has Yeah. already joined. I request ma'am to kindly pin herself so that we can get her in the audience and yes, view. Thank you so much, Guruji, NL TL Narsimha Rao sir, for being with us. And now I would request Dr. Rajni Joshi ma'am, if you have joined, kindly switch on your video and My can video is already on, I think. My video Yeah. okay, is on. just a minute, ma'am. Let me pin you so that the audio. Yes, perfect. So Yeah. most welcome, ma'am, in the sixth international conference on Yog, Yagya, and Ayurveda, which is being organized by the joint efforts of Sri Ram Yoga Society and AIMS Rishikesh. So without wasting much of time, let me introduce to the participants that whom we are going to listen. We are very fortunate that today we are having with us Professor Rajni R. Joshi ma'am. She is a brilliant professor at IIT Bombay, retired in September 2022 after a tenure of nearly 38 years of experience on the faculty of this eminent institute. Still active in research, areas of research expertise are statistical data mining, computational biology, bioinformatics,
Her research interests also include ancient Indian system of medicine and scientific spirituality. That's why she is here. She has been a recipient of several national and international awards, including INSA Young Scientist Award, UNESCO Rosta Young Scientist Award, in recognition of her original and outstanding research. She has published over 60 research papers in reputed international journals, and this is really an inspiration for the researchers or the newly doctorate PhDs which we have done, that how we can get inspiration from such a brilliant lady, that she has 60 research papers, peer reviewed, prestigious, sponsored journals. She's a guest editor of reputed journal. She's also a member of several universities. Apart from this, she is also delivered invited lectures on topic related to scientific spirituality, योग, यज्ञ और आयुर्वेद. ये कोई पोंगा पंडित वाला खेल तो है नहीं, ये भी वैज्ञानिक अध्यात्मवाद से रिलेटेड है. तो मुझे लगता है विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, जिन्होंने 50 से ज़्यादा बुक्स में अपने चैप्टर्स दिए हैं, लिखे हैं, और 38 years of experience है. So with a virtual round of applause, we welcome Dr. Professor Rajni Joshi ma'am, IIT Mumbai. Over to you, ma'am. Thank you, Dr. Bharadwaj, for such nice introduction. I hope am I audible properly? Yes, ma'am, you are perfectly audible, but can you shut down the So I'll curtain? just share my screen. Yeah. Ma'am, And I'll you share the immediately come screen. to the topic. Yeah, I'm sharing. Yeah. I'm asking you to shut down your this curtain so that your face is visible. Okay. The light is Fine. so much from the back that your face is not visible, ma'am. Okay, fine. Okay, thank you. Hello. Hello, Dr. Bhardwaji, kindly inform all the participants after this session, or the technical session will start. So then all the participants will be ready for your presentation, and we will announce their name. I am audible, all of you? Sir, I will inform. Kindly make me admin the WhatsApp group, so the chat will be, I will putting the names and the information there, and also in the chat box. The names of the participant already has been sent, and the list also has been sent to you or to you. Done. Okay. Thank you. Thank I you, will be there. I will be there also with you. So I will announce the name. Okay. No issues. Then perfect. Thank you. Over to you, Rajni Joshi ma'am. Now it's clear. You are visible. Okay. Good. So I'll just come to, first of all, I would like to thank the organizers, especially Dr. Naveen, for giving me this opportunity to share my, I think it's getting slow a little bit. Network issue है मैम शायद, इसलिए आप Yeah, screen I don't know. My network is fine here, but I don't know. Ma'am, your screen is completely blank. Both the screen. Yeah. Now but it's just trying to go to my slideshow. So I'll just start with what I'm going to talk about. My topic is scientific evaluation and validation of Yagya therapy. I don't know why is it taking so long. I think I'll just again open my PPT and. I don't know what has happened. What went wrong? Your voice is audible, but my your voice face is is not audible, face is visible. I don't know why my screen. My face is not visible. I think ma'am has lost the connection. Meanwhile, she joined. I must inform you that please be ready with your paper presentations. Just after this keynote address, we will start the paper presentations. And इसके सिवा जिन लोगों का नाम ऐड किया गया है, they have the participant who have rescheduled their presentation from 8 to 7th for first day. उनके नाम भेज दिए गए हैं, उनको लिंक भी भेज दिया गया है और उनका नाम जो है अनाउंस कर दिया जाएगा लास्ट में. लेकिन पहले जिनका नाम लिखा हुआ है वो है ऑलरेडी फिल द डेट वन presentation, and there is one who will be ready for that. The name is one minute, please wait. Sir, thank you, Dr. Jiten sir, for being with me, because the list is with you and there is a technicalities problem. So I request you to kindly Ankita ji.
Announce the names. अंकिता जी एम्स गुवाहाटी, अंकिता जी एम्स गुवाहाटी, ये पहले नंबर पे अपना प्रेजेंटेशन देगी। इसके बाद में आपके पास सभी के पास लिस्ट है ऑलरेडी, सभी पार्टिसिपेंट के पास भी नंबर की लिस्ट है, और हमारे जो है मॉडरेटर डॉक्टर भारद्वाज जी इनके पास भी लिस्ट है, भेज दी गई है भी। सर मैं और इसके अच्छा बाद चलिए में मैं अभी देख हमारे लेता हूँ सर। हमारे साथ जो है डॉक्टर रजनी मैम, आई आई होप I think she has joined. She has joined again. जो Yes. Rajni ma'am, can you speak? Rajni ma'am has joined again. I'm speaking and I'm Uh, sharing my screen, please. Yeah. Perfect, Okay, perfect, ma'am. perfect. Perfect. Yeah. But I don't know where did my PPT go. Let me pin you, ma'am, first. I don't know what's the problem with the link today. Yeah, I'm just opening. Okay. Are you able to see? I'm opening my PowerPoint. No, ma'am, still not. I've shared my screen. Yeah, now it's sharing, ma'am. Now. I think, and I think this is the internet. Yes, now it's visible, clearly visible. Yeah, Internet so let me problem, ma'am. just, okay, let me just, where did my PowerPoint go? Ma'am, you can search in the search option. I see it's here, but I don't know Yeah. why it's taking so much time. Not an issue, ma'am. It's absolutely Yeah, fine. I'll just try to go fast this time. So Participants, please get ready to listen because he is going to give you the glimpse of Yagya therapy. actually, yeah, How this is like really a scientific work, and it's all pioneering what I'm going to talk. I'm still not getting the slideshow. Yeah, I hope this time it won't trouble. Yes, fine. So there we are. And Dr. has already given, Dr. Bharadwaj has given my introduction. So I would directly, I'll just tell you the story of this Yagya research began when I had taken a sabbatical leave and I had visited Shantikunj Haridwar. That time, Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, way back in 2002, had just come up and they had started their PhD registrations. So two girls, one of them I was the sort of main guide along with Dr. Pranav Pandya at DSVB. And another two projects which I'm going to talk, I had helped in modeling and data analysis. So the main work which was on the Yagya therapy for pulmonary tuberculosis. And we had done in vitro studies on Mycobacterium tubercular. We had also done some initial clinical trials. They are not exactly the kind of clinical trial one does because this was the first of its kind study. And the pharmacokinetic analysis, which completely was done at IIT Bombay, and when I had returned back there after 1 year. And I'm going to talk about other work, which was by Dr. Mamta Saxena. The guides were Dr. Pranav Pandya and Dr. B. Sen Gupta, who was an authority from the Center of, he was the member secretary of Center of Pollution Control Board, Government of India at New Delhi. And psychological healing also, because I had helped in this is, I think, Dr. Sao, who is a professor at DSVB. It was part of his PhD. So I'll just show the results. The main results I will discuss in detail is the pulmonary tuberculosis thing, because I was, it was part of that project I was. And before I go further, I would like to thank, and somebody, it's not like thank, but it's, I would like to acknowledge that the work has been taken and all the direction we got from the volumes written by Ved Murthy, Seer Sage Pandit Shri Ram Sharma Acharya ji, our Gurudev. And he had pioneered the scientific spirituality and revival of Yagya science in modern scientific light. And his books, more than 2,400 on scientific spirituality itself, pertain to almost all topics of human life. And of course, as people might be knowing, he's the founder of Gayatri Parivar, All World Gayatri Parivar, and also established the institutes like Brahmavarcha, Shantikunj Haridwar, and DSVV too has been, inspired by his vision only.
Well, so as we know, this is just a very gaudy picture. Some students had designed it. So it's like, it's saying that what exactly is yagya? It's as a process, it's a process in which uh, the herbal produce which are inputted here are getting converted into phytochemicals by the process of sublimation, vaporization, and in the release of fumigation, and lot of other slow combustion process is the basic thing in this yagya. So herbal nutritional substances undergo slow combustion. More important thing is the kind of medicinal wood used here, and that matters as a scientific experiment. If you are doing, it matters that right kind of wood, right kind of arrangement of wood, right size and shape of the Havan Kund, which is very important. It is not just putting something in the bonfire or any other source of fire. And these details I will not go into. Ghee also, as some of you may not be knowing, the young researchers, that way back in 1991, prestigious journal Nature had a scientific report on ghee, which was reported by scientists at Karnal, uh, the National Dairy Institute. And they had reported the properties of ghee and scientifically established that. So cow ghee, of course. And herbal components, we had used a special kind of Havan Samagri and the herbal preparation, which had the herbs like Rudanti, Rudravanti, and many of Himalayan herbs. The list I will give you in the end, one reference book in which all the details are available. So I'll go fast here. And release of anti-tubercular, antibacterial, immunomodulator, and other healthy phytochemicals was the main finding in the theoretical modeling of the reactions. And using whole herbs, and as in Ayurveda also, it's a synergistic effect. Several herbs are given simultaneously, and the same thing is seen in Yagya as an inhalation therapy. So slow combustion is an important thing, as I said, pharmacological synergy when you are using whole herbs, and a range of other activities take place, and also multiple associative activities. Like in allopathy, people, you are given some medicine, then to compensate the side effects, something else is also given, then antacids are given, and this and that. Here, everything, all kinds of nutritional as well as medicinal herbs are associated in the same Havan Samagri, and proportion is also very ideal. Earlier reports before our research, there were only two scientific kind of thing which we found, which was Dr. Pundarlal Agrihotri had experimented. He was a government hospital in charge of that hospital, the chief medical officer, and tuberculosis, that sanatorium kind of thing. He was in charge, and he said that because he himself believed in yagya, he used to do yagya every day. So he has in that nice book, Share Rog Ki Yagya Chikitsa, something like that. 1949, the book has been published. The reference list I will show the book in which every reference is given. So Dr. Agnihotri had written that when he used to find that patients have become resistant and there is no hope for them, he used to finally ask them to do yagya, and he found miraculous effects of it. And Dr. Satya Prakash, who also was, I think he was from Arya Samaj, and he had a professor of chemistry at BHU those days, and he has written a book, 1937, very old, but the book has been reprinted thanks to the publishers, KVRC, that's the publishing name. And he has written on, chemical aspects of yagya. And he has given all the kinds of reactions that might be taking place, and it's really a masterpiece, which still serves as the thing. We are going to talk on the research which we had done. I'm going to show the main results and the main experiments which we had done. I will outline. And this was part of PhD thesis of Meenakshi Raghuvanshi, which was awarded in 2006. And the chief guest of that convocation who awarded her this degree certificate was none other than Dr. APJ Abdul Kalam. She was the first one to receive that. We had done in vitro experiments. So what exactly we had done? This is a paper in, I don't know, I'm not able to get rid of this. I should minimize. Yeah. So Phytotherapy Journal, 2009, this has been published. Exact details I'll be giving in the end. And this paper gives the
main results, several experiments we had done from the tubercular hospital Haridwar, government hospital. We were provided the samples of those patients who had tested positive for the pulmonary tuberculosis. So what typically we did, sputum sample, of course, one pathology lab, which was suggested by BHEL Haridwar hospital, and it's a very authentic lab. The person who runs it is a PhD in microbiology himself, and very authentically the sample slides were provided, and we had one sputum was divided into 3 slides. One was our control group. What we did, control group was only incubated for 8 weeks at 35 degree, and as expected, the result was liquid Kirchner medium. It was tested, it was grown, the bacteria, and it was very high growth. I'm just trying to show the slide. I don't know how good the resolution is coming there. And another part of that same sputum sample was a fake yagya, because people generally have a belief that, burning wood also kills bacteria and all. So the medicinal wood, exactly the same yagya. All the experiments were done in Yagyashala of Brahmavarcha Shodh Sansthan, Haridwar, which is associated with DSVB, I think now. And so only wood was exact duration was followed as we do in Yagya. So that duration was, I think, 45 minutes. And some SKC pump, air sampler pump we had used to collect the output of that Yagya from the rooftop of the Yagyashala. And again, the same medium was used, same incubation for 8 weeks. Here, the overall result, several sputum samples were tried this way, control as well as this. Overall result was, on an average, there was reduction as compared to the control group, but only about 15%. And now here you look, the picture itself shows you such clear thing, hardly any black spots, a little bit. And this was a proper yagya for 40 minutes, sorry. And using the same air sampler, taking care that the bacteria is not going to the open air. And in earlier experiment also that was done. And again, incubation. So 40 minutes of treatment by the whatever was coming out of the yagya fumes at the top of the roof of the Yagyashala. And Gurudev Pandit Shriram Sharma Acharya had designed this lab, and it was his vision and Dr. Panna Pandya's work that had set that lab so scientifically that it has an exhaust fan above. You can control the speed of that output which is coming. So it's not smoke. It's fumigated vapors and sublimated material, whatever from Yagya has been coming out. And it was a marvelous result that, a significant reduction in the growth, on an average 75% reduction in the growth of mycobacterium just by 40 minutes of treatment. So it's a remarkable result, the journal accepted. Now, what must have stopped the microbacterium thing? Theoretically, our chemical analysis model, which this student had done, Dr. Raghuvanshi, there are about 20 anti-mycobacterium phytochemicals which are there in those herbs, the anti-tubercular herbs, which we had used as guided in Gurudev's volumes. So they must be the reason, And we had also done initial clinical study, although I'm calling it clinical trials, but I would like to be excused by the medical fraternity. And of course, since I was a faculty jointly in the bioengineering department, which had biomedical engineering also, I know all the rules of this clinical thing. We ourselves have analyzed many times for the pharma companies' clinical trial results. So this was the first of its kind study, 15 patients. They used to do for about a month. Every day they were doing yagya at morning, 6 o'clock in Brahmavarcha's Yagyashala. Meenakshi was conducting that yagya. And we had control group in the slums of, I think, some Hari Clark, something is there near in Haridwar. There, the similar kind of same age groups. It was Haripur Kala. It was Haripur Kala. Yes, Haripur Kala. Sorry, yeah. I just forgot. It's long back, So these results are what I'm going to show the asymptomatic findings were there in all the parameters which are used to diagnose tuberculosis and assess its presence.
And control group also the same thing. All tests were done in either in the patho lab or in some of them like ECG, etc., were done in Brahmavarchas labs. And after 15 days and after 1 month also. And same thing with the control group. The groups were comparable in age group. Mostly they were, some 25 to 60 years age. And males, because the gender thing, because we had very small samples, so it was difficult to get women coming every day for the yagya from different parts of Haridwar. So therefore, as you can see, the proportion, experimental group and control group. So experimental proportion of improved cases is certainly high, and hemoglobin, etc., of course, is comparable. What I'm showing is not the actual value of the parameter. I'm showing the proportion of the cases. Out of 15, how many had improved? So significant, except one patient who really had the fibrosis, his part of the lung, half was already gone. Still, he used to come from Motichur, to do the yagya, because that was the faith. There was an improvement, but certainly not as compared to other patients. In vitro experiments also we did on lung deposition. So what we had an air sampler, SKC air sampler 2000 pump, which was capped at a height. This is like a respirable wearable device, which all the industries, chemical industries, which are prone to give pollutants in the air, those employees are supposed to wear it compulsorily, so that it's under one can assess the biological or medical auditors can check how much of the lung deposition they are actually getting every day. So same device we had used. My colleagues in IIT Bombay had suggested me this, and it was purchased and at Shantikund Haridwar. And this, sampler was kept at the same height where, normally when you are doing yagya, normally your position of the nose from where you are inhaling, and mouth because you are chanting mantra. So through mouth also you are inhaling. So that level, this was capped, and this has a filter pump. So which, allows only particles, ppms of less than 5 microns to go inside, and that gets deposited on the filter paper. We had analyzed this filter paper because that time it was not known what exactly is going to go in the inside. So we did all healthy, I asked them to identify all chemicals, whatever they can identify. The analysis was done at PCRI Research Lab at BHEL Haridwar campus at Raniganj, Ranipur, I think. And chemical analysis showed, and we had also measured the change in the weight of the filter paper, which was in some micrograms. And I did some statistical modeling estimation to estimate the actual dose, how much actually goes inside the lungs. So it was about, on an average, 50 gram of herbal powder during 10 minutes of, actual sacrifice. Overall yagya was for 40 minutes because patient used to inhale the yagya output for 15 minutes after yagya, after Aarti. And so overall duration was 40 minutes, but yagya actual processing took place for 10 minutes, and 50 gram for 10 minutes gives around 65.5 micrograms of lung deposition per subject. We did phytochemical analysis also, because this was, I being from the mathematical department and bioengineering, I wanted to analyze it actually and see whether inhalation, yagya as inhalation therapy, how effective it is. So we used the compartment modeling, which is very standard in biomedical journals. And this paper was published in Journal of Biomedical Systems, which does biological system, which publishes biological as well as biomedical related experimental as well as theoretical research. So very sort of high profile journal. And simulation results, we compared it, what we did was the compartment modeling. So compartment modeling is a very standard thing to assess or any drug administration process. And this system, so when you are taking orally, it goes to the GI tract, etc., etc. As all of you know, most part of whatever we take the medicine, most part gets, diffused from the body before it reaches the site of actual infection, which is this case was lungs. And if you take it orally, then also it's the syrup, slightly lesser
excretion, but still it takes so much time that only part of that medicine goes into the lungs. If you take it as an IV, then it goes directly into the venous chamber, and from there, definitely faster. And as we all know, IV has faster effect. But when you inhale it, so pulmonary, there was an article in annual reviews on drug administration. There I found an article which had said way back in 2002 that pulmonary drug administration is the most cost effective, and for future this is going to be the best drug administrative mechanism. So see, Yagya, our rishis were, such vision they had, that they had always insisted on inhalation through yagya as a medicine. So this directly goes into the pulmonary chamber. In this case, that was the site of infection. So we did the mathematical modeling, which is very standard for compartment modeling. As far as oral drug delivery is concerned, these are the models. And how these rates are measured, rate constants, they are, again, there are procedures for it. And for most of the oral medicine, these are available for adult Indians. And some of my doctor colleagues in my biomedical engineering department had helped me identify these. And these are the model if you take intravenous. So these models can be analyzed. Theoretically, I had analyzed. But for pulmonary drug administration, inhalation, that too through Yagya, this was our original contribution. We modeled the bronchial tree, inhalation procedures, and I got all inputs from my colleagues in the biomedical department. And here is the bronchial terminal from where the lungs are receiving it. So all these processes were modeled. A lot of mathematical thing was used, and drug administration through yagyopathy. In this, the chanting of mantra, the what you can say, the rhythm by which you are chanting, the time which is taken, all that was simulated, and these were the solutions obtained. I'll just directly show you the results. So we had compared it. This model 3 is the inhalation thing, and model 1 is oral, model 2. So all these concentration in the site of admit, which was the pulmonary chamber, lungs, how much time it stays in the lungs, and to what depth it goes. So Ma'am, you can see. sorry to interrupt. I would like to request you that kindly come to the conclusion. Your work is Oh, it's no no, doubt. no. I have a lot of things. So just please, please, please. So actually, 5 minutes you have to give for the computational thing and the computer system network problem and all. So I'll just try to go because this is something I thought people should know. I'll just give you the reference. So the thing is that the model 3 is best in the sense of the time for duration for which the drug is available. This is the bioassay standard procedure for all the drugs. Model oral, it is least. IV, it is slightly better. But third model, inhalation, is the best. So, well, this is what we compared with some inhalable drugs for asthma, what has been given. Again, ours was found best and purely from theoretical. So there is nothing which is, one can challenge. It's not an experimental error. In a nutshell, this was found to be the best method theoretically. And purification of atmosphere, I'll just show you the results. The details are available in one book, which I will show and which is available in any Gayatri Parivar book stalls. You can get it. This was done in, in Ashwamedh Yagya, and again, the results were found very good. Delhi CPCB, in collaboration with CPCB, whatever work was done, that showed that, these are the results. Again, the Yagya thing, and continuously for the day 3, the aggregate bacterial counts reduced drastically as compared to the background thing on the first day when no Yagya was done. Same thing with fungi, same thing with microflora, pathogens, okay? And so this was also experiment was compared with fake yagya when no herbal procedures were, only herbs were burned, no mantra chanting was done. Exactly duration, and one house in Delhi and in the same colony another house. These kinds of where yagya was performed, where control was done. So again, you can see that yagya thing, which is with mantra chanting, is drastically better results it's showing. So in higher yagya outdoors, also they had done the study. This is Dr. Mamta Saxena's paper show it all these results. So I'm not going to take much time on it. Open air experiment also shows better results, consistent, but open air you have to adjust the instruments, and CPCB had done all these things for. Psychological thing with Dr. Sao's work, it showed they had control group also staying in Shantikunj,
but not doing yagya. Everything else, they were doing yoga study and all. And the psychological problems like aggression, depression, etc. were tested. For 20 days, thorough this thing was done. And after that, the results are, this is what I'm showing, percentage of subjects who were cured. So anxiety percentage, and also again you can see control is also curing, but the yagya one are still better. Females, as compared to males, the female responded much higher because maybe they are more sensitive, whatever they do more. So it shows that the psychological thing definitely affect when you are doing with Shraddha, the effect is much better. Further research which is now going on, we are doing air sampling studies. I'm doing in collaboration with, these experiments are being conducted at Thane, Mumbai, Thane as well as Mumbai centers of Gayatri Parivar. Very thorough experiments are being done in collaboration with one of my colleagues at Environmental Science and Engineering, Dr. Amtanshu. Chemical analysis, etc., is being done at DSVV. Optimal shape of Havan Kunda that Dr. Rajesh Ranjan is doing at IIT Kanpur. And I think ionic particles also, Mamta had done some experiments initially. So it is found that if you are doing yagya or even lighting a lamp with cow ghee, the number of negative ions, which are supposed to be very good for psychological health, and that has been increasing. In Yagya, definitely it increased. So all what I talk, details of it, including our till 2018. So 2018 edition of this book, Applied Science of Yagya for Health and Environment. Its 12th chapter gives all the details of scientific results, and the earlier chapters give which Havan Samagri is to be used for which disease, etc. And this is, editor is Dr. Pranab Pandya. It's published by Ved Mata Gayatri Trust. It's available at Shantikund and all, I think, stores of Gayatri Parivar. A small but precious book, and also online journal of DSVB. The later results on Yagya, which are reported as papers, they are also published time to time. So you can have a look at this book for a detailed list of our papers, and also the details are such that even non-technical person can understand, but those who want detailed research with the point of view, they can see the papers. And otherwise also the 12th chapter, I would suggest all youngsters who might be neglecting such things because of their ignorance that this is all burning wood and producing smoke, they should also read that chapter. And those who believe in it, do yagya, they should also be. So with thanks, I would just like to acknowledge that okay, scientific research is fine, because if we want to establish yagya as a therapy or as a cure for environmental pollution, we have to do a scientific assessment. But most importantly, whatever rishis had suggested for holistic health, spiritual as well as physical, materialistic health and well-being, we should do yagya every day in our places. Thank you very much for Thank your. you so much, ma'am. I was blessed to be the part of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya since my graduation days, and that was my daily routine. That I every day I used to go, and I have seen you so many times, but I didn't listen to you in such a platform. And today I was fortunate, and I think with me, all the participants, those who have joined, they got a brilliant idea on what scientific spirituality is. मैं भी शुरू में ये सब पोंगा पंडित समझता था, बट व्हेन आई केम टू देव संस्कृति विश्वविद्यालय फॉर माय ग्रेजुएशन एंड देन आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन एंड देन माय पीएचडी आल्सो फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी, and I also believe the founder of all world Gayatri Parivar, Param Pujya Gurudev Pandit Shri Ram Sarma Acharya. So I have been very good practitioner of yoga, and right now I'm sitting in MIT University Rajasthan. So luckily the Gurudev has put me here. Here also is a tradition of Arya Yagya and Vedic Yagya. So sometime I used to perform, and sometime I do in the campus also. But the thing that I miss is Yagya and Mahakal and the Nad Yoga, and which you very brilliantly explained through the scientific demonstration, the WASP, the Brahmvarcha Research Institute, and the entire therapy was very crystal clear. I think the students, the scholars, those who have joined across the India in this particular session would definitely got an idea how we can improve by doing small yagya. एक यज्ञ किट भी बनाया है गायत्री परिवार ने, बहुत छोटा सा बॉक्स है, वो आप अपने घर में भी डेली कर सकते हैं. मैम ने जो बुक बताया वो आप बुक रेफर कर सकते हैं.
ऑडियोज वीडियोज यूट्यूब पर, शांति कुंज यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं। चूंकि टाइम रेस्ट्रेंट था, सो मैंने मैम को भी थोड़ा कहा कि टाइम के अंदर वो ये कर लें, बट ट्रस्ट भी, अगर आपको कभी मौका मिले, मैम के नंबर और आईडी जैसा उन्होंने बताया सब कुछ दिया हुआ है, आप उनसे कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। एंड वी वांट मोर एंड मोर रिसर्च टू कम इन यज्ञ, योग and ayurveda, because the world is coming of all these three only. The world is going to rock. And I must tell you, there is a one experiment going to be taken place in Mumbai, Ashwamedh Mahayag, which is in February. Those who are from Mumbai or nearby region of Maharashtra, you must participate in Mumbai to see the effects and learn the things very practically and participating in it. Thank you In so fact, I much. would like to suggest one thing. The young researchers who have chemistry background or biological background, especially, they are very much required at the Yagyopathy Center at, I think, DSVV. They should join, they should do their PhD. They have excellent faculty with great work and their, international publications. So Dr. Viral, Dr. Ruchi, Dr. Devashish. So I think, it will be great opportunity, and I would definitely like to collaborate with them. All right. So And thank you very much. Thanks once again. And please take me, ma'am, also when you collaborate or do something in the field of yagya. I would be the first one to join you for experiment and all. sure, sure, sure. मेरा Very सभी nice. जितने भी लोग एज ए पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग मैम से जरूर कांटेक्ट में रहिएगा, क्योंकि मैम का लेक्चर काफी रिसोर्सफुल रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो डेटा पर वर्क कर रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे मैम आपसे बताना चाहूंगा कि पीएचडी स्कॉलर्स से कांटेक्ट में रहता हूं। उनका मेन प्रॉब्लम होती है कि वो वर्क तो करना चाहते हैं, लेकिन डेटा पे उनके कोई पकड़ नहीं होती है। ऐसी स्थिति में वो किसी और माध्यम से डेटा का मैनिपुलेशन करके या No, data एनालिसिस, manipulation is something which is the biggest sin. Okay. या तो Once, मैं like for a statistician, the medical fraternity, if somebody is attending, I would like to say on a biostatistics book, top of that, it was written that medical statistics is most misused and abused by the medical fraternity. Ma'am, So same thing with other can you experimentalists. Okay, this is on the lighter side, please. can you Yeah. close the screen so that Yeah, please, people can please. view Yes, you? yes, Yes. yes, yes, yes. Then you can explain what we are explaining. Just No, it's okay now. I think it's okay now, now. No? I interrupted you in last point. What? Yeah, Yes. yeah, Now your face is completely visible to all audience. yeah, Yes. yeah. I Yes. mean, it's What? the work which should be visible. And I would like to suggest that everybody should read that book, Applied Science of Yagya for Health and Environment. It's written for you people. And see the papers there and, must benefit from it. It's a treasure. Before the Americans or Australians or Europeans come and tell us about it, we should, tell them. Sure, ma'am. Sure. Thank you so much, ma'am, for this eye-opening and motivating session on Yagya therapy. I hope definitely the people who are working in medical background, and especially those who are the students or scholars of yoga, they will follow you and admire you and consult you regarding this. Sure, Rightly said by sure. Dr. But Jiten. before Oh, consulting me, they should have read that book. Okay. sure. Yeah. So I'm very strict ये about आपके it. Okay. आपके session है. Okay, Sure. over to you, Dr. Jitendra, for further information. Anything you want? Yes. Yes. Thank you, ma'am, for such resourceful lecture. And Thank you. our It's my pleasure. next, Yeah. thank you, ma'am. And फिर से हम पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहेंगे मैम का, और ये कोशिश हमारी रहेगी कि इसी तरह के अन्य जो हमारे प्रोग्राम हैं उनमें आप लोग का जो है ज्ञानवर्धन बच्चों कल हो का मेरा लेक्चर जरूर अटेंड करिए। वो हाँ, कंप्यूटर कल साइंस वालों ने जरूर अटेंड करना जी चाहिए। कल भी पल्स मैम का लेक्चर है। डायग्नोसिस। हाँ, ऑल कल द का पार्टिसिपेंट्स लिसन केयरफुली, मैम का लेक्चर कल भी है। उसका तो ओरिजिन ही एम्स दिल्ली है एक्चुअली, उस जी वर्ड जी का हमारे। ओके, सो दैट और थैंक यू मैम। इसके बाद जो है हम लोगों का टेक्निकल सेशन जो है वो 1 बजे स्टार्ट होगा, जिसमें पेपर प्रेजेंटेटर जो है अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर संतोष विश्वकर्मा जी जुड़ेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर देव संस्कृत विश्वविद्यालय, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। इसके सिवा डॉक्टर अरुण मास्के जी जुड़ेंगे, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से। ऑनलाइन ओनली? Yes, ma'am. And this will be online. All the paper presenter, they will join us online and they will present their paper. And our moderator and expert will analyze the paper and give the suggestions. And
So After I will that, just mute myself. Yeah. sure, ma'am. You can, if you want to mute, if you want to listen, then you can be in the list. Otherwise, if you want to join, leave it, then Okay, so we will begin at sharp 1. So there is a 10-minute break. So क्योंकि ये आई कांटेक्ट बहुत देर से आईटी और इससे बनाने से अच्छा है, थोड़ी देर आप आंखों को विश्राम दें, ठीक है? yeah, So meeting is the still on. link, We will start from 1 o'clock, right? yeah, the link will be active. Yeah, link will be active. And sir, if you have that list, sir, can you paste in the chat box? Yeah, So that, I have pasted already. I have okay, mentioned you and already sent to all the perfect. candidates So see you at 1 and o'clock, 15 message minutes them. break. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.
तो भी बोलता है। हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, आवाज आ रही मेरी? डॉक्टर बिल्कुल, नवीन बिल्कुल। सर को प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्कार और बहुत-बहुत बधाई प्रणाम। सक्सेसफुली इनॉग्रेशन लॉन्च करने के लिए इतने शानदार प्लेटफॉर्म से। एम्स ऋषिकेश इज अ गुड प्लेटफॉर्म to give the good picture of science and spirituality of Yoga, Yagya and Ayurveda. Congratulations, sir. Thank you very much, Dr. Ajay ji, and for now we have an international speaker, Kazakhstan, Almaty city, and Miss Juldees ji. So if my voice is going to there, You are coming. Yes, sir. hello, hello, आपकी आवाज आ रही है सर। हेलो। hello. अच्छा अच्छा, मैं जरा एक उसमें मीटिंग में आ गया हूँ ऑनलाइन। तो ये अगर नाश्ता क्या है वो यहाँ मेरे Hello, विभाग में भिजवा दो। yeah, Juldees ji, I am audible to you? Yes, I can start, yeah? Okay. Okay. So I want to introduce Miss Juldees ji. She is a yoga teacher and the founder of iSoul Yoga in Almaty, and she is a very dedicated practitioner of yoga and providing many people's in the world the awareness of yoga and the Ayurveda, and lots of peoples are getting benefited by these traditions. Along with that, she is spreading how a person can be a businessman, how these yoga practices can help you to earn some money. So this session is very useful for everyone to understand how you can manage the things spiritually and in the business sector. So Ms. Juldees ji will introduce you, will explain you about the yoga and business management. So now session is to you, Dr. Ms. Juldees ji. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Naveen. I'm so happy. Can I demonstrate my presentation? Yes. Ajay ji, kindly allow him Sure, her to share the sure. presentation. Please share, ma'am. Yeah. You can share the screen. Okay. Okay. Yeah, it is visible. It is visible. Visible, yeah. Okay, just make it full screen, ma'am. Yeah, 1 moment. Okay. Full screen, yeah? Yeah, perfect, ma'am. Okay, thank you very much. So I'm so glad to be here, and today I will presentate about yoga and the yoga business. Actually, yoga business, but my main theme, my main topic is about yoga business. Okay. Firstly, I'm congratulate that today is 6th yoga conference, your yoga conference, and I'm so happy to be here and presentate my own idea. So my topic is yoga for women, health and business. My name is Kayıp Canjuldas, founder and director iSoul Yoga. It's my Instagram. So I wanna share 2 topics exactly: yoga woman and health, yoga and business. So I wanna say some informations about me, and first information is I do yoga more than 8 years, and after yoga I solved my mental and physical problems. 4 years ago I started earn money from yoga, and it was first step to go to yoga business. So I do big yoga business in Kazakhstan. 22 year annual turnover of my company was $670,000.
So it's good money, good business in Kazakhstan. So I do yoga. That's why I'm healthy and energetic. It's my, my words in my life words. So I do yoga. That's why I'm healthy and energetic. So I want all women to do yoga and to be healthy in the world. All women in the world to do yoga. It's my main aim. So I want to say that if you have some questions, you can write, and after finishing, you can ask. Okay. Sure. So many experts have recommended yoga for women to help them successfully cater to the multiple demands on their time. Women have always had it thought if they dare to dream big. And they are expected to multitask all the time, living like Superman, regular office worker by day and a superhero by night. Women must not only take care of their domestic duties with efficiency and grace, but also work outside the four walls, justifying their education and the intellectual capabilities at par with men. Women across the globe need to be able to keep many balls up in the air at the same time, ensuring that not a single one of them falls at any time. This is why yoga will seem like as a blessing for women. Yoga means to achieving sanity and serenity in their trying and taxing world. Simple breathing techniques will help, exactly pranayama techniques will help women calm down and handle their multiple responsibilities with proficiency and poise. And in the topic yoga, women and health, yoga does more for women than just make their bodies supple. Exactly our harmony in the mind and harmony in the body. It's if we count, harmony in the mind is same as a harmony is our body. It lends balance to the mind and nourishment the soul. That is why women should not consider yoga as another chore on their overloaded schedule, but as necessary activities that will help them handle their other obligations optimally. The logical question that arises in relation to yoga is when to start. This is the icing on the cake as far as women concerned, because yoga is suitable for all ages. So we know that yoga is healthy. We know that yoga is, when we do yoga, after doing yoga, we will be energetic. It's yoga, exactly, yoga is health. So, but today I want to share my own, my own term. It's yoga and business, because of 4 years I am doing business in this sphere. Yoga and business topic. This yoga and business, it's from my practice, from my experience. So first time when I start do yoga, it was good. Exactly, yoga helps me to be mental healthy and to be creative, to be healthy, fully healthy, and to up my woman energy. That's why I wanna continue. That's why I continued to do this yoga, and after 4 years, when I start yoga, I wanna earn money from these practices, because yoga firstly helps us. When I practice yoga pranayama techniques or something yoga asanas or some meditations, when I do, and that moment, after some time, I can share with people, and it's firstly helps me to achieve my aims, to achieve health,
healthy, and to be creative, to be energetic. And in that moment, if I share my help, my practice with other people, it's good karma for me. That's why first time I share my knowledge with people free. But after 4 years, I started earn money from this, because in business sphere, top three business is, third one is physical and mental health. Exactly, maybe someone said that fitness business, but it's not only fitness business. It's, if we do yoga, we not only do fitness, exactly, not only do work with our body, we do with our mental health too. That's why here yoga business is the top 3 business sphere in the world, third one. And now every time I said that I live in Bali, and in Bali a lot of people who do yoga, exactly, in region Ubud, and they from another regions of Bali, people come to Ubud to do yoga practices, meditations, a lot of pranayams or yoga asanas. So it is said that yoga business is good in the world. And when I lived in Italy, exactly, I started in Italy, and it was half year. And here too, a lot of yoga studios in Italy, exactly in Pisa city. So a lot of time I analyzed all these informations after I opened my own business. So yoga and the business for women, it's very, very good position and a very good sphere to do business, because here we will keep our mental health, we will keep our physical health, and we will be creative, because yoga is helps us to be creative and to be healthy and up our woman energy. So, and now I want to share some of my, oh my God, I don't know this word. One moment. I want to share some of types of earning money in yoga, as a yoga expert, as a yoga teacher. Some of the tips you can say, right? You want tips that how we can earn more and more money. Yes. Yeah, teach Find business. or practice. Yeah, thank you very much. Thank you very much. Yes, as a yoga expert, as a yoga teacher, you can do firstly yoga asana online and offline, because after pandemic time, COVID-19, we do online yoga. Now I live in Bali, and I pay for experts who do another practice, and I do online. It's not only yoga. It's not only yoga. About studies, a lot of in the online yoga is good idea for to do business. And I wanna say one item, that business, it's not only earning money for me. Business is to help people, to help people. And when person with this idea helps people, and this person earn a lot of money. That's why if you want to open your yoga business, firstly, your idea will be to help people, because I said that when I start, before I starting my yoga business, I work free, just free. So business, it's
in my idea, business is not only earn money, it's help to people. And for this helping, people give you money. So first helping is yoga asana classes, yoga practices, online and offline classes. It's first step. Yes, maybe first step or one type. And as a yoga expert, person can organize women's circle, where you do a lot of practice of yoga. Maybe Shatkarma you can do, or maybe you do yoga expert do some pranayams, or maybe some yoga chakra practices. Maybe when I organize at women's circle, I do firstly mandala therapy. I do exactly. I did mandala therapy. I did aromatherapy, and I did yoga practices for women health, and I did chakra yoga. And in the end, we finished all of this meditation. After meditation, shavasana. It's good woman circle. In one woman circle, 20 women. We will organize 20 women in one woman circle. So after one of the type of you can teach is yoga master classes. For example, now a lot of people needs information, dates about yoga or some of energy, topic of energy, or etc. Maybe spiritual some topics. And you can organize as a yoga expert yoga master classes. In yoga master classes, you can say one topic. It's good works. For example, I did it I did yoga master class, a lot of yoga master class. In one yoga master class, we organized it. Maximum it was 200 people. It was very good. Just giving information, but not only information. We did meditation and they give information in one time. It's a good idea. So, and I do yoga tours in the world. Yeah, yoga tours in Egypt. I do in Maldives. I do first time. I will do in Bali. Maybe we will plan. We plan. So yoga tours and yoga retreats. You can organize, and you can organize meditation classes, or maybe you save your meditation and you can sell meditation classes, because in Russian business, sphere, in Central Asia business sphere, meditation classes, saved meditation classes, it's very expensive. Not expensive. It's not expensive. It's very famous. Popular. Popular. Yeah, thank you very much. So, and the pranayama class, what I organize and I earn money from yoga. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 types of earning money doing business. So, I finished my speech. I want to share about yoga business and for women. When I started psychology, when I started in psychology as a specialist in psychology sphere, this expert, our teacher, said that if woman want to earn money, she has to be relaxed. She has to be relaxed. Yeah, relaxed. Yes. If man wants to earn money,
he has to be just little bit nervous, you know, nervous. Is it so? Is it No. so? I'm not Because nervous. I'm not nervous for earning money. yeah, you know, here they circle that women earn money when I relax, when she relax, and if man wants to earn money, he has to just little bit nervous, because when a man's energy in nervous form, in nervous little bit nervous form, it will be good works, you know. That's why yoga business is for women, I say. So thank you very much. Thank you for your Thank you attention. so much. Thank you so much. Your session was so nice that each one of us smiled and practiced the laughter therapy also, smiling therapy also, and it was very information. Yes, you were very right that business in yoga doesn't mean that we should not help others, as you also started helping others, giving free yoga classes. So we should analyze the need of the hour. If someone is very needy, and we can remove the pain of that particular guy, or the person who is coming to us, we can make them relief, we can make them relax. This is the most important. And yes, this is the role of women have a more cozy and more understanding nature, and you can say the more depth of sensing the things, comparative to men, right? So thank you so much, Ms. Zulzi. You joined from, as you said, that you work in Bali. So it's a really a wonderful international conference on yoga, yagya, and Ayurveda. So whenever you visit India, most welcome. Our India Yes, is very you too. rich, and I I think you, plan. yeah, you will plan, and we will have one-to-one meeting. And the screen is showing her email ID. If any of the researcher, if any of the yoga enthusiasts want to start their own business in yoga, so you can write her, you can take her guidance. And if you want to open any new business in foreign countries also, so you can take consult her. She's so genuine, so nice, and a real yogi, Thank doing good you. business and promoting yoga. Thank you so much, ma'am, for being with us. Thank you so Namaste. much. Mm. Yes, thank you very much. So, so now it's the time to start the research paper presentations. Jiten sir, yes. जी जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस एक इंटरेक्शन के लिए। एक बच्चों को भी, एक पार्टिसिपेंट को भी एक इंटरेक्शन मिलता है कि योगा केवल इंडिया तक सीमित नहीं है, ये इंडिया के बाहर अब्रॉड, और सीमित केवल योग करने तक नहीं है, बल्कि रिसर्च के साथ साथ एक जो जो कि अजय भारद्वाज जी जुड़े हैं, तो टूरिज्म है, प्रोफेशन है, डिफरेंट टाइप के प्रोफेशंस में योगा का इस्तेमाल हो रहा है। इवन इन टीचिंग एंड लर्निंग the government also is focusing on, in NEP they have introduced yoga for better mental health, better achievement and better overall health. Thank you so much मैम। एंड अब हमारा जो है टेक्निकल सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, और हमारे साथ हमारे आज के जो सेशन चेयर हैं के रूप में हमारे डॉक्टर संतोष विश्वकर्मा सर, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके साथ हमारे साथ अरुण मस्के जी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ योगिक साइंस से हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऑलरेडी पहले से ही जुड़े हुए हैं। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सर 1 बजे से दोनों लोग जुड़े हुए हैं पेशेंस के साथ में। और जो है मैं स्वागत करना चाहूँगा सर को। और मैंने लिस्ट जो है सभी पार्टिसिपेंट की लिस्ट की जो है भेज दी गई है, हमारे जो एक्सपर्ट है उनके पास भी अवेलेबल है और हमारे पास भी है। Excuse me, ma'am, can you just close the PPT presentation? Zulzi ma'am, can you just close? I can't, because I pause it, I stop it, but I can't. I have to close. Yes, just close. Yeah, you just stop sharing screen, because the people are still seeing your presentation. So other guests, yes, perfect, ma'am. Thank you so much. And now you, if you want, you can join. You be remained here, or if you want, you can leave. Thank you so much. Let me pin our chairperson of the today's technical session,
Professor Dr. Santosh Vishwakarma sir. Just a minute. क्या हो रहा है? Okay, so the first participant of the research paper presentation track is जितेंद्र सर, आप बता दीजिए ना. एक सेकेंड. अंकिता जी. आप एक बार Ankita ji नाम. from AIMS. Ankita ji from AIMS Guwahati. The first will be the first presenter, and after that the sequence will be the already has mentioned in the PDF file which is available in the group. ठीक है, अंकिता जी आप अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर लीजिए. मीनवाइल मैं आप सबको बता दूं कि डॉक्टर संतोष विश्वकर्मा सर इज अ मैन ऑफ साइकोलॉजी, a man of scientific spirituality, a man of yoga, and he has been very cooperative. When I was studying and I was doing my research, he was my research guide who used to tell me about the sampling methods, research presentations, the data techniques collection. He taught me the research paper, how to write a research paper and all. So I'm very obliged today to have my guru on the screen. And with that also, welcome to Dr. Ujjwal Maske sir. He has been my senior when I was doing my master's and my PhD. So, and now he's working in Assam, northeast part, and he's really doing wonderful in popularizing yoga, and it's very easy practices in the northeast. So दोनों ही मेरे लिए बहुत ही सम्माननीय हैं. आप सबकी वर्चुअल ताली के बीच उनका जोरदार स्वागत, अभिनंदन है. So over to you, Jiten sir. First name is, as he announced, Ankita ji. अंकिता जी आप यहाँ पर हैं? आई थिंक सर वो नहीं है, तो आप अगले नाम को बुला दीजिए. मीनवाइल में आप. The second presenter is अभिमन्यु आर्या. जो लोग हैं वो प्लीज रेज योर हैंड्स प्लीज, मतलब आप फटाफट बता दीजिएगा चैट बॉक्स में. अभिमन्यु आर्या. सेकंड अदिति सोनी. थर्ड अक्षय वशिष्ठ. फोर्थ member is Ankita, and Ankita ji, AIMS Guwahati. As she has requested me to. सर जितेंद्र सर, सॉरी टू इंटरप्ट. मैं कह रहा हूँ आप नाम बता दिए हैं, जब तक वो नाम बता रहे हैं वी कैन हैव द ब्लेसिंग्स एंड वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम सर. जी जी जी. हाँ. So sir, Santosh Vishwakarma sir, we request you to kindly give your takeover on the 6th International Conference on Yagya, Yoga, and as the theme is Ayurveda for women's health. Thank you very much, Dr. Ajay Bhardwaj. First of all, I would like to thank you for inviting me in this international conference on Yoga, Yagya and Ayurveda. And I would like to extend my Shubhkamnaएं, best wishes for this international conference, and especially to Dr. Naveen and Dr. Jitendra, who are giving their valuable time to share the vast knowledge of Yoga, Yagya, and Ayurveda to means at the global level. And this is a great opportunity for everyone, for all the participants who are participating and going to present their research paper here, in the sense that Yoga, Yagya, and Ayurveda, these are the three most important pillars of our ancient knowledge. If we see the history or of the mankind, or history of the especially this Asian Southeast Asian subcontinent, means India. So if we look these things in this way, then it is
we are very fortunate to be here and have the opportunity to learn various things, because things are already connected. If we talk about the yoga, if we talk about the Ayurveda, if we talk about the Yagya, these all are uh, art of living. And if we want to flourish in means every direction or every dimension of the life, means like if we want to be physically healthy, we want to mentally peaceful, we want to be or want to be means in every aspect, means even spiritual aspect is also there. So if we want to flourish in every dimension, then we need all three to dwell in all these three dimensions also. So research in these directions or in these fields always helps us, means how to utilize the already mentioned techniques in the present time with different circumstances, with different challenges, etc. So, in my opinion, the conference is very well inaugurated, and topics are very nice, and they are very well, means congruent to the present circumstances, present scenario, because we all need peace and uh, means holistic development. So whenever we talk about holistic development and in Indian perspective, then these three things on which the present conference is focusing, it becomes very important. So with these words, I would like to uh, once again extend my best wishes to all the organizers and the team members. And once again, I would like to thank you each and everyone for giving me also the opportunity to hear great papers and great ideas and to learn so many things. So thank you very much. Thank you so much, sir. You have been a guiding light in the path of many researchers like me, Naveen sir, Jiten sir. We have learned a lot from you. Thank you so much, sir, for being with us. Over to Dr. Ujjwal Mashke, sir, who is now the head in charge and assistant professor, yogic science and naturopathy, Assam, uh, and to give his throw his light on the particular theme of the conference. Then we will meanwhile, Dr. Jitendra is busy with the sequencing the sequence of the research papers. Over to you, Dr. Ujjwal Maske, sir. Thank you, Dr. Ajay. I think I'm audible. Perfect. Okay, thank you. Respected Dr. Santosh Kumar Vishwakarma, sir, chair of the session, Dr. Ajay ji, Dr. Jitendra ji, and all other participants present here for the presentation of the research paper. The topic chosen for this 6th international conference, that is role of yoga, yagya, and Ayurveda for women's health. It is very appropriate and very important for this time, as we all know that India is the origin of this knowledge, and our Indian culture and Indian knowledge are very important, and it is very important for maintaining our holistic health. In our ancient time, rishis, sages, they developed this knowledge system, and they transferred this knowledge system to us. We are receiving it from them, so it becomes our responsibility to practice that knowledge, to understand that knowledge, and to propagate that knowledge in a proper sense. So such conferences, such seminars are the places where we share our knowledge, that what is happening, what is the new achievements, what are the new things coming out, so that we can learn new things from these conferences, and so that we can, it will be helpful for us to propagate the things in a better manner, in a better scientific manner. So I extend my best wishes for the success of this international conference, and my best wishes to all the research scholars who are presenting their research papers here. Thank you. Thank you so much, sir. You are always been very opt and accurate in your yogic practices, and that's why today you are heading the department in one of the prominent university of Assam, Northeast,
We have two heads. One is heading yoga department, and we have another head from psychology department from Dev Sanskriti Vishwavidyalaya Haridwar. So without wasting much time, I would like to request Jitendra sir to kindly call upon one by one name. I think I have also the name. I'm calling out the names. The first one is, as already told, अरुणा जी, आप हैं, आ गए हैं? अगर आप आ गए हैं तो अपना स्क्रीन शेयर करिए और प्रेजेंटेशन शुरू करिए. अभय शर्मा जी हैं? यस सर. हाँ, यस सर, बट शेयर नहीं हो रही प्रेजेंटेशन, टाइम लगेगा. I'm present here, but it will take time me to upload file. So तो आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं शेयर कर देता हूँ. सर वेट अ मिनट. ठीक है. क्या हुआ जितेंद्र सर? जी बताएं, कुछ प्रॉब्लम? इनका प्रेजेंटेशन शेयर नहीं हो रहा है. एनीवे, अभय शर्मा जी का कह रहे हैं. आपको भेज दें, आप शेयर कर दीजिए. हाँ, अगर आपके पास है तो आप कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं. गरिमा पुरी जी, आप हैं? सर शी इज विद मी. अच्छा, आप दोनों साथ में कर रहे हैं. ओके फाइन. श्वेता कुरे जी? यस सर. ओके, आप रेडी हैं मैम? आप शेयर कर सकती हैं स्क्रीन? सर मैं 10 मिनट टाइम लगेगा. मैम प्लीज आप लोग तैयार रहिए. आप लोग को 1 बजे बोला गया है. हमारे स्पीकर्स, हमारे चेयरपर्सन अपना वैल्यूबल कीमती समय हमें दे रहे हैं, सारा काम छोड़ के. प्लीज. डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा, आप हैं सर? सर मेरे साथी हैं सर. ओके डन. जूहू कुमावत, कुमारी प्रियंका? Yes sir, it's me, Juhi Kumawat. The name is Juhi Kumawat. Fine. So can you share, Okay, ma'am, sir. and you can begin the presentation? Yes. Perfect. Thank you so much, Just ma'am. give me, just give me a अजय जी, second. हेलो अजय जी, जो प्रेजेंटेशन नहीं शेयर कर पा रहे हैं वो ओरली प्रेजेंट कर सकते हैं. अच्छा सर, तो पहले ले लेता हूँ. मैं जूहू कुमावत जी को बोल दिया हूँ. हाँ, ठीक, उसके बाद. Okay. See, online presentations are really interesting if we manage to share and be ready with that, be the tech savvy guy. तो थोड़ा सीखना पड़ेगा हमें. जितने रिसर्चर्स हैं, मैं उनके लिए बस एक थोड़ा सा सजेशन देना चाहूँगा कि जब आप ऑनलाइन करते हैं, बहुत अच्छा है, आप घर बैठे प्रेजेंट कर रहे हैं, आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. ओके, सो मैम का प्रेजेंटेशन शेयर्ड है. मैम आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और मैं आपको फिर पिन कर देता हूँ ताकि हमारे सारे स्पीकर्स, हमारे चेयर्स पर्सन आपको अच्छे से देख पाएं. ठीक है, over to you, ma'am. You can start. Okay. First of all, good afternoon to respected members and all the participants. My name is Juhi Kumawat and I'm pursuing my PhD under Dr. Kashinath Ji Maitri, Department of Yoga, Central University of Rajasthan. My topic for today's presentation is qualitative and quantitative study on yoga and meditation, research and mental health for a Vicenian. So these are the content for my today's presentation. Today I'll start what exactly bibliometric analysis is. So bibliometrics is a scientific computer-assisted review methodology that deals specially with the quantitative evaluation of publication, usually with an emphasis on academic and scientific literature. This approach offers a unique perspective to comprehensively understand the trajectory, what is the current status, and the potential future directions of a given topic. In my case, it's yoga and meditation research and mental health area. As we all know, recent researches had proven that yoga and similar alternative therapies could be as effective as conventional treatments, especially for anxiety and depression. Same as positive impact of mindfulness meditation in reducing psychological symptoms associated with stress and anxiety as well. Which leads to my research question exactly. What are the publication trends and the total citation per year in yoga and meditation, enhancing mental health? Second, which journals, countries, institutions, and authors are most productive and influential in the yoga? And what are the frequently occurring authors keyword in this field? The methodology I have used is Scopus database, and the time span I have taken is 2003 to 2023, and the mainly keywords I have used is yoga, meditation, and mental health. Total 6,453 articles were retrieved. And the results shown our annual grade rate is 14.81, and the total authors are 22,141.
which shows the scientific production in this field is 14.81, which is increasing day by day and year by year, which shows the relevancy in this topic. So there is a higher scope in this field for upcoming researchers. Most impactful countries in this area are USA and Canada, following by United Kingdom, with total number of citations. If we talk about the most impactful organization in this area, 10 out of 9 organizations are from USA, leading with University of Pennsylvania. If we talk about the relevant sources or journals in this area, in number of production of documents, mindfulness ranks the first position, following with Journal of Alternative and Complementary Medicine. But if we talk about the higher H index, Journal of Alternative and Complementary Medicine stands the first position, following the mindfulness. Now, if we talk about the productive authors in particular mindfulness, meditation and yoga, Carlson, Davidson and Gangadhar ranks in top 3 position with higher H index. Now, if we look at this cluster, these are the authors' keyword analysis, and as we can see, the prominent keywords are meditation, mindfulness, yoga, anxiety and stress, and depression. Highly cited articles in particular area also ranks with mindfulness, a proposed operational definition by Bishop Sir with a higher number of citation. Now coming to the thematic map. As you can see, there are 4 quadrants. The one here presenting in the motor themes, meditation, mindfulness, and spirituality. This is the area which is already emerged and a lot of work has already been done. So there's a little scope, but as you can see in the basic theme, yoga, depression, and stress, this is the core area which is very relevant but less developed. So there is a higher chances of scope for the future researchers. Now coming to the limitation and the future research directions for researchers. So this whole study was solely relied on Scopus database. So other databases like Web of Science, PubMed could also be utilized. And there is also potential to enhance the analysis by including additional search terms such as stress management and mindfulness. So I like to conclude my study here. So the annual growth rate is 14.81. Key journals are Mindfulness and Journal of Alternative Complementary Medicine. In terms of citation, USA, Canada, and UK lead the way. The Canada, Germany, and Netherlands produce high quality research. This is on the basis of citation impact. And the prominent affiliation are all of them from USA only. And the top productive authors are Davidson RJ from University of Wisconsin, Khalsa SBS from Harvard Medical School, and the Kramer Holger from University of Tübingen, Germany. These are my references. Now, thank you so much. That's all. So now the stage is open for our honorable chairperson. Please ask the questions if you want. Ms. Juhu Kumawat, you have done a very nice presentation, and I appreciate the work and you have done. This time you have given to search so many research papers in the field. But I would like to ask only one question, that can you share any best research paper that you find at the time of your journey of doing this review? Means any qualitative or any quantitative research paper which could have a great impact. Yes, sir. As I told you, this one was the first one, mindfulness, a proposed operational definition. And I would like to mention this third point, alteration in brain and immune function produced by mindfulness meditation. This paper is really wonderful if one wants to do higher research in neurology related to meditation area. So for my study, this paper was really wonderful. It gives you a holistic view of meditation and as well as the scientific prominent area. It was in year 2003. Okay, Ms. Juhu.
everything was in place. So Sir, I'd like to the name congratulate. is Juhi, sir. Okay, There's a Juhi misprinting. Kumaut. Sorry, Yes. sorry. Juhi Kumaut. Actually, it Yes, is sir. written like Juhu. That's why. No No problem. problem, sir. It's a very nice name. Thank you so much. Dr. Ajay Bhardwaj, we can, if any questions are there, then other participants can also ask questions. Anyway, Please, if you have any questions, you can ask me. I think no one have. So Okay, sir. next is who is ready? Abhay Sharma is ready. Hello, Abhay Sharma ji, are you ready now? Hello, I'm audible to you. Om Ajay sir. हाँ, Abhay Sharma, are you ready? Ajay sir, Akshay Bashish this side. I am ready if you can align me in with the presentation. I can come up with this. Okay, fine. You can share now. Sure, sir. Thank you so much. I hope my voice is audible. I'm starting my video, sir. Om Pranam. So please grant me the yeah, okay. It's there. I am just sharing my presentation, sir. Please share. I'm searching you to pin out. Let me check. Okay, Akshay Vasish, you can start. Good afternoon to all the respected members. The last candidate also presented up with the bibliometric analysis. So my research area was also the same. So the topic of my presentation is the bibliometric analysis which I did on the integrated pathy. Am I audible, Ajay sir? Perfectly audible. Please continue. So, Can you yeah, switch on your video also? okay, okay, sir. I thought it's on. No, it's not on. You're not visible. Okay, you can continue. Your voice is there. I think maybe internet problem is there. Some bandwidth issue can would have been there. Otherwise, I have turned that on from my end. So shall I continue, sir? Sure. Please. Yeah. The area of my research was integrated pathy involving yoga and yajna intervention for type 2 diabetes mellitus. So as the candidate has already explained that what's bibliometric analysis all about. I have also done the same. I would just like to come up with the citations on different research publications which has been published in this domain of type 2 diabetes mellitus over the last 30 years, that is 3 decades. So my research topic of my PhD in the University of Patanjali is the effect of integrated pathy on type 2 diabetes. So that's why I just came up with my guide, Dr. Vedpriya Arya, who is a head in the herbal department in Patanjali Research Institute. So ma'am wanted us to come up with at least 3 to 4 decades data on diabetes, like what are the different areas, what are the different aspects wherein different articles, different research work has been done specifically on this diabetes. So the objective, as I mentioned, is clear. So the methodology that we have used, it's quite interesting. Other scholars or other candidates can also get some benefit out of it. The database that we have used is dimensions.ai. As Coopers or PubMed and other these kind of databases, they are not accessible to all.
as they're highly costly, and when we have to come up with some individual research areas, so some free tools which are quite authentic and uh, 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 up to date. So dimensions.ai is one of the databases like Google Scholar, PubMed. So we have used this one, and we have just searched the query using some Boolean operators or and different terminologies and keywords. The keywords that we have used is diabetes and type 2 diabetes, yoga, yajna, in this way, and we have come up with the final results. So as you can see, we have used Prisma, which is a tool, and we have found, after specifically writing the query on dimensions.ai, we have come up with 11,839 records, out of which we have excluded 34 duplicates through Excel filtrations. We have just put that all the data in Excel, and then we have uh, extracted those duplicates. We have left with 11,805 records, and out of them also around 305 records were of different chapters, preprints, monographs, edited books, etc. So in the end, we have left with 11,500 records, and we have used WAS Viewer as a tool to get the results, and we have put the exact filtered data of Excel in WAS Viewer, and we have analyzed different publications, different growths and citation analysis. So as you can see in here, the citations of different research articles have really come well in the last decade, that is 2012 to 2021, which is followed by the last decades, 2002 to 2011, wherein the number of articles have reduced by almost 1,50,000 articles, and the publication growth has also come up well in the year 2012 to 2021, with 71% of publications, which is around 8,000. So highly productive journals that we found were PLOS One. PLOS One has almost 278 articles on the same. And then if we talk about the best, the journal which has a good impact factor of over 19 is Diabetes Care, and it has also citations of around 24,000. And Diabetology is the journal which has highest number of citations per articles. So these are some of the results which we have come up with. And this is the international collaboration figure, which you can see with different colors of red, green, blue, yellow, and etc. In here, this representation, pictorial representation. Excuse me, sorry to interrupt. Your presentation is not visible. I think you have stopped the presentation. I have not stopped. Or let me again share my screen, because yeah. I think you have stopped sharing. Yes, now it's visible. Perfect. I'm sorry, sir, for the same. So yeah. So as you can see, this is the international collaboration picture, which represents different color. Here, the color is also important, and the more important than that is color size, which denotes the large number of publications. And the more compact these will be, the more thickness these lines, it means there is more collaborations of different authors, which this international collaboration part defines. If we move on to the next portion, wherein we have discussed that it is been shown that large number of publications have come just in the last decade, from 2012 to 2021, and there is still a lot of work which has to be done in this area of diabetes. The major drawback that we have come up with this is that the query that we have mentioned is very specific towards yoga and yajna and diabetes. We can make it more elaborate and more specific, and which because of which we could not get all the other data which could have been there in this field. So all the researches that are not included in dimensions.ais are also ignored,
as I have mentioned in my starting of the presentation, that we have used only dimensions.ai as a database and not PubMed, or Google Scholar. Google Scholar is also free, but in general, like PubMed or Scopus, which are, more reliable and more, more elaborate. So thank you so much, sir, for giving me the opportunity, and I'm done with my presentation. Thank you so much. Over to our Honorable Chairperson, Dr. Santosh sir. Sir, you are not audible. Sir, आपका mic mute है. Okay, now. Okay, Dr. Ajay. Mr. Akshay, you have done a very nice presentation. And though you have not gone through the Scopus or Web of Science or those databases which are very costly, but you have come to you have searched, means you have used Dimension AI database to do this research work, and so many records have been reviewed, and then you have reached up to this conclusion. I would like to ask only one question, that how many interesting research papers you found during this journey? Because it was a bibliometric analysis, and I think all the participants and other members also interested in knowing that what new has been happened in the last decade. As you mentioned that so many research has been done or published in the last decade. Yeah, sir, we are working in this bibliometric. Am I audible, sir? Yeah, you are audible. Yeah, so we are working in this domain since last 2 years. We are like into the last phase of our thesis submission. So we have already published different bibliometric analysis in UGC care listed journals and international journals. So like we have Yog Mimamsa, we have Indian Journal of Psychiatry. So therein we have shown our work on the same, wherein if we talk about India in general, then S. Vyasa, Swami Vivekananda Yoga Anusandhan, has really come up well with this kind of work. And it has some international collaborations with Harvard and with Princeton University, which are also working on the same. So that's what we have come up with. As we have seen that India is almost, coming up with diabetes, like it's in almost in ranking third, as per if we talk about all over in the world. But the publications which has come up with from India is not that well. The major work, the most part of the work is done by US. So this is something which is really eye opener for us and alarming for us, that other institutes from India like Dev Sanskrit Vishwavidyalaya, University of Patanjali, and S. Vyasa and other universities should really collaborate well through different aspects and come up in this domain. So that is what we really wish to come up with, sir. Yeah. Okay, Mr. Akshay. And I would suggest you that bibliometric analysis is good, but try to find out at least something which is very much helpful in curing diabetes, and that knowledge should be spread at the global level. So working on the integrated pathy model, my research topic, my thesis is on the same integrated pathy, like effect of integrated pathy, which includes Yagya, Yoga, Ayurveda, every aspect which Swami Ramdev has introduced. So I'm doing that in Patanjali Wellness. My research is going on in Patanjali Wellness. The data collection phase has already been completed, and we are trying to. That's good. That's very nice. Perfect. Thank you, Akshay. And the suggestions which is given by Honorable Chairperson is definitely going to help you a lot, because he has done yoga also, he has done psychology also, and he's very good at research also. So thank you so much, sir. Moving ahead, can we move ahead? Okay. So now I would like to request Garima Puri and Abhay Sharma ji to kindly present over your paper. Sir, I have shared my PDF file to Jitendra sir.
Jiten sir, can you share the screen of the presentation of Abhay sir and Garima ji? I think is not connecting. Let me check. He has sent me or what? I think we can take another name. You just wait for a few more minutes. I'm calling upon next is Dr. Shunil Kumar Mishra and Shweta Kure. Are you there? Yes, sir. You Yes, are sir. ready. Can you share the presentation from your end and start? सर जितेंद्र सर को भेजी हूँ सर. अरे देवी जी, चलिए ठीक है, फिर जी आप जी भी वेट करिए. हाँ, जितेंद्र सर हैं नहीं आप? अजय जी मैंने आपको भेज दिया है. सर आपने किस पे भेजा है? मैंने वही बोला ना, वो इस पे ओपन नहीं है वो मैं लैपटॉप. शेयर कर देता हूँ अगर शेयर करना जरूरी है तो. हाँ, एक का कर दीजिए अभी फिलहाल, फिर आप तब तक मुझे ऑफिशियल वाले पे भेज दीजिए जो यहाँ पर खुला है व्हाट्सएप. ठीक, हाँ परफेक्ट. तब तक जितेंद्र सर जिनका भी शेयर कर रहे हैं, आप दोनों में से जिनका नाम मैंने लिया, आप प्लीज रेडी रहिए. सर आप इनका कर दीजिए अभी फिलहाल. सबसे पहले क्या नाम है इनका? इनका अभय शर्मा एंड गरिमा पुरी जी का कर रहे हैं क्या आप? हेलो, गड़बड़ हो जाएगा सर. हेलो, हेलो सर जिसमें हाँ, अभी आप फिलहाल, अरे ये तो स्क्रीन ही दूसरा आ रहा है. ये जो है अजय जी. हाँ सर. हेलो. हाँ सर ये बोलिए. जो गरिमा पुरी जी का पीपीटी है ये इन्होंने हिंदी फॉन्ट में ही पीपीटी में भेजा है, पीडीएफ में नहीं भेजा, इसलिए जब पीपीटी ओपन होने पर उसके फॉन्ट चेंज हो जा रहे हैं. ठीक है, तो गरिमा जी और अभय जी आप ये ऐसे बता दीजिए ना सर को. ठीक है, ऐसे कर दीजिए. वी आर रियली सॉरी. पीडीएफ में हमेशा सेव रखना चाहिए था, तो वो नहीं है तो कोई बात नहीं. आप प्रेजेंट कर दीजिए. हमारे चेयरपर्सन आपको उस बेसिस पे गाइडेंस दे देंगे. या फिर जिनका पीपीटी अभी रेडी है, किनका और है? लेट मी चेक द नेम्स. अक्षय जी का हो गया. नेहा जी है क्या? नेहा जी बीएचयू से. हेलो. नेहा जी. हेलो. हेलो सर. हाँ. Can I audible? Yes, you are audible. Can you share the presentation and begin your presentation? Yes, sir. Okay, Just a perfect. second. So meanwhile, अभय जी आप अगर कुछ कर सकते हैं तो देख लीजिए, बिकॉज ऑनलाइन मोड में ना प्रेजेंटेशन होना चाहिए. एटलीस्ट रिसर्च आपने क्या किया है थोड़ा विजिबल होता है तो समझ में आसानी होती है. आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने का कोशिश करिए या कॉमन फॉर्मेट यूज करिए. नेहा जी आप शेयर करिए स्क्रीन प्लीज एंड Just a माइक ऑन. second, sir. हाँ, हो नहीं रहा है. एक second. नेहा दो नेहा है. आप कैमरा ऑन करेंगे नेहा जी? Yes, sir. एक मिनट हो नहीं रहा है. Share. Can I, sir? कौन? Who is there? Abhishek. Sir, Abhishek. हाँ, Abhishek, you want to present? Are you ready with the presentation? Yes. Okay. Yes, yes, yes. Abhishek, Yes. you please share your presentation and you can begin. Thank you so much, Abhishek. अभिषेक मौर्य एंड उपमा मिश्रा, आप दोनों साथ में कर रहे हैं? नहीं, अभिषेक मौर्य जी का ही. No, sir, no, sir. Only Abhishek Maurya. सर संतोष सर प्लीज आप देख लीजिएगा, सिर्फ अभिषेक मौर्य जी हैं. ठीक है, यू कैन बिगिन योर प्रेजेंटेशन. फुल स्क्रीन कर दीजिए बेटा, ये स्क्रीन फुल कर दीजिए आप. Okay. Perfect. Namaste to everyone, respected chairperson and my colleagues. Myself, Abhishek Maurya, PhD scholars from the Department of Sangyaharan, IMS BHU. My topic is cortisol, lower backache, induced psychophysical disorders, their impact on quality of life and role of yoga. So background is pain is well defined by IASP, International Association for the Study of Pain,
उसने एक डिसाइड किया है कि मतलब पेन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिफिनेशन दिया है कि बेसिकली पेन है क्या। तो इट इज अनप्लीजेंट इमोशनल एंड सेंसरी एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद physically basically muscular pain. And another is psychophysical disorders refers to conditional where psychological factors influence physical health. LBA, lower backache, it is a common medical conditions affect physically, biochemically, and socially affected. There are 619 million people, approx 8% in global. They are affected to lower backache and I estimate मतलब एक डाटा है जो ये बताता है कि 2050 तक ये जो संख्या है बढ़ के 843 मिलियन लोगों की हो जाएगी जो बिल्कुल लोअर बैक पेन से पीड़ित रहेंगे। ग्लोबली हमने यहाँ पे एक डेटा डालने का प्रयास किया है जिसमें डिजनरेशन है स्पाइन के लिए, और चाहे अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन यूनियन और चाहे जहां भी है, ऑल ओवर पूरे होल वर्ल्ड में मतलब जो डिजनरेशन की बात है वो हर जगह जो है बहुत ही चिंताजनक है और मतलब बहुत ही हमारे पास भी तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय भी है। और इसको दूर करने के लिए जो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा माध्यम है वो योग के ही माध्यम से दिखता है, तो हम उसको यहाँ पे प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। और चूंकि जब भी लोअर बैक पेन की बात होती है, लोअर बैक पेन की समस्याएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो साइकोफिजिकल ही होती हैं। क्योंकि साइकोफिजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं हम इसको जानते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के नाम से भी, या साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी इसको हम कहते हैं। और ये रिफर्स करता है हमारे फिजिकल इलनेस को, बॉडी कंडीशंस को, और दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। कहीं ना कहीं जैसे हम बात करते हैं कि साइकोसोमेटिक्स मनोकायिक जो रोग हैं वो आज के समय में गिने जाते हैं कि मानसिक और शारीरिक दोनों जो डिजीज हैं, डिसऑर्डर्स हैं, एक साथ साथ चलते हैं। तो इट कनेक्टेड बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी विच बैडली अफेक्टेड विद psychological stress. Emotional factors playing a big role in the development of exacerbation or maintenance of physical symptoms. कटिसूल बेसिकली लोअर बैक पेन की जो हमने बात करी, इसके बहुत सारे कारण हैं और ये होता है जनरली देखें एक कॉमन लाइफ स्टाइल में कि लगभग 45 साल से 65 साल के लोगों के बीच में होता है। अर्लियर एज में भी होता है लेकिन उसमें समस्याएं कम देखने को मिलती है, लेकिन इसमें 45 टू 65 के बिटवीन बहुत ज़्यादा केसेस यहाँ पे आते हैं। चूँकि हॉस्पिटल है सर सुंदरलाल हॉस्पिटल, तो मैं इसी पे काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारे केसेस मुझे इसके बीच में मिलते भी हैं। उसका कारण क्या होता है कि हर्निएटेड डिस्क होता है, डिस्क बल्जिंग की समस्या होती है, मसल्स स्ट्रेन हो जाना, स्पाइनल स्टोनाइसिस हो जाना, ओबेसिटी या बॉडी वेट की वजह से भी ये समस्याएं होती हैं। जो महिलाएं प्रेगनेंसी के बाद भी इन समस्याओं को फेस करती हैं। साइटिका और ऑस्टियोआर्थराइटिस भी इसमें कारण है। इंजरीज अगर हो जाती हैं तो इंजरीज के बाद भी ये जो है लोअर बैक की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और बेसिकली आज के समय में जो परिवेश है वो गलत तरीके से बैठने के, जिसको हम पुअर पोस्चर के नाम से यहाँ पे बोल रहे हैं, तो इसकी वजह से भी लोअर बैक की समस्याएं कहीं ना कहीं सभी को फेस करनी पड़ती है। और इसका क्वालिटी ऑफ इम्पैक्ट क्या है क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, तो फिजिकल फंक्शनिंग जो है बहुत ही मतलब पुअर हो जाती है। मेंटल हेल्थ जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करता, हम दूसरों के साथ सोशल में मेंटल हेल्थ प्रॉपर नहीं रहता तो सोशल इंटरेक्शन भी हमारा प्रॉपर नहीं हो पाता, जिससे हमारा जो कार्य है और जो उसकी उत्पादन क्षमता है, प्रोडक्टिविटी है, बहुत ही घट जाती है। और नींद की भी समस्याएं, नींद नहीं आना और भी इसके साथ साथ भूख नहीं लगना, थकान होना, ये सारी भी समस्याएं, और धीरे धीरे फिर हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें समस्या धीरे धीरे उसको बढ़ने लगती है, जिससे इसके कारण और भी दूसरी चीजें होने लगती हैं। तो इसमें योग क्या कर सकता है, योग के क्या प्रभाव हो सकते हैं। चूंकि हम देखते हैं कि इतनी सारी रिसर्चेज हो गई हैं जो लोअर बैक पेन पे और मस्कुलर पेन पे या फिर शोल्डर पेन पे मतलब दिखती हैं, तो उसमें बेसिकली हम यहाँ लोअर बैक पेन की बात कर रहे हैं, तो उसमें यही दिखाता है कि जितने भी रिसर्चेज हैं वो मतलब यही शो करते हैं कि जो आसनाज हैं वो इस पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। और जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, जो इस प्रैक्टिस को करने की प्रॉपर, जब हम लोग लोअर बैक पेन स्पेसिफिक जो है इसके लिए जो हम आसनों का उपयोग करते हैं, ये पारंपरिक तरीके से जो हम करते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करके और इसको हम लाभ लेने के उस बिहाफ पे भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन थिंग कि योगिक प्रैक्टिसेस आर सोन टू बी एंटी एनाल्जेसिक एक्टिविटी अगेंस्ट इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन भी है तो कहीं ना कहीं हम योग आसनों को करके और मेडिटेशन को करके प्राणायाम को करके उसको दूर कर सकते हैं, और किया जाता है। इसके कई सारे रिसर्चेस भी अवेलेबल हैं। अब ये हमने जो स्टडी करी थी, इसका एम और ऑब्जेक्टिव यही था कि करंट जो रिव्यू है इंक्लूड्स योगा असेसमेंट विद द एम्फेसिस ऑन द डाटा ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ कंपोनेंट्स एंड psychophysical disorders effect to identify therapeutic potential and gaps for further study। जो लकुना है, जो बीच में रह गया है स्टडी के बीच में, उसको हमने इसमें करने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य था, हमने मेथोडोलॉजी इसमें क्या रखी है कि जो हमने पेपर को सर्च किया है, बेसिकली ये कम्प्रिहेंसिव रिसर्च है। इसमें किसी प्रकार का सैम्पलिंग नहीं किया गया है। हमने पेपर्स को ही पढ़ के एक डाटाबेस तैयार किया है और इसमें ये सारी चीज़ें आई हैं, जिसमें से पबमेड था, गूगल स्कॉलर था, मिडलाइन था, कोक्रेन लाइब्रेरी भी पढ़ी हमने, साइको इन्फो भी पढ़ी, इम्बेस और कैम्बेस पढ़ के, और भी जो इवन दो चरक संहिता भी हमने पढ़ी, उसमें बताया है महर्षि चरक ने कि जो वेलनेस है वही आपकी हैप्पीनेस है, वही सुख है, और जो इलनेस है वही पेन है। चरक संहिता में ऐसा बताया गया है। तो हमने एक स्टडी प्लान करी जो 2000 से 2022 के बीच में थी। पास्ट स्टडीज बहुत सारी हो गई हैं, हमने बेसिकली यहाँ पे 3 स्टडीज ही मेंशन करी है, बस इसलिए कि इसमें हमने देखा कि हाँ बिल्कुल जो आसनास हैं, जो योगिक प्रैक्टिसेस हैं, वो लोअर बैक पेन पे किस तरीके से अफेक्ट डालती हैं, प्रभाव पड़ती हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे वो अपना प्रभाव डालती हैं। और ये इसके साथ साथ जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उस पर प्रभाव डालती हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती हैं। और ये एक शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लंबे समय तक ये सारी चीज़ें काम करती हैं। Results क्या मिला? लोअर बैक और लोअर बैक पेन कैन हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन साइकोफिजिकल वेलबींग अफेक्टिंग बोथ द फिजिकल एंड मेंटल एस्पेक्ट। बिल्कुल जैसा कि हमारा टॉपिक है, हमने इस पे पढ़ा और पढ़ने के बाद खोजा तो यही पाया कि हाँ बिल्कुल ये मानसिक लेवल पे भी और शारीरिक लेवल पे भी ये इफेक्ट डालती है। द प्रैक्टिस ऑफ योगा कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल, बिल्कुल सकारात्मक प्रभाव डालती है, जिससे हम अपने लोअर बैक पेन को मैनेज कर सकते हैं। Its associated psychophysical effects contributing to improved quality of life, बिल्कुल quality of life भी improve होती है। Major reported benefits include improvement in body flexibility and balance, शरीर में लचीलापन और बैलेंसिंग, और स्ट्रेस को कम करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, बॉडी वेट को मेंटेन करना और इम्यूनिटी को बूस्ट करना। ये सारे फैक्टर्स जब आते हैं, जब हम योग की प्रैक्टिस को करते हैं, तो ये जो समस्याएं हैं ये बिल्कुल दूर होती हैं। Conclusion: The literature review presents a summary of medically subsistent information about the health benefits of yoga for healthy people and for the conceded by cardiopulmonary and musculoskeletal disease. Yoga is a new emerging field for the scientific database। मैंने मतलब पढ़ने के बाद ये पाया कि योग एक नई इमर्जिंग फील्ड है, इसमें बहुत कुछ अभी करने की जरूरत है, इसमें कई लकुने हैं, बहुत रिसर्च गैप है। तो जो फुलफिलमेंट है, और चूंकि यही समय है जो वैज्ञानिकता का समय है, और इसकी जो ऑथेंटिसिटी थी, जिसको पहले लोग बहुत इससे दूर होते थे, अब जब इसको हम वैज्ञानिक धरातल पर रखे हैं, तब इसको लोग समझ पा रहे हैं और तभी इसको वो यूज कर पा रहे हैं। तो इसमें और भी बहुत कुछ काम करने के लिए है, जिसको हम वैज्ञानिक तौर पे प्रेजेंट करके हम इसमें और भी अच्छा लाभ पा सकते हैं। थैंक यू। यू सो मच अभिषेक। इससे पहले कि मैं और कुछ कमेंट्स करूं और सर को बोलूं कुछ कहने, मैं पार्टिसिपेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आपके पास जो टाइम है वो मैक्सिमम 5 to 6 मिनट्स है, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। सर ओवर टू यू। डॉक्टर संतोष सर कुछ पूछना चाहें? हाँ अभिषेक जी, आपने भी प्रेजेंटेशन दिया है, लो बैक पेन के बैके के ऊपर आपने काम किया है। तो इसमें जो है आपने जो प्रेजेंटेशन यहाँ पर किया, उस प्रेजेंटेशन में कई जगह हमें ऐसा लगा कि और भी अधिक अच्छा प्रेजेंट कर सकते थे आप इसके अंतर्गत, क्योंकि पिन पॉइंट आपको अपनी बातें रखनी चाहिए कि क्या ऑब्जेक्टिव है आपके रिसर्च का और क्या मेथोडोलॉजी आपने अडॉप्ट की उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, क्या रिजल्ट और कंक्लूजन आए। तो उसमें जितना कॉन्ग्रुएंस होगा उतना अच्छा रहेगा। जैसे अभी कुछ देर पहले आपने दो तीन बिब्लोमेट्रिक एनालिसिस भी देखी और आपका भी काम कमोबेश उसी तरीके का था। तो
उसमें आप कई चीजें वहां से भी लर्न कर सकते हैं कि किस तरीके से इसको और बेटर हम बना सकते हैं, क्योंकि टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि वो कौन से पोस्चर्स है जिसके ऊपर सभी को ध्यान देना चाहिए जिससे बैकएक से बचा जा सके, क्योंकि बाकी सारे जो भी कॉज हैं वो तो अलग अलग कारणों से होते हैं, लेकिन पोस्चर एक ऐसी चीज है जिसको व्यक्ति सुधार सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सर, तो एक तो जैसे हम आसनों की बात करें तो उसमें यही मतलब मना होता है कि हमें आगे झुक के वो अभ्यास नहीं करने हैं। लेकिन जब पोस्चर की बात करें कि हम किस पोस्चर में अपने काम को करें या फिर कैसे करें, बेसिकली हमें अपने स्पाइन को सीधा करने की बात कही जाती है कि हम अपने स्पाइन को जितना स्ट्रेट रख के अपनी चीज़ों को काम कर सकें। और बैठने का तरीका बिल्कुल आगे झुक के ना करें, या फिर हम लोग जैसे कि लोग लेट के मूवीज़, पिक्चर और टीवीज़ देखते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए, जिससे ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। सोने का तरीका भी उसमें सर आता है। ठीक है अभिषेक, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अभी टाइम थैंक यू की सर। शॉर्टेज हम लोगों को, नहीं तो और बातचीत कर सकते थे। थैंक तो यू डॉक्टर अजय जी आगे सर और सर। नेक्स्ट कैंडिडेट्स को बुलाए। हाँ, नेक्स्ट आई थिंक नाउ अभय शर्मा एंड गरिमा पुरी जी, आप यस सर। रेडी हैं, है ना? यस सर। यस परफेक्ट सर, परफेक्ट। पीपीटी शेयर कर दिया और पीडीएफ भी शेयर कर दिया जितेंद्र सर को। इट्स रिक्वेस्ट टू यू, अभय शर्मा जी प्लीज आप क्लोज। क्रॉस ये यस सर। स्टॉप करिए स्क्रीन, ये क्या नाम है, अभिषेक मौर्य जी आप यस सर, स्क्रीन। कैन आई लीव सर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू आप सर, नमस्ते। नमस्कार। जितेंद्र सर आपके पास पीपीटी है इसकी, अभय की, इसने दोबारा पीडीएफ शेयर किया है, आप प्लीज शेयर कर देंगे जितेंद्र सर। सुनील मिश्रा जी, डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा जी हैं, हेलो सर डॉक्टर। श्वेता कुर्रे, मैं हाँ ठीक हूँ सर। आपका भी पीपीटी का प्रॉब्लम है या अभी 10 मिनट और चाहिए आपको? हाँ सर, नहीं नहीं सर, वो पीपीटी शेयर करिए, आप प्रेजेंट उसी का करिए। प्रॉब्लम थे। श्वेता जी पीपीटी शेयर करिए। सर को क्या कह रहे हैं? हेलो जितेंद्र सर को भेजी हूँ पीपीटी। हेलो जितेंद्र सर, आप हैं सर, लाइन मेरी पर? आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है सर इनका प्रेजेंटेशन शेयर कर दीजिए, श्वेता जी। श्वेता किसका है? श्वेता? श्वेता कुरे जी का। ओके ओके, विद इन सेकेंड। ओ अच्छा था आपका प्रेजेंटेशन। श्वेता जी आपका हिंदी में है ये? हाँ सर, मैंने पीडीएफ बना के सेंड किया है आपको। नहीं नहीं, अभी मुझे नहीं मिला है श्वेता जी आपका पीडीएफ। जितेंद्र सर अभय अभय जी का शेयर कर दीजिए, अभय हाँ जी ने अभय जी का मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है प्लीज प्लीज। अभय जी का है, मैं शेयर कर देता हूँ। और कल से अपन एक पॉइंट ऑफ वो रख देंगे ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। और जितने भी लोग सुन रहे हैं, काफी लोग हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू बी रेडी विद द पीडीएफ फाइल आल्सो, so that the images doesn't get disturbed and the font size also doesn't get disturbed, because हिंदी इंग्लिश का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। सो आप सबसे निवेदन है कि जब कभी भी आप प्रेजेंटेशन देने कहीं पर भी जाएं, प्लीज बी रेडी विद द बोथ वे ऑफ प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट भी रखें, पीडीएफ भी रखें, जिसमें जो कंफर्टेबल होगा वो हो जाएगा। ओके अभय जी का शेयर हो गया सर, जितेंद्र सर? हाँ शेयर कर दिया मैंने। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा सर है, हाँ शो नहीं अभी हो रहा। विजिबल, अब दिख रहा है, अब और आपका सर। ये अभी नहीं दिख रहा है। हाँ यस सर। परफेक्ट। अभय शर्मा जी प्लीज आप स्टार्ट करिए, ध्यान रखिएगा 5 मिनट में आपको वाइंड अप करना है, फिर सर क्वेश्चन पूछेंगे। ऑलराइट सर, ऑलराइट सर, ऑलराइट। ठीक, डन। अभी तो थैंक यू सर। सॉरी। स्टार्ट स्टार्ट। Okay, sir. Thank you so much. Good afternoon to all of you. My name is Abhay Sharma, and I'm pursuing post graduation from DSVB. So my research article was the integral aspect of Yagya on women's psychological and reproductive health and well-being, exploring herbals, medicine, and Vedic tradition. So here is table of content. Here, abstract, introduction, methodology, result, discussion, conclusion, and reference. So let's talk about the abstract. Yagya is indeed a significant traditional rituals in Hinduism. Yagya is believed to purify environment and create positive energies. It is said that
it helps to clean environment by reducing the number of harmful bacteria, viruses, etc. that's present in the environment. In addition to this, the fume which releases from the yagya and goes inside the human body as well leaves positive impact and known to boost the immunity and lot of other health benefit. The herbs which have medicinal properties disease work by increasing their potency through sublimation. Medicine which are taken orally such as pills or in liquid forms are known to be less effective than drugs injected directly into the bloodstream. The drugs causes most of its age-related benefit when inhaled as a vapor or in gaseous form. Through inhalation, it is seen that sublimation increases its power exponentially. The roles of women in society is highly valued in Hinduism. In Hinduism, the relation between rituals like yagya and the role of women in society reflect the holistic approach to spiritual and social well-being. In this paper, the researchers explore the aspect of yagya theoretically and try to establish a connection between women, specifically her psychological and reproductive health, with yagya, which have cultural and religious significance as a symbolic meaning for the betterment of society overall. So here is introduction. Healthcare challenges in India: population growth, demographic aging, chronic disease, and rising healthcare expenses pose challenges. Economic progress have been accompanied by widening wealth gap impacting health outcomes. Health progress in India: despite challenges, India has made strides in healthcare with increased lifespan, reduced illness rates, and elimination of disease like tetanus and polio. However, communicable disease remain a concern requiring preparedness. Mental health statistics: 1 in 5 people experience mental disorders. Onset occurs by age 14 with 75% established by age 24. Factors like reproductive roles and societal expectation contribute to mental health issues, especially in women. So here I talk about OCD. So OCD involves repetitive thoughts leading to compulsive behavior. It is more common in men during childhood and in women during adolescence and adulthood, often associated with puberty, pregnancy, or infection. So here I talk about the impact of anxiety on OCD. OCD is described as painful aspect of mental illness affecting normal life and causing depression. Stressor like fear and anxiety can negatively impact daily functioning, leading to disorder like OCD. Therapies for ailments: various therapies exist globally, ranging from acupuncture and aromatherapy to Ayurvedic medicines and Yagya therapy. Each therapy addresses specific ailment or psychological disorder. So Yagya treatment. अभय मैं Yes, sir. इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। आप पूरा पढ़ने की बजाय आप क्या करो कि आप अपने रिसर्च पेपर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो आपने स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी यूज की है और जो रिजल्ट आए हैं उस तरीके से आप फटाफट बता दो, क्योंकि इसमें फिर बहुत समय लग जाएगा। All right, sir. So let's talk about the methodology. The researchers in articles chooses to do theoretical approach towards yagya and its effect on women's health. In addition to this, the very aspect of yagya and societal well-being, which is already mentioned in some text, first author explored the Vedic aspect of yagya in Vedas and its role in societal well-being. The second author explored the healing aspect and role of yagya in treating or improving women's health. In case of conflict between the two authors, to draw a conclusion, there is another author who tries to resolve the issue by giving one's views. In this research paper, the researcher explored the aspect of yagya and tried to establish a connection between women, specifically psychological and reproductive health, with yagya which has cultural and religious significance. So the result. OCD treatment is considered challenging, often require a holistic approach beyond medication. Ritualistic atonement processes and yagya treatment are suggested for complete freedom for OCD. Treatment involves intelligence enhancing, cognitive, sedative, and herbal medicine. Dietary preference for moderate items are recommended for OCD patients. Reassuring words, meditation, and sport are essential components of treatment. The listed herbal medicine, including Brahmi, Shankh-Pushpi, and others, are used in yagya treatment. Gograhit, Khandasari, Jagri, and specific quantity of each herbs are part of OCD specific bundle material. अभी भी आपने सर की बात को समझा नहीं। यू आर जस्ट रीडिंग आउट यार। आपने जब रिसर्च पेपर लिखा है तो आप खुद से बताइए ना कि व्हाट यू फाउंड आउट। यू आर जस्ट रीडिंग आउट। ओके सर। सो जो ओसीडी का जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है
जो यज्ञ में तो स्पेसिफिक हर्ब यूज करी जाती हैं। तो अब जो हमने रिसर्च पेपर पढ़े थे वहां पे स्पेसिफिक हर्ब यूज नहीं करी गई थी। वहां पे सिर्फ बताया था कि जो यज्ञ वगैरह हम करते हैं उसका ओसीडी पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो हेयर आई इन रिसर्च पेपर वेयर आई रिटन, तो वहां पे 19 हर्ब्स यूज करी गई थी जो यज्ञ में यूज करी जाती है, और उसका इम्पैक्ट पड़ता है डिसऑर्डर की रिडक्शन में जो वुमेन सफर कर रही होती है। सो या सो डिस्कशन में आते हैं। द स्टडी एक्सप्लोर यज्ञ रिचुअल्स rooted in Vedic tradition, revealing positive links in women's health through herbal practices and social norms. और इसमें बताया गया कि जो यज्ञ थेरेपी है उसका पोटेंशियल है कि वो ट्रीट कर सकती है ओसीडी को, impacting its roles in mental health. That text also discussion medicinal plant, meditation and penance, and spiritual dimension in medicine. So here come to conclusion. Article provides an interesting perspective on the use of Yagya therapy in the treatment of OCD. It refers to integrated system that include not only behavioral therapy and psychotropic medication, but also religious and herbal and spiritual practice. Yagya material contains specific herbs such as Brahmi and Pushpi, Ashwagandha, indicating that belief that these herbs have medicinal properties that improve intelligence, memory, and intellect. The text also emphasizes the importance of patience, imagination, and support from people who are good at recovery. The connection between yagya, healing, and mental health is interesting, especially in terms of powerful energy that passes through the nose and affect the brain. This is based on the concept of De Prasha Chikitsa, which indicate the special energy produced by yagya for the treatment of mental disorder. So, so here are the references. Thank you so much. So, our supervisor here is. So, just in case if there is any query, you can ask her. Acha, so you have made research paper with your guide. Who is your guide? Yes, sir. Sir, Dr. Vandana Srivastava. Okay, okay, very nice, very nice. So, sir, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो ठीक है। अभय, आपने टॉपिक तो बहुत ही बड़ा लिया हुआ है और इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स एक साथ ही जुड़े हुए हैं और उसमें भी इंटीग्रल एस्पेक्ट्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं। और आपका जो मेनली आप वुमेन्स की हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बट इसमें आपने बहुत सारे नाम लिए। ओसीडी का आपके ऊपर आपने ज्यादा फोकस किया, फिर मेंटल हेल्थ का भी आपने नाम लिया, फिर यज्ञ के भी सारे एस्पेक्ट्स लिए। तो मेरे ख्याल से ये काफी बड़ा काम है और इसके ऊपर जैसे आप इसमें कई सारे रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर सकते थे और एक एक चीज को लेकर के आप कर सकते थे। खासतौर पे जैसे वुमेन्स की मेंटल हेल्थ है तो उसको लेकर के, क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर के, और साइकोलॉजिकल वेलबींग को लेकर के, और साथ ही साथ जैसे इसमें जैसे ओसीडी का आपने नाम लिया तो आप ओसीडी के ऊपर ही फोकस होकर के भी आप इस पे रिव्यू आर्टिकल अपना तैयार कर सकते थे यज्ञ से जुड़ा हुआ लेकर के, वो ज्यादा अच्छा होता। क्योंकि यहाँ आपने तो गागर में सागर भरने का प्रयास किया है और इतने कम समय में इतने सारे विषयों को एक साथ लेके प्रेजेंट करना मुश्किल होता है। तो आप इसमें, मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि अलग अलग इसमें रिसर्च पेपर्स आप तैयार करें और उसे और बेहतर ढंग से प्रेजेंट करें, क्योंकि इसमें आपने आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी नाम लिया और एक एक मेडिसिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे वो किस मेंटल हेल्थ के किस एस्पेक्ट को कैसे असर करेगी, ये सारे भी क्वेश्चंस होते हैं। तो ओके, प्रयास अच्छा था, तो ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू अभय शर्मा, गुड ट्राई एंड यू आर लीडिंग एंड मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। जो सर ने सजेशन दिया है वो आप फॉलो करें, आप और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। नाउ आई एम कॉलिंग अपॉन जितेंद्र सर। श्वेता कुरे जी का पीपीटी आ गया क्या? जितेंद्र सर। हाँ, हेलो जितेंद्र सर। जितेंद्र सर। जितेंद्र सर। जी 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 सर, श्वेता कुरे जी का पीपीटी आ गया क्या? वो हिंदी में था जो चेंज हुआ क्या? नहीं, वो एक काम करिए सर, वो सीक्वेंस से कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोग ना बीच में आ रहे हैं, तो सीक्वेंस से नाम लेते चले जाइए। जिनका होगा वो अपना प्रेजेंट कर दे, जिनका नहीं है वो अपना वेट करें फिर, और क्या।
सर मैंने तो हेलो अभय जी सर। का हो गया, गरिमा जी का हो गया, श्वेता कुरे जी का है, डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा। पीडीएफ से रीड कर दीजिए। सर नेम सुनील कुमार मिश्रा सर भी मेरे नेम साथ हैं। नेम फ्रॉम द पीडीएफ। सर एक मिनट, कौन सी पीडीएफ? ऑनलाइन वाले लिस्ट से ना सर? Sir, my name is Upma Mishra and I'm ready if you want to take. Yes, ma'am. You can present and share the screen and you can start. Yes. ओके सर, मिल गया लिस्ट मुझे। अब उपमा मिश्रा मैम प्लीज आप पहले प्रेजेंट कर दीजिए, फिर मैं दूसरे का नाम। Am I audible, sir? Can I start? Hello, sir. Can I start? Am I audible? Yes, ma'am. You can start. Sir is hearing Okay. also. Okay. A very good afternoon to all the esteemed professors and all the attendees of this conference. My name is Upma Mishra. I am a PhD scholar of yoga at the Shulni University, Solan. I am doing my research under the guidance of Dr. Samdu Chetri. The topic presented is the role of Ayurveda in the well-being of urban society in India. It is an online survey. We'll be covering the following topics during this presentation. Ayurveda, as we know, is a 5,000-year-old ancient system of healing that's been trusted for ages. It focuses on balancing three elements in our bodies, Vata, Pitta, and Kapha, to treat us as individual, not the same for everyone. Ayurveda thinks about health as more than just the body. It considers how our mind, bodies, and spirits connect, aiming for total well-being. Ayurveda complements modern medicine. Its integrative nature bridges gaps in healthcare, offering diverse perspectives and treatments for a more comprehensive approach. Our research or our survey aimed to delve into the preference of urban Indians regarding complementary and alternative medicines. With an array of alternative medicine systems available, our focus was to uncover which specific practices resonate most with urban dwellers in India and to understand their knowledge and use of Ayurveda in their daily lives for well-being. Let us take a closer look as how the research was conducted. First off, a questionnaire containing 16 questions was prepared using Google Forms. Using the snowball sampling technique, we did the survey. The questionnaire was circulated for around 12 to 15 days on various social online platforms like Facebook, LinkedIn, WhatsApp, and Instagram to reach a wider audience. A total of 360 people of all age groups and gender participated in the survey. The demographics we focused on were from any Indian cities, including the 4 major metros. For our analysis, we utilized statistical methods using Microsoft Excel to organize and interpret the data, giving us valuable insights into the preferences and choices of urban Indians regarding alternative medicine. Our research uncovered fascinating insights into the preferences of urban Indians regarding traditional medicine systems. Firstly, it's evident that urban Indians hold a strong awareness of Ayurveda as a traditional healthcare system. Surprisingly, while Ayurveda is widely recognized, the most preferred and popular form of complementary and alternative medicine among urban Indians appears to be homeopathy. Moreover, a substantial 44.57% of urban participants reported having sought Ayurvedic consultations from a Vaidya, indicating a significant level of trust and engagement with Ayurvedic practitioners. Our research revealed a significant trend in the use of Ayurveda for treating various illnesses among urban Indians. A notable proportion of 59.51% of respondents reported utilizing Ayurvedic treatments to address their health concerns. A substantial portion of respondents reported positive outcomes and perceived efficacy in the treatment of their health issues through Ayurvedic medicines, while only 4.35% reported Ayurveda as ineffective. A considerable number of participants
that is 76.28%, indicated easy access to Ayurvedic practitioners and medicines within city limits. This accessibility factor likely contributes significantly to the utilization of Ayurveda as a viable healthcare option among urban residents. 78.26% respondents believe that Ayurveda can play an important role in maintaining and improving the well-being of urban society. In conclusion, while Ayurveda holds significant importance as a choice for complementary and alternative medicines among urban Indians, it's not the foremost preference. To elevate its popularity, collaborative steps are crucial. Initiatives promoting awareness about Ayurveda's benefits must be intensified. Fostering partnerships between Ayurvedic practitioners and modern medicines to combine strengths, standardizing practices, funding research endeavors, and regulating services will enhance trust and acceptance. Easier access to Ayurvedic healthcare services will not only broaden its reach, but also solidify its position as a valued healthcare choice among urban Indians. In the end, I would like to extend heartfelt gratitude to my research guide, Dr. Samdu Chhitriji, for his valuable inputs and support, Dr. Subodh Saurabh Singh ji, our HOS at the School of Ancient Indian Wisdom and Yogic Studies, Shulni University, and to Dr. Hina Sharma, Clinical Professor at Pacific Medical College and Hospital, Udaipur, Rajasthan, for her help and assistance during the survey phase of the study. And last but not the least, a big thank you to the Sri Ram Yog-Society for organizing this conference. Thank you so very much. I conclude my presentation here. Okay, over to Honorable Chairperson, sir. Ms. Upma Mishra ji, first of all, I would like to congratulate you on doing this nice presentation, short and sweet. Thank you so much. And it was on a very good topic, the impact of Ayurveda. And you have mentioned that you did work on well-being of urban society. Basically, yes. you tried to find out the preference of urban people. Preference of urban people, and you have mentioned so many things. And what I would like to suggest you that people usually face various challenges while trying to get Ayurvedic treatment. Yes. So, and these challenges have various various forms. So those forms could have been included in this particular research work. Means what challenges are being faced by people of urban society. Yes. So that can enlighten us to take right steps in the direction. Maybe, yes, I could have put up a question there. Yes. Yeah. Absolutely. Thank you so much. Okay. Thank you so much, Upma ma'am. Now I'm just reading out the names of the presenters. Please be ready in that sequence. Hello? The PDF. हाँ. हेलो सर, आवाज आ रही है? कौन बोल रहे हैं? सर नेहा हियर. आप रेडी हैं? यस सर, रेडी. पीपीटी आपके पास है? यस सर, है सेट. तो आपका नाम अभी मैंने बोला था क्या पहले? यस सर, एक बार बोल. जी हाँ, जी. तो आप कर दीजिए. चलिए, आप कर दीजिए. शेयर करिए प्रेजेंटेशन फटाफट. सर आपके पास जब तक समय है सर आप बता दीजिएगा. उज्जवल सर ज्वाइन कर लिए हैं, सो ही विल प्रिसाइड इफ यू वांट टू लीव. थैंक यू सर. ठीक है. मैं बस 5 मिनट में लीव करूंगा. ठीक है सर, ये लास्ट प्रेजेंटेशन ले लीजिए. हाँ, एक एग्जामिनेशंस की वजह से. डन सर. नेहा मैम जल्दी. हेलो सर. अरे आपको मैंने एक चीज समझाया, जितेंद्र सर नहीं शेयर कर पाएंगे. आप कर रही हैं शेयर? हाँ या ना? शेयर नहीं हो रहा है. हाँ, तो नहीं हो रहा है तो रहने दीजिए. वेट करिए, फिर सर लगे हुए हैं आपके लिए. ये सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स. प्रेजेंटेशन रेडी है सर. मैं अब लिस्ट के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ. ठीक है, ये प्रेजेंटेशंस की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हैं जितेंद्र सर बैकग्राउंड में, फिर वो करते हैं. अभी मैं नाम ले रहा हूँ. अभिमन्यु आर्या जी, आर यू देयर? विश्व भारती यूनिवर्सिटी से अभिमन्यु आर्या. परफेक्ट सर. कैन यू शेयर योर प्रेजेंटेशन? इफेक्ट ऑफ ओम चैंटिंग
effect of Om chanting on sleep quality of female students. Kindly share the presentation, sir, and give your presentation. And please, participants, be ready. I am calling out the names. इनके बाद हैं अदिति सोनी, उनके बाद अक्षय वशिष्ठ, इनका तो हो चुका, अंकिता, अनुजा कुमारी, अरुषा उपाध्याय, डॉक्टर राजेश कुमार मौर्य, हेत विभेन, धीरज लाल, करण सती, खुशबू, मधु प्रधान, मोनिका देवी, नेति सिंह, परिचिति साहा, प्रियंका कुमारी, रश्मि तिवारी, रेखा, रुपेश, ट्विंकल, ये सभी लोग सीक्वेंस वाइज प्रेजेंट रहे। ठीक है, अभी अभी आप प्रेजेंट करिए सर। ठीक है, अभिमन्यु आर्या जी प्लीज। यस सर, शेयर करिए, शेयर करिए। Sir, there is a network issue that is coming. Wait just for a few seconds. Meanwhile, you can begin and explain if you want. सर मैं रेडी हूँ, महेश पांडव पावामणि। सीक्वेंस से चलेंगे सर, अगर वो नहीं आते हैं तो ठीक है, परफेक्ट। अभिमन्यु आर्या जी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। नहीं हो रहा है सर, क्या सर? हो रहा है, बट जस्ट वेट फॉर इट इज कमिंग। सर इज इट विजिबल? स्क्रीन अभी आया था आपका, फिर चला गया सर। सर आप आगे प्रोसीड कर दीजिए, मैं आपको जस्ट इन्फॉर्म करता हूँ। अदिति सोनी जी, उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी हरिद्वार उत्तराखंड। अदिति सोनी जी, आर यू देयर? द इफेक्ट ऑफ योग निद्रा इन मेंटेनिंग स्पिरिचुअल हेल्थ। अदिति सोनी नहीं है, ठीक है। अक्षय वशिष्ठ, अंकिता, अंकिता जी, एम्स गुवाहाटी। I'm here. Okay, perfect, ma'am. Can you share the presentation and then begin? Sure. Sure, ma'am, please. Effect of Om chanting on higher consciousness with reference to Mandukya Upanishad. Wonderful, doctors, and it is coming from AIMS Guwahati, one of the prominent destination. Please. Is it my screen is visible? Perfectly visible. Perfectly visible. Please. Okay, thank you so much. So this is Ankita Bothakur. I'm from AIMS Guwahati, and I did this research under Dr. Madhan Bora ma'am. And my topic is effect of Om chanting on higher consciousness with reference to Mandukya Upanishad. As we have less time, I'll be proceeding soon. So to introduce, Mandukya Upanishad is one of the shortest Upanishad that we have, and it actually talks about, it has 12 mantras, and it has 4 chapters, and the first chapter, that is Agam chapter, has all the 12 mantras and few karikas. So सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैम का स्क्रीन नहीं दिख रहा है, अभिमन्यु सर का शेयर हो रहा है, तो मतलब क्या, मतलब देख नहीं सकते सर, मैडम जो शेयर कर रहे वो। Should I share it again? If somebody else is saying, then he needs to stop it. Then only my screen will be visible. Ajay, see your voices. You are not audible if you're saying something. Hello, अंकिता मैम का प्रेजेंटेशन मुझे तो दिख रहा है, बाकी लोगों को नहीं दिख रहा है। Should I? नहीं सर, अभिमन्यु आर्य का स्क्रीन शेयर हो रहा है हमारी स्क्रीन। No sir, we cannot see. नहीं सर, नहीं दिख रहा है मैम का। सी अंकिता मैम का ही प्रेजेंटेशन खुला हुआ है, इफेक्ट ऑफ ओम चैंटिंग ऑन हायर कॉन्शियसनेस। अभिमन्यु आर्या जी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। Sir, should I stop it and share it again? Yes, sir? Yes, ma'am. Do it once again. Okay, okay. Perfect, ma'am. Perfect. Now it's visible, so you can begin.
Visible to everyone now? Yes, perfect, ma'am. Yes, it's visible now, ma'am. Okay. So to continue, Mandukya Upanishad specifically tells about the syllables of Om. It tells about the 4 stages of consciousness that leads to the higher consciousness, which is actually named as Brahman, which is derived through Atman. So the statement of the problem is to study the effect of Om chanting on higher consciousness. That is with reference to the Mandukya Upanishad. And the main objective of the study is to assess the finding of selected research papers regarding the effect of Om chanting on higher consciousness. We actually have got 2 types of researchers, very less research on theoretical basis, descriptive basis, and many researchers are there on empirical basis. If we talk about the need and significance of the study, there are plethora of mantras that is chanted all over India, and the effect of Vedic chanting on consciousness and mental state has been long researched. And this is one, Om chanting is one of the oldest available divine hymns. As we know that now NASA also has confirmed that Om is sound of the universe. So to maintain to maintain the standard, to validate and to empower the tool, aiding in effect of behavioral changes leading to optimal and healthy lifestyle, we actually need to research on these mantras or Bij mantras, specifically Om, which is the oldest of all the hymns. With a positive hypothesis, the effect of syllables of Om described in Mandukya Upanishad is to reach the higher level of consciousness. So investigation is to find out if there is significant impact of Om chanting on higher consciousness level. And my sources, there are 2 sources, primary and secondary. I have gone through many books including Mandukya Upanishad and the consciousness, yoga of consciousness, and written by many of the authors. And the secondary sources involve scholarly articles, research thesis, and online magazines and other sources. So this paper is a descriptive paper. There are, I have put many literature review, but I have put only 3-4 here. I'll just summarize it. If we talk about the theoretical or descriptive or analytical aspect of the research, there are very less researches done on the Upanishads or Vedic texts regarding this topic, Om chanting. But there are many researches which are done empirically and which actually has shown results on various age groups and various types of diseases, specifically the mental diseases, mental disorders. So we will be discussing this in our further presentation. In Mandukya Upanishad, the 4 stages of Om are described, where actually the A stands for Apti, which is obtaining or reaching. U stands for Utkarsh or Utkarsha, which is exhalation. And M stands for Miti, which is constructing or erecting. And 1, which is without an element, is the silence. That is 4.5 matra, that what we actually say. If we talk about the each syllable, A stands for the sound of, that creates vibration in our chest and sternum and neck. U creates vibration in our thyroid gland, and M creates vibration that increases the efficiency of reaction of the brain. That means it affects the nervous system. That is what is found in the empirical researches that is done on Om chanting and some other Bij mantras.
In Mandukya Upanishad, 4 specific stages that are mentioned is Jagrata, Nidra, Sushupti, and Turiya. So Jagrata, it has been linked with Traya Viveka also. And when we talk about Jagrata, it is the conscious state. It is the full physical gross state, conscious state. And when the next step comes is the Nitra, which is dream, and which is not, it has awareness, but yes, little conscious, and but it is aware of the ego and the power which we say. And when we go to the deep sleep, it actually lost the consciousness to an extent. Still, some kind of awareness is there, but the silence, that is the Turiya state, which is the higher state, we reach the Shunyavastha there, and it is totally unconscious competence, which we can say. Anatomically and physiologically, if we tell about the effect of Om chanting, it is actually there is a wall between thalamus and hypothalamus, which is called hypothalamic sulcus or Monro. That is hit when we chant Om, and the various syllables of Om hit that wall, and it hits the hypothalamus, which is the master of the master gland, that is pituitary gland, which secretes various hormones in our body. So it affects directly in our body, and this is what is found in the research, empirical researches, and the consistent chanting of Om actually increases the parasympathetic nervous system and improvement in focus, concentration, and steadiness, enhanced peace and calm, and get rid of diseases. So the purpose of this self-inquiry is the permanent and end of suffering. I mean, why we are chanting Om? To reach what? To reach the end of suffering. Through various stages, one's journey of self-inquiry is actually when one reaches and understands the root cause of suffering and understands the reality, which is mentioned as Atman. And then the individual self will reach the universal self, which is mentioned there as Brahman. These are some of my references. Thank you very much. If somebody is saying something, I'm not able to hear anyone. Hello. Thank you, ma'am. Hello. Yes, sir. Thank you, ma'am, for your presentation. Dr. Ujjwal Mashke, sir. Are you there? Ujjwal Mashke, sir. Yes, yes. Please, you can ask, if you want, you can ask questions and give suggestions to Upma Mishra, ma'am. Anything if you want to add? No, I'm Ankita. I'm Ankita Bothakur. Okay, sorry. Ankita, ma'am. Now the next participant is, if you want to ask, sir. No. It was a very nice presentation by Ankita on Om chanting and the Mandukya Upanishad. Very nice topic and nice presentation. Thank you so much, Ankita ma'am. The researchers coming up like you, who are working in such a wonderful institute like AIMS, and then describing about Om chanting is really very enthusiastic and energetic and inspiring for all the researchers who are budding up and coming up. Moving ahead, now the next participant is Anuja Kumari. Anuja Kumari. Hello, sir. Are you ready with your presentation? Yes, sir. I'm Abhimanyu Arya. I'm ready. Okay. Abhimanyu I'm sharing Arya. my screen with the name Rupesh Kumar. There was a network glitch in my laptop, so I'm ready now. Please share.
Is it visible now? Yeah, screen is visible, but it is not. Yes, perfect now. You can start, Abhimanyu ji. Yes, sir. Good afternoon, everyone. So my topic is effect of Om chanting on sleep quality of female students. I'm Abhimanyu Arya. I'm guest teacher in the Department of Yoga Art and Science, Vishwa Bharati University. So earlier, one participant was talking about the Om chanting, its literature review, how it goes in the Upanishad and Mandukya Upanishad briefly. So we will talk it about its scientific purpose and further. So there is a content. Firstly, we will talk about background. Later, then we will proceed to aim, material and method, intervention, results, conclusion, and references. So firstly, we will talk about the background. As we all know, the sleep is an essential and integral part of the body that is usually contribute to our restorative effects in our life. And whether we all know that poor quality of sleep may leads to many kind of physiological disorders and mental disorders also. So it can decline in the mental abilities of an individual. A survey was conducted where it has been seen like 63% of college students are affected by poor sleep quality. And there are many such factors like caffeine intake, stress, headache, irregular sleep wake patterns, internet addictions, or long electronic usage hours. So this can be associated with the poor sleep quality among students, and it can affect them negatively. So when someone compromise with the sleep hygiene, it affects us negatively, and circadian rhythms and impair the quality and quantity of sleep, result in impaired academic scores and mood regulation in students' life. Some interventions like mind body exercises has been reported to be the most effective intervention to cure that, and it is found to an effective remedy for the 11 among 11 type of treatment options, and such a mind body intervention we know as a yoga. तो यहाँ पर योगा काम करता है हमारी माइंड बॉडी एक हार्मोनियस वे में काम करने के लिए. So the aim of the present study was to check the efficacy of Om chanting to the selectively sleep quality among female students of university, and the participants was residing in the hostels. Materials and methods, there were 21 female students, and their age group was 19 to 25, and no adverse events or dropout were seen in the study. Sampling was convenient sampling, और 20 days लॉन्ग का इंटरवेंशन हमने किया था होम चेंटिंग का सोने से पहले. स्लीप स्कोर्स हमने इवेल्युएट किए थे पिट्सबर्ग स्लीप क्वालिटी इंडेक्स से, और इवेल्युएशन क्राइटेरिया में पाया गया, इवेल्युएशन क्राइटेरिया कहता है कि अगर 5 अप टू 5 और बिलो 5 अगर स्कोर आता है तो क्वालिटी स्लीप है, अगर उससे ज़्यादा है तो ये शो करता है कि आपका स्लीप क्वालिटी पुअर स्लीप क्वालिटी माना जाता है. इंटरवेंशन में हमने योगा के दौरान ओपनिंग प्रेयर, ब्रीदिंग अवेयरनेस, गेजिंग एट द ओम पिक्चर, क्लोज्ड आइज विजुअलाइजेशन ऑफ ओम, वर्बल ओम चैंटिंग, verbal om meditation, mental chanting, silence, or closing with we have closed that intervention with the Shanti part, and its duration was 30 minutes. And the result came out we have compared pre and post data with the paired sample t test in the SPSS. So it has been shown that the baseline was earlier as a pre-data was 5.619 and it reduced to the 3.6. It was a significant reduction at P less than 0.00. Results are there. We have mentioned here the mean of the pre-post data and the significant the tail t-test less than 0.0. Conclusion यहाँ पर दिखता है कि there was the significant decline in the PSQI score, Pittsburgh Sleep Questionnaire Index में हमको ये देखने को मिला कि जो स्लीप क्वालिटी है वो स्कोर कम माना गया है. पहले प्री में ज़्यादा था, पोस्ट में कम हुआ, तो ये फिर एक अच्छा साइन है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कॉग्निशन को बढ़ाने के लिए. और पाया गया कि जो आपका ओम मेडिटेशन है वो फेवर करता है
आपका जो स्लीप क्वालिटी को अच्छा करने के लिए। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। Okay, sir, I request Dr. Ujjwal Mashke sir to kindly take over. Yes, nice topic, Abhimanyu ji and Rupesh Kumar. Yes, sir. Thank you so much. But the thing is that I want to ask whether the students were yoga students or of other departments. Sir, they do not know about the yoga. They were other students rather than yoga. Among them, yoga students were also there? No, sir. Other department students? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so still I will suggest, though it is a very nice research. Thank you so much, The sir. control group should also be there, no? Because when we compare the results, you have taken only one group pre-test. If there is a control group, then it is better to compare the results with the other group. Okay. Okay, sir. Thank you so much. Okay. Otherwise, it is very nice. Congratulations. Thank you for your feedback, sir. Thank you, thank you, thank you so much. Now the next is, as I called upon the name, Anuja Kumari, Banaras Hindu University. Anuja Kumari हैं क्या? Anuja Kumari जी हैं, Banaras Hindu University Research Scholar, Role of Yogic Practice in Obesity. Obesity नहीं है, कोई बात नहीं. अरुषा उपाध्याय, एमिटी यूनिवर्सिटी राजस्थान से. Amity University Rajasthan se Arusha Upadhyay. Yes, Are you sir. there? Yes, sir. Okay. So kindly share your presentation and begin. Yes, sir. अरुषा जी के बाद आप तैयार रहिएगा. डॉक्टर राजेश कुमार मौर्य जी. डॉक्टर राजेश कुमार मौर्य जी, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, गोपेश्वर, चमोली, उत्तराखंड. हैं आप सर? यस सर. हाँ, इनके बाद अपनी पीपीटी आप ओपन करके रखिए. डॉक्टर राजेश. हाँ, आप ऑडिबल हैं. आवाज आ रही है? मेरी हाँ, आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज आ रही है. अभी आप वेट करिए सर. ठीक है, अभी हम आरुषा जी का प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, फिर आप करिएगा. ठीक है. एंड उसके बाद डॉक्टर राजेश के बाद हेतवी बेन धीरज लाल, आप तैयार रहिए. हाँ, ठीक है. ओके, सो पहले डॉक्टर आरुषा उपाध्याय जी, प्लीज शेयर योर प्रेजेंटेशन. Full screen. Do it full screen, please. Yes, I'm trying, but I don't know. Not an issue. You can begin. You can. You haven't done enable editing. That's why that is not coming. Sir, is it visible now? Yes, it's visible. Yeah, It's visual. Okay. So as the world becomes increasingly digital, so does the tourism industry. Arusha ji, please continue. Yes, sir. As the world becomes increasingly digital, so the tourism industry. This is exciting new era known as Tourism 2.0 is driven by technology and innovation, and it's changing the way we travel and experience the world. But how can we navigate this digital landscape and make it the most of it? The answer lies in digital literacy. Good afternoon, everyone. This is Arusha Upadhyay and from Amity University, Jaipur. My topic is a study of Tourism 2.0, Mastering Digital Literacy for New Era. Introduction, a digital transformation, the rise of technology in tourism. Technology is transforming in tourism from personalized travel experience to innovative marketing technology is reshaping everything. Digital literacy is essential. Tourists and professional need the skills to access, understand, and use digital tools. Technology empowers tourists. They can plan trips, explore destinations, and connect with communities online. Mastering Digital Literacy for New Era, a study of Tourism 2.0. Technology is changing tourism.
It is called Tourism 2.0 now. Digital skills matter for both travelers and tourism professionals. Tourists use digital tools to plan trips, connect with locals, and personalize their experience. Professionals need digital skills for marketing, customer services, and data-driven decision. Learn digital skills for travel planning, booking, and communication. Consider digital literacy training if you work in tourism. Embrace technology to improve your travel experience and tourism business. The current state of digital literacy in tourism sector. I believe that digital literacy is crucial for both travelers and professionals in tourism industry. Travelers and professionals increasingly using technology to plan trips, explore destinations, share their experience online. Studies have shown that 75% of travelers use the internet for planning and 65% use social media to share their travel stories. Similarly, tourism professionals are leveraging technology for marketing, expanding their reach, optimizing their operation. Research indicates that 80% of tourism business in the Pacific region use the internet and 60% utilize social media. The impact of digital literacy on tourism decision making. Being digitally literate makes planning and enjoying your trip easier and more fun. We can plan efficiently, explore destination, share our experience with the world, and so many more. Contribute to travel community and inspire other by sharing our experiences. Studies have shown that digitally literate travelers are more happier and more satisfied with their trips. They plan better, research more, have a richer travel experience. The integration of augmented reality, AR, and virtual reality, VR, in tourism experience. With technology at my fingerprints, planning and booking travel has never been easier. Websites like Yatra, ClearTrip, Make My Trip allow us to compare prices, read review, manage our entire itinerary in one place. When we are out on road and our smartphone becomes the best travel companion. Apps like Google Maps and TripAdvisor provide us with real-time navigation, information about nearby attraction, and recommendation from other travelers. As technology continues to evolve, so too will the way we travel. AR, VR technology offer the potential to personalize travel experiences and cater to individual interest, making travel not only easier but also more immersive and engaging. Imagine exploring the Colosseum in ancient Rome through VR. Like, we can sit at our home and we can explore so many places now, or experiencing a thrill whitewater rafting down the Amazon River without leaving our living room. The possibilities are endless. Social media for effective tourism, promotion, and collaboration. In today's digital age, social media has become an invaluable tool for promoting tourism. It allows us to reach millions of potential tourists around the world, share engaging content about destination, build relationship with other travelers and tourism profession. We can use promotion while the professional can use promotion, wide audience reach, targeted marketing, cost-effective marketing, content storytelling, real-time communication and feedback, engage image and reputation, joint packages and experiences, and community building and engagement. Like tourism boards can collaborate with influencers and travel bloggers to create engaging videos and blog posts showcasing the destination attraction. Travel agency can partner with airlines and hotels to offer joint travel packages and promote them on social media. So there are many possibilities.
I believe that social media is essential for successful tourism strategy. By using it effectively, we can reach new audience, build a relationship, promote tourism in a way that never possible before. To the conclusion, please. Yes, sir. Fastly explain the conclusion and then. Conclusionally, in the ever-evolving world of tourism, I believe digital literacy is no longer a nice to have, but a must have. For travelers, it unlocks a world of possibilities, empowering them to plan their dreams, trip, navigate unfamiliar destination. For tourist professional, it is key of reaching wider audience, promoting their offering. In short, embracing digital literacy is the way forward for thriving and sustainable tourism industry. Thank you. Okay, I request Dr. Jitendra and Dr. Ujjwal Maske to kindly take over. Dr. Bhadwaji, Dr. Ujjwal Maske and Dr. Our dignitary like Dr. Santosh Viskarma sir has left the due to some reason, and this is a paper related to your tourism. So I would like to invite Professor Bhadwaj. He was doing as a moderator, and now he was also. I would like to comment on this paper. Arusha, there is a suggestion to you just that you have put so many materials on the slides, so avoid that type of and the second thing, you have mixed everything. If you would have taken one aspect of digitalization, that would have been more specific study. And even if you are doing theoretical study, suppose that you are collecting data from where you collected data, you collected it from somewhere. What method you use for the data collection, Arusha, in your study? I have gone through with some research papers and so mostly internet. Yeah. Acha. So it's just a means review type paper or where you studied and journal and you made. It's a study, and I have added some statistical datas in my research paper, but I thought this presentation was going really the content was so big, so I thought that the statistics should be ended with the research paper, and the PPT must be only on the theory. Whatever. So you have collected, you have studied, thorough very nicely, but the thing is that the outline was not clear, and the second thing is ki everything was mixed up. It seemed in the paper. So next time when you study, try to elaborate, and when you present it, you should be very precise in keeping the bullet points in the PPT. And I think in the reference slide, you have just put the links and all. So in that you should use a format, either APA format or any other particular format. There are lots of types of format for writing references, so you can use that. Thank you so much, Arusha. All the best. You are studying in now which class? I'm pursuing my masters. Great. All the best for your research journey and your academic journey. Thank you so much, sir. Calling out the names, Jiten sir. I'm calling out the next name. Next name is I think from that list, Dr. Shuril Kumar Mishra is there. No. Okay, so Neha ma'am from BHU. Okay, perfect. I think she has shared Yes, the sir. presentation Hello. also. Please Hello. start. Yes, Neha जी सर please. आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है जी, आप बोलिए. Respected chairpersons of this session and all participants, here I am Neha from BHU Varanasi. My topic is science and philosophy of yoga. I review and yoga comes from the Sanskrit word yuj, which means to unite or join. Yoga means uniting and the individual consciousness, that is Jivatma, to the universal consciousness, Paramatma. Philosophy of yoga that says Patanjali defines yoga as the process of gaining control over the mind.
Yoga's Chittavritti Nirodha by controlling the mind. On one can reach the original state, tada drashtu swarupeva asthanam. The technique of mind control has tools to develop the power of concentration and focus that stop all the thoughts of the mind and allow one to perceive Paramatman. Bhagavad Gita states that yoga is the dexterity in action as a result of calmness and awareness of mind. Bhagavad Gita also one second. Just not that is the 8 limbs of yoga. That's the yam, niyam, asana, pranayam, pratyahar, dharana, dhyan, samadhi, and so many types of yoga. That is bhakti yoga, karma yoga, hatha yoga, mantra yoga, and raj yoga. Also, here the science of yoga. Physiological benefits improves general health, posture, muscle tone, sleep, immunity, and pain tolerance. Weight normalization, stable autonomic nervous system, increase cardiorespiratory efficacy, muscle skeletal flexibility, range of joint movement, physical endurance, strength, and energy level. Balance blood pressure, etc. Normalize endocrine function, etc. And psychological benefits improve moods, increase somatic awareness, kinetic awareness, subjective well-being, self-acceptance, and other self-actualization, social adjustment, decrease holicity, anxiety, depression, other things. The biochemical profile improves in indicating an anti-stress and antioxidant effect, which is important in the prevention of degenerative disorders. Biochemical changes after yoga practice: decrease glucose, sodium, cholesterol, triglyceride, WBC, etc. Increase ATP, hematocrit, hemoglobin, lymphocytes, thyroxine, and etc. Various disorders embellished to yoga therapy: respiratory, stress, metabolism, headache, asthma, tension, backache, spondylitis, thyroid disorder, obesity, ulcerative colitis, anxiety, depression, mental retardation, epilepsy, and migration also. In the conclusion, yoga aims to create an absolute balance of the interacting activities and process of the physical body, mind, and energy. When this balance is created, it awakes the control force, that's Sushumna Nadi, which is responsible for the evolution of human consciousness. Consider a science with sophisticated practice, it balances and strengthens every system in the body. Thank you. Okay, so come to your first slide. First slide पे ले जाइए आप. Okay, please. आप इतना अच्छा काम कर रही है नेहा जी और पीएचडी स्कॉलर हैं आप एंड यू आर जस्ट रीडिंग आउट एंड दिस इज नॉट द गुड वे. मतलब मैं जस्ट बता रहा हूँ कि जब आप फाइनल प्रेजेंटेशन देंगी अपना पीएचडी का वाइवा तब भी आप ऐसे करने वाली हैं. सो जस्ट एक सजेशन है कि जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए कॉन्फिडेंट रहिए. यू आर जस्ट रीडिंग आउट. एंड सर जितेंद्र सर, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड ऑन? नेहा जी, आप ने जो पेपर है आपका एक रिव्यू पेपर है और रिव्यू पेपर की विशेषता होती है कि जब भी हम रिव्यू पेपर करते हैं तो उसमें हम रिव्यूअर जो डिफरेंट पेपर को जब हम रिव्यू करते हैं तो उनके हम साइटेशन को मेंशन करते हैं कि अगर कोई चीज है, इफेक्ट है तो कितना है. रिसर्चर की मेन चीज होती है कि वो साइंटिफिक डेटा को प्रस्तुत करता है, एक लेमेन के रूप में नहीं करता कि योगा से फायदा होता है, योगा से मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, स्पिरिचुअल एंड मोरल, ये चीजें डेवलप तो होती हैं लेकिन ये तब तक
एक रिसर्चर के लिए सही नहीं होती जब तक उसको आप एक वैलिड पॉइंट के रूप में नहीं प्रस्तुत करते हैं। आपने साइंस ऑफ एंड फिलोसफी ऑफ योगा तो बताया, लेकिन आपने उन चीजों को, उन रेफरेंसेस को आपने एक्नॉलेज नहीं किया। आपने ये नहीं बताया कि ये इस फाइंडिंग का नतीजा है, यहाँ पर फाइंडिंग्स आई, उन फाइंडिंग्स को आपने इंडिकेट नहीं किया कहीं पर। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप इन फ्यूचर आप रिव्यू पेपर प्रस्तुत करिएगा तो रिव्यू पेपर में ये मेन चीज होती है कि आप जितने भी फाइंडिंग्स हैं उन फाइंडिंग्स को प्रॉपरली, कि योग के जो डिफरेंट आप जो लिम्स बता रहे थे, 8 लिम्स हैं, ये जो डिफरेंट टाइप्स के आपने योगा, भक्ति योगा, राज योगा बताया, इन डिफरेंट टाइप्स के योगा के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, या जो आपने डिफरेंट 8 अष्टांग योगा, इसका क्या बेनिफिट्स है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इसको क्लियरली मेंशन करिए और इस पे प्रॉपर साइटेशन के साथ में कि ये एविडेंस पाया गया है, ये 2023 की स्टडी है, 22 की स्टडी है, और इस स्टडी में ये एविडेंस है। तो इससे ज्यादा आपकी ये स्टडी जो है और ऑथेंटिक बनेगी और अच्छा बनेगा। और आप बाकी आपको जो है धन्यवाद कि आपने पेपर बढ़िया थैंक यू, बनाया है। कोशिश करिएगा कि इन फ्यूचर फॉर गिविंग द, आप स्क्रीन स्टॉप कर लीजिए शेयर। थैंक यू। नाउ द नेक्स्ट रिसर्च स्कॉलर इज फ्रॉम भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी जूनागढ़, हेतवी बेन धीरज लाल। सर राजेश कुमार मौर्य। अच्छा, आप तैयार हैं सर? जी सर। डन, शेयर करिए स्क्रीन। रुक जाइए हेतवी जी, आप रुक जाइए, इसके इनके बाद सर स्क्रीन दिख रही है? आ रही है अभी आ रही है, नेट का इशू है शायद। प्लीज बी कनेक्टेड इन जो अब आई? आ रही है। ठीक सर। तो गुड आफ्टरनून सर। सर ये मेरे पेपर की जो का टॉपिक है कंपैशन एंड मैथमेटिक्स। मैं बहुत 2 मिनट टाइम लूंगा बस मेन है, कंपैशन इज लाइक फायर दैट कंटिन्यूअली प्यूरिफाइज आवर मोटिवेशन इन प्रैक्टिस। बुद्धिज्म फिलोसफी में कंपैशन ही हमारे सारे वर्चूज की जननी है। मतलब जिसके पास कंपैशन हो, बाकी वर्चूज स्ट्रांग नहीं हो सकती, यानी विजडम कल्टीवेशन बहुत मुश्किल है। और बुद्धिज्म में ये भी है कि कंपैशन मेडिटेशन से आता है। और ये एक तरह का जो मेरा पेपर है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। और मैंने सर्च करा कि और इसके क्रिटिक भी हैं कि बहुत सारे जो ज्यादातर लोगों का मानना है कि कंपैशन के लंबा घूमना कारण तो चाबी लेके जाइएगा और जल्दी। जितेंद्र सर, आपका माइक ऑन है। तो सर कंपैशन से आपके मैथमेटिक्स लर्निंग एबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन का कैपेसिटी बढ़ती है, इमेजिनेशन और थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ती है। इस कारण से आप मैथमेटिक्स की लर्निंग इंप्रूव होती है। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये भी है कि ये आपका आउटसाइड कुछ लोग अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते आउटसाइड पर्सपेक्टिव बिल्डअप कर लेते हैं। इस वजह से भी वो बेहतर मैथमेटिक्स लर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको एम्पैथेटिक या कंपैशनेट होना जरूरी नहीं है। ये 2 पर्सपेक्टिव हैं और मैंने इस पर कोई कंक्लूसिव रिसर्च नहीं पाया। ये जितने भी मैंने इसमें साइट किए हैं पेपर, एक तरह से वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है और रिव्यू पेपर्स हैं सर। यही सर कंक्लूजन है। और बिना कंपैशन के बाकी वर्चूज भी और क्योंकि जैसे मेडिटेशन है, मेडिटेशन वेलबींग के लिए, हेल्दी रहने के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन प्रॉपर लर्निंग, हमारे जो लर्निंग इंस्टिंक्ट है उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिटेशन से कंपैशन डेवलप होता है और कंपैशन से हमारी बाकी वर्चूज। ये कंक्लूजन है सर। ये रेफरेंसेस हैं सर। और कोई क्वेश्चन हो तो सर पूछ सकते हैं आप। थैंक यू। आपका क्या नाम है? राजेश जी? जी सर, राजेश कुमार मौर्य। राजेश जी, हाँ, आपने जो है आपका टॉपिक क्या बताया था आपने? कंपैशन। कंपैशन मैथमेटिक्स। जी सर। हाँ, आपने इस दोनों में मैथमेटिक्स को यू हैव एसोसिएटेड विद द कंपैशन फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स। जी सर। और माय प्रोफेसर, आई एक कॉन्फ्रेंस में मैं उनसे मिला था, दे हैव टोल्ड मी दैट देयर इज 2 फैकल्टीज इन मैथमेटिक्स, वन इज subtraction, plus minus, divide, multiply. There is 4 faculty they have told 4 me, but fundamental operations. yes, but our mind work on multiply, plus and multiply. Like if you are thinking something and you have think one, you have one idea, then
your mind will present you one another ideas. And if you are multiplying, then thinking, then your mind will multiply multiple times to you. There's only two faculty work in your mind: multiply and plus. Yes. They have associated these two human mind, how human mind work. In this way, the compassion also work. If you are thinking, if you are have the feeling, if you are reading, if you are working, then it can be learned through mathematics, how mathematics work. It is a beautiful subject. Lots of my Sir, I friends, they have are found out, sir, here in this paper I included a lot of literature is there, but there is no conclusive research. Because there is a critic also. Critic says that it might be just outside perspective. So Yes, how yes. can we segregate that it is actually compassion or outside perspective? There is no conclusive Yeah, research. it is matter. It is matter of research, but you have presented your topic on the basis of the research. In future, it may be we got a conclusive answer. Thank you so much for combining such a topic with compassion and mathematics. Okay, sir. Thank you so much. May I go now? Ajay ji? Okay, thank you, sir. Now, Hetvi Ben, please you share your presentation. जी सर. नमस्ते एवरीवन. आवाज क्लियर आ रही है ना? बिल्कुल आ Yes, रही है yes, you are audible. I am Hetvi Sutaria, PhD scholar, students of Bhakt Kavi Narsi Mehta University, Junagadh. मेरा टॉपिक है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एटीट्यूड्स अमंग ग्रेजुएट लेवल माइक्रोबायोलॉजी आर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन स्ट्रीम गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ गुजरात विद्यापीठ टुवर्ड्स योगा. इसमें मैं बताना चाहूंगी कि अभी मेरा इसमें केस स्टडी है और जब भी मैं इसकी बात करूंगी तो इसमें मैंने कंपैरिजन किया है कि कौन सी स्ट्रीम वाली गर्ल्स है वो ज्यादा योग करने से या फिर उसके जो एटीट्यूड्स है वो किसके ज्यादा आ रहे हैं. तो मैं बात आगे करूंगी. तो पर्पस ऑफ स्टडी मेरे स्टडी का पर्पस है. दिस पर्पस ऑफ दिस स्टडी वाज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एटीट्यूड अमंग्स ग्रेजुएट लेवल माइक्रोबायोलॉजी आर्ट्स फिजिकल एजुकेशन स्ट्रीम गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ गुजरात विद्यापीठ टुवर्ड्स योग. सब्जेक्ट सिलेक्शन में 75 गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ था. इसमें 25 गर्ल्स है वो माइक्रोबायोलॉजी स्ट्रीम, 25 आर्ट स्ट्रीम एंड 25 फिजिकल एजुकेशन स्ट्रीम्स ऑफ गुजरात विद्यापीठ. और स्टूडेंट्स की जो एज ग्रुप है वो 17 to 20 इयर्स रखा गया था और इसमें रैंडम सिलेक्शन हुआ था स्टडी के लिए. देन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, इसमें क्वेश्चनर लिया गया था जिसमें डॉक्टर महेश मुच्छाल की क्वेश्चनर को यूज किया गया था. स्टैटिस्टिकल प्रोसेस. In this research study, one-way analysis of covariance F test was used to test the significance level of 0.05. Then the table show result of the study. इस टेबल में मीन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, सम स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम और सम स्क्वायर ऑफ मीन और एफ रेशियो दिखाया गया है, जिसमें मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम था वो 2 था और टोटल स्ट्रेंथ 75 थी. अभी मैं बात करूंगी तीनों स्ट्रीम्स के मीन की. तो अगर माइक्रोबायोलॉजी स्ट्रीम में मीन था 51.6, आर्ट स्ट्रीम में मीन था 48.88 एंड फिजिकल एजुकेशन स्ट्रीम में मीन था 49.2 और सम ऑफ स्क्वायर था 110.51 और टोटल स्क्वायर ऑफ मीन था सम ऑफ स्क्वायर था 1528.64 और एफ रेशियो आया था 2.16. अगर रिजल्ट की बात करें तो अभी इसमें ग्राफ भी शो किया गया है, वो तीनों मीन का ही शो किया गया जो मैंने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर दिया है. कंक्लूजन में जाते हैं तो हेंस इट इज क्लियर टू दैट नो डिफरेंस इन द एटीट्यूड टुवर्ड्स योग of the girls from the graduate level microbiology, arts and physical education streams of Gujarat Vidyapith. So there was no similarity. Result तीनों streams का सेम ही आया था. ऐसा नहीं हुआ कि microbiology streams girls आगे चली गई और arts पीछे रह गया. तीनों का इक्वली रिजल्ट दिखाया गया था. Okay, thank you sir.
हेलो, ये हेलो। आपका नाम क्या बताया था आपने? हितवी सुतरिया। हाँ जी, केतवी जी, आप ये बताइए कि आपने जो सिलेक्शन किया, ये सिलेक्शन कौन सा सिलेक्शन का मेथड था आपका? रैंडम। रैंडम सैंपलिंग में लिया आपने, यस, रैंडम सैंपलिंग लिया और आपने 25 सैंपल लिए माइक्रोबायोलॉजी से, आर्ट्स से और फिजिकल एजुकेशन के। आप ये बताइए कि मुझे, जैसे जो सिलेक्शन ऑफ सैंपल आपने किया 3 स्ट्रीम के बच्चों को लिया, तो माइक्रोबायोलॉजी क्यों आपने सिलेक्ट किया? आर्ट्स में कौन सा लिया आपने? आर्ट्स के, आर्ट्स मतलब स्पेशली फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं या आर्ट्स ग्रुप की बात कर रहे हैं आप? सर मैं आर्ट्स ग्रुप की बात कर रही हूँ। माइक्रोबायोलॉजी सर आर्ट्स इसीलिए लिया नहीं कि तो, गुजरात विद्यापीठ में जो जगह पे मैं थी वहां पे माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स ही अवेलेबल थे सर, इसीलिए। ओके, तो ये अवेलेबिलिटी के आधार पे आपकी रिसर्च है। बिकॉज जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आपने एक माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी ले लिया, तो माइक्रोबायोलॉजी या तो आप साइंस लेते, आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स लेते, तब तो एक डिफरेंट पता चलता। आप माइक्रो साइंस मतलब माइक्रोबायोलॉजी क्या है इस तरह से, तो डिफरेंट अलग अलग एंगल्स होंगे। जैसे अब या तो ये होता कि साइंस फील्ड में आप माइक्रोबायोलॉजी ले रहे हैं, फिजिक्स ले रहे हैं, केमिस्ट्री ले रहे हैं, उनके बीच में आपस में देखना चाहते हैं डिफरेंस। यहाँ तो बिल्कुल चीजें थोड़ी सी अलग हैं, समझ रहे हैं ना? कि जी जैसे सर। एक 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 चीज है, आप मतलब एक कोई ह्यूमन का, उसके ह्यूमन ही है डिफरेंट, लेकिन आप बच्चे के साथ कोई 10th का बच्चा है, उसको 12th के साथ इंटरेक्ट करा रहे हैं, तो उस तरह की चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्लियरली ये डिफाइन नहीं कर रहा है, ठीक है? क्योंकि तब पता चलता है ना जब डिफरेंट स्ट्रीम ही हो, बिल्कुल जैसे आर्ट्स था तो साइंस उसी ग्रुप में ही होना चाहिए कि वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। माइक्रोबायोलॉजी की जगह अगर साइंस होता तो ज्यादा ये अच्छा होता, और फिजिकल एजुकेशन तो ऑलरेडी आपका आर्ट्स में ही आता है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस का विषय होता है। ओके सर। हाँ, ये ह्यूमैनिटीज एंड सोशल 3 कैटेगरी होती है ना, आर्ट होगा, कॉमर्स होगा, या जो आपका साइंस होगा। और अगर आप इसको पीजी लेवल पे चले जाएंगे या आप डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट होता है, और जो है साइंस डिपार्टमेंट, साइंस फैकल्टी जो होती है। और डिपार्टमेंट तो खैर अलग अलग बनाए जाते हैं, लेकिन क्या है, जो एक जनरल है वो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस में ही आपके ये योगा है, आपका साइकोलॉजी है, एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है, इस तरह के सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूड होते हैं। तो इन फ्यूचर आपकी चूंकि स्टडी साइंटिफिक है, करना है, तो इस तरह की चीजों में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और सैम्पलिंग को लेकर के भी आप जो है चीजें, जैसे आपका जो है मुझे लग रहा है स्टैटिस्टिक में कुछ देखना पड़ेगा। आपका जो स्क्वायर है वो पहले का एक का बहुत ज्यादा दिखा रहा है, 1100 कुछ समथिंग नियर अबाउट है स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर है टोटल का। तो वो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है। और मीन में भी 20 मीन, चूंकि अगर आप डिफरेंस नहीं है दोनों में, हर किसी में, तो थोड़ा सा मीन को देखना पड़ेगा कि जो आपकी वैल्यू है वो किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, जबकि नंबर आप आपके जो सैंपल साइज है वो इक्वल है सभी में। ओके। उसमें डिफरेंस जो है आपने एफ लगाया है, लेकिन आप चाहते तो इसमें और भी थोड़ा सा डिवीजन करके चीज़ों को देख सकते थे और भी आगे बढ़ा सकते थे। जैसे गर्ल्स में भी हैं तो गर्ल्स का एज ग्रुप, आपने एज ग्रुप को लेकर के है, या गर्ल्स का जो है रूरल अर्बन को लेकर के है, या और भी बैकग्राउंड को लेकर के है, क्योंकि एटीट्यूड की बात की गई है ना, जैसे रूरल लोग क्या सोचते हैं योग के बारे में, अर्बन क्या है, ठीक है? तो जी इस तरह सर। से भी आप देख सकते थे। ओके सर, थैंक यू सर। भारद्वाज सर। ओके, देन अजय जी, आप आर यू देयर? मेरा हो गया है, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बार बार, मैं एक बार ओके देन, रीजॉइन करता हूँ सर, ठीक है? फिर नाम तब तक। आप ज्वाइन है, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? हेलो हाँ, हेलो। यू आर ऑडिबल, यू आर ऑडिबल भारद्वाज जी। ओके ओके ओके। तो हेतवी बेन जी के बाद वी कैन कॉल आउट करण सती जी फ्रॉम देव संस्कृति विश्वविद्यालय। करण सती जी हैं? करण करण सती सतीश जी जी नहीं है। सर लकुलिश योग। सर जी जी, उसके बोलिए बाद मैं हूँ खुशबू। बोलिए, खुशबू जी हाँ, तो प्रेजेंट आप करिए कर आप। दीजिए, आप पीपीटी शेयर करिए, प्रेजेंट करिए। बी जी रेडी विथ, सर। आप सभी के पास पीडीएफ है, आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप खुद रेडी रहिए सभी लोग। जी सर। खुशबू जी के बाद मधु प्रधान जी, सरला बिरला यूनिवर्सिटी रांची। फिर मोनिका देवी जी। अब मोनिका देवी जी का तो हो गया ना?
नहीं, मोनिका देवी जी का नहीं हुआ है। ठीक है, स्टार्ट। जी सर, मैं जस्ट मिनट सर, मैं पेपर शेयर कर रही हूँ। सर दिख रहा है पेपर? हेलो। Yeah, it in process. हाँ सर, मेरा नाम खुशबू भाटजा है। मैं लकुलिश योग यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से बात कर रही हूँ। मेरा जो टाइटल का नाम है, इफेक्ट ऑफ योगा ट्रेनिंग ऑन फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग वुमेन। ये जो मेरा टॉपिक है उसमें मैंने योग की बात की हुई है। बेसिकली जो मेरा थीसिस का टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग मैंने सिर्फ एक ही यहाँ पे चीज को मेंशन किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि योग अभी के लिए बहुत ही वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गया है, जिसके फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल बहुत सारे बेनिफिट्स है। उसके बाद सर देखा जाए तो उसके जितने भी बेनिफिट्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की है। मेरा जो स्टडी का पर्पस है वो ये था कि जो ये मैं योग ट्रेनिंग दे रही हूँ इससे फ्लेक्सिबिलिटी में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो मेरा एज ग्रुप है वो 25 to 55 है, क्योंकि वर्किंग वुमेन लिया हुआ है इसमें। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो लोग थे उनके अकॉर्डिंग मेरा था। जो सैंपल सिलेक्शन मैंने किया है वो रैंडमली किया है, क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी लोग थे तो उसका कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप में नहीं प्रिफर्ड कर सकती थी। तो जितने भी डिपार्टमेंट से जो भी मिले जिनका वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं था उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और उनका फ्लेक्सिबिलिटी नापने के लिए यहाँ पे मैंने अपने टोटल सैंपल्स मेरे 60 थे, जिसमें 25 ए ग्रुप ट्रेनिंग ग्रुप था और बी ग्रुप जो है वो कंट्रोल ग्रुप था। फ्लेक्सिबिलिटी नापने के लिए मैंने यहाँ पे सिट एंड रिच का टेस्ट लिया हुआ था, जिनको मैंने मेजरमेंट सेंटीमीटर में से किया है। तो मैंने इसके लिए पहले प्री टेस्ट लिया था, फिर पोस्ट टेस्ट लिया था, और यहाँ पे उसका रिजल्ट दिख रहा है सर। हेलो हेलो। Your screen has been stuck. रुक गई है वहीं पर। सर वो आगे नहीं बढ़ रहा है, मैं ट्राई कर रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ट्राई करिए। नेक्स्ट। बस सर ये स्क्रीन ना शेयर नहीं हो रहा है, आगे नहीं जा रहा है। ओके, कोई नहीं, आप बताइए, सर आगे मैं बताइए। ऐसे ही बोल देती हूँ। पता नहीं कैसे ये स्क्रीन आगे नहीं जा रहा है, स्टॉप शेयरिंग दिखा रहा है लेकिन सर मूव नहीं हो रहा है। ओके। सर तो इसमें मेरा जो प्री टेस्ट का मीन था वो जो एफ रेशियो मैंने लगाया था यहाँ पे, तो उसमें प्री टेस्ट का मीन आया था, टोटल एफ रेशियो जो था 0.793 आया था। पोस्ट टेस्ट का जो मीन था वो 3.307 आया था। इसके अकॉर्डिंग सर क्लियरली मेंशन की जो योगा ट्रेनिंग मैंने दिया था उसमें कंट्रोल ग्रुप जो था उसमें इतना ज्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिला था फ्लेक्सिबिलिटी में, लेकिन जो ट्रेनिंग ग्रुप था ग्रुप ए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला था, जो कि सिग्निफिकेंट है 0.05 लेवल पे। थैंक यू सर। ये आपने फ्लेक्सिबिलिटी कैसे चेक किया था? इसके लिए टूल को इस्तेमाल किया था कि सर ऐसे वो ही? सर वो टूल इस्तेमाल किया था, सीट एंड रिच का जो आता है ना वो, क्योंकि सर मेरा जो था वो पश्चिमोत्तानासन मेरे योग ट्रेनिंग में मैंने डाला था, तो उसके लिए मैंने टूल तो एक ट्रेनिंग आता है सीट एंड रिच हाँ का, हाँ। मतलब हम बैठ के कितना रिच कर सकते हैं ओके उसके अकॉर्डिंग मैंने ये लिया था, क्योंकि जो योग का ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसमें मैंने पश्चिमोत्तानासन डाला हुआ था इसके लिए। ओके, ये आप जी बताइए कि जैसे ये फ्लेक्सिबिलिटी आप चेक करें तो आपने एज ग्रुप तो जो आपने अलग अलग एज ग्रुप को ले लिया है, कोई फिक्स नहीं था। सर वो तो वर्किंग थे, तो जो कि उसका वर्किंग वुमेन जो रहती है वो ज्यादातर गवर्नमेंट में 20 से लेके 58 तक का रहता है, तो मैंने 25 से 55 लिया था। पेपर में मैंने अभी जो प्रेजेंट किया है उसमें वही लिया हुआ है, लेकिन जो मेरा पूरा थीसिस है उसमें मैंने वो भी डिफाइन करके दिखाया है कि भाई 25 से 35 तक का इतना ये इम्प्रूवमेंट दिखने को मिलता है, 45 से 55 तक का ऐसा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। लेकिन ये हाँ जो हाँ पेपर तब है तो इसमें लिमिटेड कर दिया था, क्योंकि पेपर था तो सैंपल नहीं तो साइज मैंने थोड़े लिमिटेड, कम कर दिए। नहीं तो सॉरी। सैंपल साइज आपने कर दिए, तो इसमें भी कभी भी सैंपल साइज कुछ भी कम कर दिए, लेकिन ये कोशिश करिए
कि डेटा जो है वो आपका एक्यूरेट हो। अदरवाइज क्या है कि अगर आप 25 से लेकर के 50 तक का रेशियो डाल देंगे तो हर एज ग्रुप की अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी लेवल होता है, ठीक है। तो जी सर। इस स्थिति में एक पैरामीटर पे नहीं फिक्स कर। जी सर। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जैसे आपने बताया वो मैं अपने थीसिस में इंक्लूड कर सकूँ और आगे की रिसर्च में भी। ठीक ठीक आपका स्क्रीन अब बाकी शो नहीं हुआ, नहीं अदरवाइज कुछ और सजेशन आपको तो सर मैं दिए भी जा ट्राई सकते थे। लेकिन ये हो नहीं रहा कोई है सर। नहीं, कोई बात नहीं। जी, नेक्स्ट धन्यवाद इसके सर। बाद में हेलो सर, नमस्ते। काइंडली शेयर योर स्क्रीन। ओके सर। शेयर हो रहा है सर। Kindly read the abstract, main thing, the title, objective, hypothesis, research methodology, and conclusion. Only the few on keywords, main related parameters. Not go on the details like introduction, review of literature. Okay sir, thank you for giving opportunity. I am from Mangalore University. Myself Mahesh Pandappa Lamani और मेरा गाइड का नाम है डॉक्टर के कृष्ण शर्मा फ्रॉम मंगलोर यूनिवर्सिटी। मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़े और योगा फॉर हाइपरटेंशन के बारे में था। 30 से 35 पेपर पढ़ चुका हूँ और उसमें से मैं KSRP बटालियन को 7th बटालियन और 10th बटालियन टारगेट करके कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, 11 मेंबर। देन हाइपरटेंशन आजकल तो बहुत साइलेंट किलर हो चुका है। सभी जगह कभी भी देखो, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बताते हैं कि इट इज टेंशन ऑफ द होल बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स रिजल्टिंग इन imbalance of the nervous system. 90% cases are primary hypertension and 10 are secondary hypertension. हाइपरटेंशन में प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन करके 2 टाइप के विभाजित किया गया है। उसमें से 90% प्राइमरी हाइपरटेंशन वाले हैं, 10% सेकेंडरी हाइपरटेंशन वाले हैं। और there are many diseases caused by the stress as stomach ulcer, high blood pressure, heart attack, asthma, sleeplessness, headache, fatigue, then diabetes, family complications and tension, children tension, etc. Then just high blood pressure से हमारी बॉडी को कैसे हानि पहुंचा सकते हैं, यहाँ इस ग्राफ में देख सकते हैं। मेमोरी लॉस होती है, ब्लीडिंग विद इन द ब्रेन और लॉस ऑफ साइटिस, विजुअल कम हो जाती है एंड ब्लड फ्लो होने का बंद हो जाता है, बिकम हार्ट अटैक। और ब्लॉक्ड आर्टरीज enlarged yes damage to the arteries. Highly arteries are flexible, strong and elastic. Their inner length is stomach, so the blood flow freely, supplying vital organ and tissues with nutrients and oxygen. ऐसे ही coronary artery disease, enlarged left heart, हार्ट फेल्यूर, ये सब हो सकता है क्योंकि हाइपरटेंशन और फूड सिस्टम प्रभाव पड़ते हैं और दिनचर्या, ऋतुचर्या और
हम आजकल खा रहे हुए फास्ट फूड, ये बहुत असर पड़ता है, और ड्रग्स, टोबैको, अल्कोहल ड्रिंकिंग, ये सब हाइपरटेंशन पे दुष्परिणाम पड़ सकता है। और मेटल्स मेटल्स एंड मेटल्स, मैंने 29 से 59 ईयर्स के 11 कंट्रोल ग्रुप, 11 मेंबर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप सब्जेक्ट लिया है। वो KSRP 10th बटालियन से ली गई है। ऑल सब्जेक्ट्स आर मैरिड। देन मैंने 45 डेज का ड्यूरेशन था योगा थेरेपी दिया है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को योगा थेरेपी, कंट्रोल ग्रुप को कुछ नहीं दिया है, कुछ मेडिकेशन लेते थे। और वीकली 7 दिन में 7वें दिन क्लास लेते थे, 6 AM से मॉर्निंग 7:30 AM तक। देन वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट टू टेक अप योगा एज मीन्स फॉर ओवरकमिंग हाइपरटेंशन, इंक्लूडिंग क्राइटेरिया अभी बता चुका हूँ। 29 से 59 ईयर्स के सब्जेक्ट थे, और सब्जेक्ट हैव विथ हाइपरटेंशन वाले थे। एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया, सर्जरी 6 मंथ में सर्जरी होने वाले को यहाँ योगा नहीं करना चाहिए। हु हैव sick and severe health problem तो भी प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। वर्क मेथोडोलॉजी अभी मैं बता चुका हूँ। इसमें आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योग निद्रा लिया गया है। यस। देन पैरामीटर, लिपिड प्रोफाइल्स में HDL, LDL, VLDL, कोलेस्ट्रॉल। देन यहाँ फ्री एंड पोस्ट, प्रैक्टिस करवाने से ही पहले फ्री डाटा कलेक्ट किया गया है। प्रैक्टिस, आफ्टर द प्रैक्टिस पोस्ट डाटा also collected. Then systolic BP, diastolic BP, BMI, योगिक इंटरवेंशन। हमने योगा थेरेपी में आसन, ये सब आसन लिए गए हैं। प्राणायाम, मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन। 1 hour 15 minutes for week, every day morning 6 to 7:30। आसना में स्वस्तिकासन, वज्रासन, सुप्त वज्रासन, ताड़ासन, त्रिकोणासन, ये सब आसन है। और प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, चंद्र, भस्त्रिका, भ्रामरी। देन मेडिटेशन में प्रणव, रिलैक्सेशन में योग निद्रा। देन कंपैरिजन टू कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या डिफरेंस आया है आफ्टर दी। यस, टोटल कोलेस्ट्रॉल वेरिएशन स्केल्स इन बोथ ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में पहले टोटल कोलेस्ट्रॉल बहुत कम था, बाद में पोस्ट में बहुत ज्यादा हुआ। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में पहले ज्यादा था टोटल कोलेस्ट्रॉल, बाद में आफ्टर थेरेपी टोटल कोलेस्ट्रॉल कम हो गया। वैसा ही ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लाइक दैट। कंट्रोल ग्रुप में ज्यादा हुआ है ट्राइग्लिसराइड, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आफ्टर द थेरेपी इज reduced. Then third, HDL कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल ग्रुप में पहला कम था, बाद में ज्यादा Mahesh हुआ। ji, kindly sum up within 1 minute because Okay. there are lots of. Like that, LDL, VLDL, BMI और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। Then systolic tissue, diastolic tissue. I think there is a network issue. Mahesh ji, your voice is not coming.
Results showed significant improvement among experimental groups when compared to control group. Total cholesterol P value like that. HDL cholesterol P equal to 0.043376. LDL cholesterol then BMI highly significant with P value. Systolic BP also significant with P value. Diastolic BP also significant. Triglycerides as P value like that significant. Totally, this study depicts yogic practices are helpful in managing hypertension. Observation क्या है? The subject was undertaken with the view the yogic practices strengthen the muscle, relax the body system. महेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समय लग रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट सभी पार्टिसिपेंट है, दे आर इन क्यू। आसना, प्राणायाम, योग निद्रा ये सब अभी बोला। Mahesh ji, please within 1 minute please conclude it because there are lots of participants who are in waiting list. As per the result of present studies, it can be concluded that yoga practices can improve the sleep level and reduce the stress response control of attention. So one yoga practices can be useful as curative, promotive, and preventive aspects irrespective of age, sex, religion, reason of प्रोफेशनल। यही प्रैक्टिस करने से यही दिए गए हैं आसना, प्राणायाम और मेडिटेशन और टेक्निक्स, ये कराने से वो हाइपरटेंशन कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू महेश जी। द नेक्स्ट प्रेजेंटर इज बहुत शायद क्या है मोनिका देवी, नीति सिंह, आर यू नीति सिंह देयर? And from Vishwa Bharati, Parichiti Saha. Yes, sir, I am present. हाँ, Parichiti Saha, please present your paper. Okay. Thank you, sir. Sir, is it visible? Yeah, it is visible. Good afternoon, everyone. I am Parichiti Saha, Assistant Professor from Department of Yogic Art and Science, Vishwa Bharati University. So I am going to present on the topic effect of selective yogic practices on working memory in school students. So the authors of this study is, first author is me, second is Sujata Ghosh, she is a student of BSc Honors Yoga, and thirdly Abhimanyu Arya, who is the guest teacher in the Department of Yogic Art and Science. So background, first I will be covering the background of the study. So basically working memory, it is an important aspect of cognitive system, which is a part of the short-term memory, and it is mainly regulated by the dorsolateral prefrontal cortex of the brain, which is responsible for controlling the temporary maintenance and information processing. And it is governed by two mechanisms, that is the central executive control and the information processing. And it has several components such as central executive control, which is responsible for the problem solving skills, mathematical skills, conceptual development, and reading and comprehension. Second component of working memory is the visuospatial sketchpad, which deals with the learning of numbers and graphical representation. Third is the phonological loop that converts the auditory information into words, language, and phonemes. And the episodic buffer, which helps in integrating the visuospatial and phonological loop and also helps in storing semantic information. So working memory,
it often gets disrupted due to high levels of stress. Studies has been found that working memory has got disrupted due to high levels of stress. And in a study titled dopamine-induced effects of stress on working memory, it has been found that there has been high level of dopamine in the prefrontal cortex during stress period, which has resulted in the suppression of the task-related activities, which also involves working memory. But in certain studies, it has been found that alternative therapies such as yoga has been proved beneficial in reducing the stress levels, and also it has improved the cognitive functions, including the working memory. So the purpose of this study is to investigate the effect of selective yogic practices on working memory in school students based on working memory questionnaire using single group pre-post design. So these are the hypotheses of the study. Alternate hypothesis is selective yogic practices may improve working memory of the school students. And the null hypothesis is selective yogic practices may not improve working memory of the school students. This is the methodology. So a study was conducted on the Shiksha Shastra School of Vishwa Bharati. It comprised of 28 participants, and the sampling technique used was convenience sampling. And the participants' age ranged from 15 to 18 years, which included both male and female genders. And the intervention comprised of chanting, Sukshma Vyayam, Asan, Pranayam, meditation, and yogic games. I will be showing the complete module in the next slide. And the duration of the intervention was for 10 days. And daily, this intervention was made to practice for 30 minutes. And the assessment tool was working memory questionnaire. So this working memory questionnaire is a self-administered questionnaire which measures 30 questions, which consist of 30 questions. And this questionnaire, the pre-data was taken on the first day and the post-data was collected on the 10th day. And these are the inclusion criteria that the participants should be physically and mentally healthy, and they must have signed the informed consent, according to which their anonymity and confidentiality should be maintained, and they have the freedom to withdraw from the study at any time. And the exclusion criteria set for the study was the participants having any psychological issues or psychological disorders. And the data was analyzed using the JASP software, that is Jeffrey's Amazing Statistics Program. And the p-value was set at 0.005. So this is the yogic module for the selective yogic practices. So the session started with chanting, that is Gayatri Mantra, followed by Smaran Shakti Vikasaka, Buddhi Tatha Dhriti Shakti Vikasaka. And it consisted asanas such as Garurasan, Shashankasan, Ekapadasan, Vrikshasan, Tarasan, followed by Pranayama, that is Nadi Shodhan, Brahmari, and Bhastrika. And they were also introduced to some yogic games, that is Postman and Memory games. And again, the session ended with meditation and chanting, that is Gayatri Mantra. And this is the result of our study. First, we had performed the descriptive statistics on our data, where the mean of the pre-working memory was 32.5 with a standard deviation of 12.017. And the post-working memory score mean was 42.857, followed by the standard deviation of 11.227. And to check the normality of the data, Shapiro-Wilk test was performed, where the p-value of the Shapiro-Wilk test of post-working memory was found to be 0.491, which is greater than 0.005, which proves that the data is normally distributed. Hence, on the basis of the descriptive statistics, paired sample t-test was performed on the data.
And on paired sample t-test, it is found that the p-value is less than 0.001, which proves that our alternate hypothesis is true. That means there has been improvement in the working memory score after 10 days of selective yogic practices. So the discussion part, our results confirm with the previous studies where a study was performed on the mindful meditation, which has shown working memory improvement in school students. Another study was performed where two interventions was performed, that is yoga, and second was transcranial direct current stimulation, which was performed on two variables, that is working memory and mindfulness, which showed that there has been stimulation of dorsolateral prefrontal cortex after giving this intervention, which I had talked in the introduction part, that dorsolateral prefrontal cortex regulates the working memory in the individuals. And it is also responsible for other executive functions such as planning, task switching, and task set reconfiguration. So there has been also certain limitations of the study, that the study could not be randomized due to unavailability of sample, and the sample size was also less. So hence we had to perform a single group pre-post design with a small sample size. So it can be concluded from the present study that there has been improvement in the working memory after doing 10 days of the selective yoga practices module, and it can be a yoga module which can be included in the school curriculum to improve the working memory among the school students. And these are the references of my study. So thank you. Okay, परिचिति साहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने टॉपिक का सिलेक्शन किया। लेकिन इसमें कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। नंबर Okay, एक sir. बात तो कि जो इंटरवेंशन का टाइम है वो मात्र 10 डेज है। हाँ तो जी सर। 10 डेज का जो टाइम होता है, इस टाइम में एज ए कॉग्निटिव फैकल्टी के रूप में आप वर्किंग मेमोरी में चेक कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये समय थोड़ा कम है, ज्यादा ही कम है। हाँ सर, ये समय कम है। एक्चुअली हमारे पास ज़्यादा समय था नहीं, बिकॉज इट वाज अ डिसर्टेशन स्टडी। हाँ, सो डिजर्टेशन में तो चल जाएगा, अदरवाइज क्या है कि थोड़ा कम समय। दूसरी चीज की आपका सैंपल साइज बिलो 30, हाँ। तो जब बिलो 30 सैंपल साइज होता है तो इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में खासकर जैसे टी टेस्ट है, हम्म। इसका इसका उपयोग तब करते हैं जब या मोर देन 30। और इसके लिए कि अलग अलग मेथड्स होते हैं, कुछ की अगर सैंपल साइज कम होगा तो हम कौन सी स्ट्रैटी लगाते हैं, लेकिन कौन सा लगाएंगे, कौन सा method लगाएंगे। तो इसमें कुछ चीजें जो है आप ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट टाइम से। ओके और ओके। मतलब जो आपका जो डिजर्टेशन जिसने किया होगा, मैं रिकमेंड, मैं सजेस्ट हूँ कि कुछ चीजें, क्योंकि जब हम कोई ऐसी रिसर्च करते हैं, कोई ऐसा साइंटिफिक डेटा प्रस्तुत करते हैं, तो खासकर उन चीजों में छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, लेकिन वो जो हमारा जो डेटा है उस डेटा पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देती है कि डेटा ये ऑथेंटिक है। तो ओके सर। बाकी आपका टॉपिक बढ़िया है, और फर्दर रिकमेंडेशन ये हो सकता है कि इसका इंटरवेंशन टाइम बढ़ा दें, और जो है sample size बढ़ा दें, अच्छा होगा। और दूसरा क्या, स्कूल स्टूडेंट्स दिखाए तो आप लिमिटेशन में किस एज ग्रुप के स्कूल स्टूडेंट को इंक्लूड किया गया, क्योंकि डेवलपमेंट होता है ना। हेलो। हाँ, हेलो, हेलो। यस सर। आवाज आ रही। हाँ, तो यस कॉग्निटिव सर। डेवलपमेंट का, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एज डिफाइन, एज का होता है ना, कि किस हाँ। एज में कौन सा कॉग्निटिव फैकल्टी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या डेवलप हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो है ये डिफाइन हो एज ग्रुप की, इस एज के ग्रुप को लिया गया ताकि उससे हम। ओके सर। थैंक यू। इसके थैंक बाद यू में सर। आपके नेक्स्ट है, नेक्स्ट में कौन आ रहा है प्लीज, एक सेकेंड। डे 1 में आपके हैं प्रियंका कुमारी जी। प्रियंका कुमारी, आर देयर? प्रियंका कुमारी जी।
प्रियंका जी, आप यहाँ पर हैं? Yes, sir, I'm here. हाँ, प्लीज प्रेजेंट योर टॉपिक एंड Yes, sir. काइंडली present your topic Can in a you, brief abstract is it आप my present करिए। paper visible? Hmm? जी, abstract जो है Yes. आप abstract में सब कुछ लिखा होता है, मेन कंक्लूजन, मेथोडोलॉजी, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, एवरीथिंग। नहीं, मैंने पॉइंट वाइज ही लिखा है, डोंट वरी सर। मैं जल्दी कंक्लूड करूंगी। हेलो एवरीवन, this is Priyanka Kumari, Senior Research Fellow, Department of Kai Chikitsa, Faculty of Ayurveda, Institute of Medical Sciences. Today I am going to present my paper. It is on effect of a clinical, what is it? One sec. Yes, a clinical study on the effect of Preksha meditation on depression. This study was done under supervision of Professor J.S. Tripathi sir. He's a renowned psychiatrist, neuropsychiatrist, professor and former head of Department of Kai Chikitsa, Faculty of Ayurveda, Institute of Medical Sciences. Today, I would be discuss on the points that are introduction, objective, method, result and conclusion. मेरा काम डिप्रेशन पे है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिपोर्ट्स बताते हैं, स्टडीज बताते हैं कि डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर इन वर्ल्ड वाइड, और ये इफेक्ट करता है किसी लोगों के मूड और एक्शंस को। WHO के अनुसार डिप्रेशन एक लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी है, जो कि जिसका मेजर कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज में। अगर हम कंपैरिजन करते हैं रूरल पॉपुलेशन से अर्बन पॉपुलेशन को, तो रूरल पॉपुलेशन की कंपैरिजन में अर्बन पॉपुलेशन में ये डिजीज ज्यादा देखी जाती है। यह एक जनरल मूड अप्स डाउन नहीं है, बल्कि ये एक सीरियस हेल्थ कंडीशन है, जो कि सुसाइड को लीड करती है। सुसाइड को होने के लिए यह एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर हम स्टडीज की बात करें, तो पूरे साल भर में 8 लाख से ज्यादा लोग सुसाइड से मरते हैं हर साल। इसकी ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं, तो इसमें साइकोथेरेपी और एंटी डिप्रेशन ड्रग्स को लिया जा सकता है, या फिर इसका कॉम्बिनेशन को भी यूज किया जा सकता है। मगर प्रॉब्लम ये होती है कि साइकोसोमेटिक थेरेपी और एंटी डिप्रेशन जो ड्रग्स है, उसके लिए जो पेशेंट को जो है साइड इफेक्ट उसके, या फिर लैक ऑफ रिसोर्सेज। काम है। अरे कितने लोगों को तुम वहाँ ये कुछ नहीं है, वो तो कोई भी काम नहीं। आई एम ऑडिबल सर? ये इसमें इसके लिए सेटअप चाहिए, इसके लिए मोबाइल से निकाल, इट नीड ए कंप्लीट सेटअप। अगर आ जाएगी तो Yes, ma'am, you are audible. Yes, you are audible. ओके ओके ओके। तो ज्यादातर क्या होती है कि साइड इफेक्ट्स का लैक ऑफ रिसोर्सेज से, या फिर आप सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो पेशेंट के अच्छे नहीं है, उनकी वजह से वो ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं। तो हमारे पास इसका क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है? तो योग एक ऑल्टरनेटिव और कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल हम डिप्रेशन के रोगियों के लिए कर सकते हैं, और ये एक प्रूवन टेक्निक है जो कि माइंड और बॉडी पर काम करता है। हम बात करते हैं प्रेक्षा मेडिटेशन की। इट वाज डेवलप्ड बाय आचार्य महाप्रज्ञा इन 1978, और इसमें ये जो है एक बहुत ही पॉपुलर ध्यान की तकनीक है जैन परंपरा के अनुसार, और इसमें 8 कंपोनेंट्स होते हैं: कायोत्सर्ग, अंतरयात्रा, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेश्या ध्यान, अनुप्रेक्षा और भावना। मैंने अपने स्टडी में जो कंपोनेंट्स लिया है, एक कायोत्सर्ग 5 मिनट के लिए मैंने दिया था इंटरवेंशन में, अंतरयात्रा
5 मिनट के लिए, श्वास प्रेक्षा और दीर्घ श्वास प्रेक्षा 10 मिनट के लिए, ज्योति केंद्र प्रेक्षा 4 मिनट के लिए, और अभ्यास की समाप्ति के लिए 1 मिनट मैंने दिया था। मेरे स्टडी का एम एंड ऑब्जेक्टिव्स था टू इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ प्रेक्षा मेडिटेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन। और ये जो मैंने सैंपल साइज कैलकुलेशन के लिए प्रीवियस स्टडी का को पहले मैंने सेलेक्ट किया, और उस पर उसको देखते हुए इसको स्टैटिस्टिशियन के पास जा करके मैंने इसके सैंपल साइज को कैलकुलेट करवाया था। नल हाइपोथेसिस था, प्रेक्षा मेडिटेशन डज नॉट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, और डिपेंडेंट वेरिएबल वाज डिप्रेशन एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाज प्रेक्षा मेडिटेशन थेरेपी। सिलेक्शन ऑफ पेशेंट था, ये सारे पेशेंट रिक्रूट किया गया था न्यूरो साइकाट्रिक एंड साइकोसोमेटिक मेडिसिन सेक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल, IMS BHU. Inclusion criteria was age range was between 20 to 60 years, belonging to each either sex, and patient giving the informed consent to participate in the study. Exclusion criteria था, जो पेशेंट पहले से मॉडर्न मेडिसिन ड्रग ले रहे थे एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए, इसको इस स्टडी में नहीं रखा गया, और पेशेंट वर प्रायर हिस्ट्री ऑफ मेडिकल डिजीज कॉजिंग साइकोलॉजिकल प्रेजेंटेशन। सैंपल जो स्टडी ग्रुप और सैंपल साइज थे, सैंपल साइज 50 रखा गया था, और इसके ये 2 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया था, रैंडमली डिवाइड किया गया था बेस्ड ऑन कंप्यूटर जनरेटेड रैंडमाइजेशन। और ग्रुप 1 को कंसीडर किया गया प्रेक्षा ध्यान प्रेक्षा मेडिटेशन थेरेपी के लिए, साथ ही साथ इसमें मेडिकेशन भी दिया गया, और ग्रुप 2 को कंट्रोल ग्रुप के रूप में कंसीडर किया गया, साथ में इसको मेडिकेशन दिया गया था सारस्वचूर्ण। और इंटरवेंशन शेड्यूल था प्रेक्षा मेडिटेशन का, इट इज कंसिस्टेड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ 30 मिनट्स डेली फॉर 14 डेज, दिनों के लिए दिया गया। असेसमेंट पैरामीटर वाज DAS42 स्केल, DAS42 स्केल डेवलप्ड बाय लोबी-1 एंड लोबी-1 1995, जिसको हिंदी में वैलिडेट किया गया भूपेंद्र सिंह और अमूल आर सिंह के द्वारा। विद रिलायबिलिटी ऑफ द स्केल इज 0.83, और यह जो DAS स्केल है, ये 42 आइटम्स क्वेश्चनर्स है इसमें, जिसमें हम नेगेटिव इमोशन ऑफ कंडीशन ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस को देखते हैं। बात करते हैं रिजल्ट की, तो हम लोग देख सकते हैं, सीधे हम रिजल्ट पे आते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं इनिशियल मीन डिप्रेशन स्कोर जो था ग्रुप 1 में वह था 21.6, जो कि रिड्यूस होके 16.4 पे आ गया। और फिर ग्रुप 2 में था इनिशियल मीन डिप्रेशन स्कोर 15.7, जो कि रिड्यूस होके 14.8 में आ गया। हम रिजल्ट की बात करते हैं, तो रिजल्ट शो सिग्निफिकेंट चेंज इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 एज प्रेक्षा मेडिटेशन positively decrease the depression level of subject in comparison to group 2. बात करते हैं डिस्कशन की, तो हम लोग हमने देख लिया कि ग्रुप 1 बेटर परफॉर्म कर रहा है ग्रुप 2 से, और ये सिग्निफिकेंटली डिप्रेशन के सारे सिम्टम्स को रिड्यूस कर रहा है। कंक्लूजन की बात करते हैं, तो प्रेक्षा मेडिटेशन को हम एक इफेक्टिव नॉन फार्माकोलॉजिकल प्रैक्टिस के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, जो कि डिप्रेशन को रिड्यूस करता है बहुत ही कम समय में, विद इन 2 वीक्स ऑफ 2 हफ्ते के प्रैक्टिस में ये डिप्रेशन के लेवल को कम करता है। इसको अगर हम लंबे समय तक प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें, तो यह एक बेहतर और गहरा प्रभाव डिप्रेशन पे डाल सकता है। यह स्टडी एक अगर नेचर और प्रकृति और दृष्टिकोण के रूप में इनोवेटिव और पायनियर है, और हम कह सकते हैं अंत में कि यह स्टडी मनोरोग, मनोदैहिक रोग में योगा बेस्ड टेक्निक्स की भूमिका पर जितने भी स्टडीज हैं उसके लिए मार्गदर्शक के रूप में यह स्टडी काम कर सकती है। ये रेफरेंसेस है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू प्रियंका जी, आपने पेपर बहुत बढ़िया टॉपिक लिया, और आप बहुत बढ़िया जो है गाइड के अंदर में आप जो है पेपर अपनी थीसिस लिख रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी।
और आपने ये आप मेडिटेशन के साथ में अपने जो पार्टिसिपेंट है जो सब्जेक्ट के रूप में जिनको शामिल किया है उनको आप कुछ और भी मेडिसिन के रूप में कुछ प्रोवाइड करती हैं? नहीं सर, इसमें जो है ना आयुर्वेदिक ड्रग दिया गया था सारों हाँ, छोड़, वही तो वो आयुर्वेदिक ड्रग की बात मैं कंट्रोल। बात कर रहा हूँ। उसमें जी जी आपने किसी टॉपिक में लिखा था मेडिटेशन, और जो जब आपका इंटरवेंशन की बात आ रही है तो उसमें मेडिटेशन के साथ आप कुछ आयुर्वेदिक उनको मेडिसिन या ड्रग जो भी दे रहे हैं आप उनको वो भी प्रोवाइड कर रहे जी हैं क्या? सर। पैरेलल इन दोनों का डिफरेंस जो है अलग अलग आप इसको क्योंकि चेक कर रहे हैं कि हाँ कॉमन कॉमन इसको इंटरवेंशन को चेक कर रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगी सर, मैंने जो है ना जो ड्रग जो दिया था वो दोनों ग्रुप में था। तो कंट्रोल ग्रुप में अच्छा। भी दिया गया था और साथ ही साथ ये इंटरवेंशन ग्रुप में भी दिया गया था, क्योंकि ये पेशेंट पे ओके। काम हो रहे हैं। तो इस पे हाँ हाँ, इसलिए पूछ इसको रहा हूँ। कंट्रोल ग्रुप ड्रग को जी जी कंट्रोल ग्रुप के रूप में दिया गया था। और लेकिन जब हम बाद में 2 हफ्ते के बाद हमने इसको फिर से एनालिसिस किया, असेसमेंट किया, तो पाया गया कि जो ड्रग वाले जो ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप, उससे ज्यादा इफेक्टिव है अगर हम ड्रग के साथ साथ परीक्षा मेडिटेशन को करें तो। ओके ओके, जी ठीक सर। है ठीक है। ये तो इसके साथ आप लोगों ने परमिशन ली है, परमिशन उनकी इथिकल कमेटी यस की? सर, यस सर, ये जो है ना एथिकल अप्रूव्ड है, ये जो इंस्टीट्यूशनल एथिकल अप्रूवल इसमें मिला गया, CTRI से भी ये अप्रूव्ड जी जी। स्टडी है सर। ओके ओके, चलिए जी सर। थैंक यू सो मच प्रियंका थैंक जी। यू सर, थैंक यू। और थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट प्रेजेंटेटर इज कुमारी प्रियंका रश्मि तिवारी जी। रश्मि तिवारी जी, आर यू देयर? फ्रॉम BHU, रश्मि तिवारी जी। प्रियंका जी, स्टॉप योर, या रश्मि तिवारी, आर यू देयर? आफ्टर रश्मि तिवारी, रेखा। जी सर, मैं हूँ यहाँ सर। हैं आप रश्मि जी? सर रेखा पठानिया। जी जी जी, प्लीज प्रेजेंट योर टॉपिक। जी सर। सर मैं रेखा पठानिया, राजकीय महाविद्यालय इंदौरा, हिमाचल प्रदेश से हूँ। और मेरा आज का विषय है आयुर्वेद में योग की भूमिका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भारत जो है हमेशा से ऋषियों मुनियों योगियों का देश रहा है। और यहाँ के जितने भी ऋषि है वो हमेशा ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं। फिर भी जो है ऋषि मुनियों ने जो है यहाँ के निवासी जो है वो भी खोज में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी ये जो है ज्ञान अधूरा और अतृप्त सा है। ज्यादातर मनुष्य जो है पलायन की ओर जाते जा रहा है। नई पीढ़ी जो है वो भी दिशाहीन हो गई है, नाना प्रकार के नशों में लिप्त हो गए हैं। स्वतंत्र यौनाचार, आत्महत्या करना, ये सब जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं और लोग भूल रहे हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो चित्त की शुद्धि के लिए, मानसिक शुद्धि के लिए विद्वान पतंजलि ने भी 3 ग्रंथों की रचना करी है। पतंजलि योग सूत्र, व्याकरण संहिता। और जैसा कि योग और आयुर्वेद जो है इनके उद्देश्य जो एक समान ही है। आयुर्वेद अनादि है, ब्रह्मा के मुख से मुखरित है। जैसे इसमें कई रोगों का निदान वर्णन है, यथा अपाला का चर्म रोग, राज यक्षमा, हृदय रोग, पशु चिकित्सा, संजीवनी विद्या, गाय बांझपन दूर करना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आरोग्य मूल्यम, राज यक्षमा। इस तरह से आयुर्वेद में 8 अंगों का भी वर्णन किया गया है। सर मैं संक्षिप्त में थोड़ा बोलूंगी। और इस तरह से जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति किसी ना किसी समस्या से पीड़ित है। और सबसे यदि जैसे है हमारे जहन में ये बात आती है कि बच्चों से लेकर के बूढ़े तक सभी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से ग्रस्त है। समय की भागदौड़ के कारण उनको ये नहीं पता कि उठना कैसे है, बैठना कैसे है। उनका तरीका जितना भी उठने बैठने का है वो दोषपूर्ण हो चुका है। शरीर जो है अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो रहा है और जिसके कारण जो है वो व्यक्ति जो है दिन प्रतिदिन अक्षम हो रहा है। उसके शरीर की जो क्षमता जो है वो कम हो गई है। भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों के कारण इतनी व्याधियां जो आ गई है
तो इसलिए बात रोग जो होते हैं उसमें लाभकारी योग होता है। जैसे यौगिक मुद्राएं होती हैं, मुद्राओं में, यौगिक मुद्राओं में जैसे हम कहेंगे आयुर्वेद के अनुसार कि उसमें महर्षि पतंजलि ने बहुत सारे उस मुद्राओं के बारे में बताया। जैसे वायु मुद्रा, वायु मुद्रा के नियमित अभ्यास से जितनी भी कुपित वायु होती है वो समस्त व्याधियों का उससे नाश हो जाता है। और वायु का गुण संरक्षण करना है, जो निरंतर गतिशील रहे उसे वायु या बात कहते हैं। आयुर्वेद में स्त्री दोष में वायु को प्रधान माना गया है। दूसरे वायु में भी, वायु ही प्राणों का आधार है, परंतु इससे त्वरित भयंकर रोगों का कारण जितना बात होता है उतना कफ नहीं होता है। फिर उसके बाद में अपान मुद्रा को जैसे हम ले ले, अपान मुद्रा जो है वो भी अपान वायु को नियंत्रित करती है। मध्य एवं अनामिका के पोरों को अंगूठे के पोर से स्पर्श करने पर अपान मुद्रा बनती है। जैसा कि हम गलत आहार विहार करते हैं उसके कारण भी अधिकांश लोग जो है वायु से पीड़ित हो जाते हैं। और पेट में एसिडिटी, गैस वगैरह जैसे गोला सा, उदर शूल आदि पड़ते हैं व्यक्तियों को, तो अपान मुद्रा का अभ्यास जो है रामबाण है, उसका यदि हम अभ्यास करें तो उससे जो है उदर की वायु जो है कम हो सकती है, जिससे क्या है व्यक्तियों को भूख लग सकती है, पाचन शक्ति में वृद्धि होती है, तथा आंत जो होती है, आंतों के विकार जो होते हैं वो भी दूर होते हैं। तो इस तरह से वायु के विकार जो है मधुमेह रोग का एक शमन है, उससे शमन होता है। प्राण मुद्रा में भी जैसे, फिर प्राण मुद्रा की बात करें तो कनिष्ठा और अनामिका उंगलियों का जो अगर भाग है उसको अंगूठे के अगर भाग से मिलाने से प्राण मुद्रा होती है। इससे क्या होता है, शारीरिक दुर्बलता दूर हो जाती है, मानसिक शांति मिलती है और आंखों के विकार दूर होते हैं, आंखों की जो ज्योति है वो बढ़ती है। और प्राण मुद्रा करने से जो भी विटामिन जो है उनकी जो कमी होती है वो दूर होती है, जिससे जो है व्यक्ति के जो है शरीर के ऊपर, जैसे हम कहेंगे फेस के ऊपर, चेहरे के ऊपर कांति आ जाती है और अनिद्रा रोग भी इससे दूर होता है। मैं यहाँ पर एक अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने खुद यहाँ पर अपने लिए, मेरे को माइग्रेन की पेन थी सर, और माइग्रेन पेन जो इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी कि बिल्कुल बात करने की भी मैम मेरे प्लीज प्लीज सम अप योर पेपर, बहुत समझ समय लग करो। रहा है। जी 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 जी, टाइम जैसे हम कहेंगे प्राणायाम में ले लो लोम विलोम, जैसे स्वयं मैंने भी इसके ऊपर अपने ऊपर सर मैंने एक्सपेरिमेंट करा है कि जिसके कारण जो है, जैसे मुझे मतलब मेरे को शुगर हो गई थी सर, मधुमेह रोग हो गया था, और मैंने मेथी दाना वगैरह, जैसे मैंने, मेरे को बताया आयुर्वेदाचार्य जो है कि ऐसे मेथी दाने का प्रयोग करके और रात को भिगो करके उसका पानी निकाल करके पीना है। तो इससे जो है साथ में 2-3 चीजें और मिक्स करके, तो मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करा, तो उससे मेरी शुगर जो है 120 से बिल्कुल कम हो गई है। एक बात और, मेरे पैरों में इतनी सूजन हो गई थी कि जिसके कारण मैं बिल्कुल चल फिर नहीं पाती थी। तो उसके लिए मुझे कड़ी पत्ता, जिसको कहते हैं ज्यादातर गांदला वैसे बोलते हैं उसको, तो उसके पत्तों को, और बना एक जड़ी बूटी है जो, उसको, उसके पत्तों को उबाल करके मैंने पानी में पानी से पैर धोए, जिसके कारण जो डॉक्टरों ने 20,000 रुपया मेरा खर्चा करवाया था वो बिल्कुल सर वो एक साइड पे रह गया। और जो मैंने पैर कड़ी पत्ते से धोए, 2 दिन लगातार गर्म पानी में मैंने पैर रखे बकेट में डाल करके, तो बिल्कुल मेरे पैरों की सूजन भी चली गई और मेरा ये रोग भी शांत हो गया जो सूजन पैरों में होती थी। तो और जैसे कहें कि शरीर को तंदुरुस्त होने के लिए कितने सारे योग आसन है, तो यदि हम उनको नियमित रूप से करते हैं तो शरीर को हम तंदुरुस्त कर सकते हैं। तो आपने जैसे कहा कि कंक्लूड करो, इस प्रकार से हम यही कह सकते हैं कि योग और आयुर्वेद एक ही प्रकार के विज्ञान है, दोनों का उद्देश्य जो है वो एक ही है, दुखों से निवृत्ति और आत्मा अनुभूति। राम लखन जी प्लीज स्टॉप योर स्क्रीन, प्लीज प्लीज, तरह से राम लखन जी प्लीज।
एक ही समय में Ramlakan ji, please. देश में विद्वानों के द्वारा Ramlakan ji, please stop to share. के लिए कार्य करते हैं। दोनों के द्वारा व्यक्ति का शारीरिक एवं आत्मिक विकास होता है और आदि भौतिक और दैविक ये जो दुख चलिए, thank you ma'am, sharing your live experience to us, because there are lots of participants, they are waiting and the time also has reached to maximum. It's going to 5 p.m. So that our next presenter, thank you sir, thank please you. be ready. Rupesh, sorry, Rupesh Kumar. No, sorry, Rupesh Kumar. Rupesh Kumar और ट्विंकल डोगराज। सर रुपेश जी उनके साथ थे, क्या नाम था एक बंदे के साथ, वो हो गया है प्रेजेंटेशन। तो ट्विंकल जी है, ट्विंकल जी यस सर, ट्विंकल डोगरा। हाँ, प्लीज प्रेजेंट योर टॉपिक। हाँ जी, यस सर। सर जिनका पेपर प्रेजेंट हो गया है वो लीव कर सकते हैं? अरे अगर रहेंगे तो सीखने को मिलेगा, लीव तो पहले भी कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू सर। Very good afternoon, all the respected panel members. And 1 minute, sir. Yes. This is Twinkle Dogra, and I'm presenting my paper entitled as Validation of Yoga Module for the Mental Health of Mothers with Hospitalized Infants in the NICU. Premature infants are need to be admitted in the neonatal intensive care unit. NICU stands for neonatal intensive care unit. If infant born before completing 37 weeks of gestation, that is called premature. And India accounts for 23.4% of global preterm births, and this is the topmost nation. Birth of a premature, low birth rate or sick newborn, and after that separation from the baby by admitting the baby into the neonatal intensive care unit may impact a mother's mental health. And poor maternal mental health is also associated with less participation in the infant care from mother's side. So the aim of the study was to develop and validate a hospital-based yoga module for the mental health of mothers with hospitalized infants in the NICU. After a thorough literature review, a hospital-based yoga module was developed by including such practices that early postpartum mothers could practice in their early postpartum phase. This yoga module was designed and then sent for a validation to 39 yoga experts, and the minimum experience for being a yoga expert was 2 years of postgraduate yoga experience in the field. And the content validity ratio for each item was calculated by using Losch's formula, and the intra-class correlation coefficient for the developed yoga module was then determined. CVR formula was this, and here in this formula, the NE stands for the total number of panelists, indicating essential for the each item which included in the yoga module, and capital N stands for the total number of panelists. Here panelists are the yoga expert. Yes. Here, this is the yoga module which we have designed and then validated by sending this module to the yoga experts. Here, I would like to point out about the practice names only. So first one is Pavan Muktasana. Part 1 selective practices were included. First was a Padangali Naman, Gulf Naman, Gulf Chakra, Mustika Bandhana, Manibandha Naman, Manibandha Chakra, Kehuni Naman, Skandha Chakra, Griva Sanchalan, and pranayams were Nadi Shodhan Pranayam, Bhramri Pranayama, Ujjayi Pranayama, and the module ends with Yoga Nidra session. This module consisted of 45 minutes. Here we can see the CVI. It was the average of all CVRs for each item, that is 0.672. The developed yoga module for the NICU mothers was validated by 38 yoga experts. In the panel, 17 female yoga experts were included, and 21 were the male yoga experts.
13 of the practices in the curriculum demonstrated good content validity. We can see in the last table here. Cutoff value for the inclusion of the practices were 0.316, and the content validity index, this was the average of all CVRs, that was 0.672. And the inter-class coefficient was also determined. Oh, I'm so sorry. This is great. So in conclusion of the studies, the yoga module was, we found that yoga module had a good content validity for mental health of NICU mothers. These practices were very easy that early postpartum mothers could practice, because in this module was designed taking in consideration that cesarean section and normal deliveries were those mothers who had cesarean section and normal deliveries, they can also practice these yoga practices. More randomized control trials are advised to determine the therapeutic efficacy and feasibility of the yoga module with bigger sample sizes. So these were the relevant references related to my study. Thank you so much. Twinkle Ogra ji, Haan thank ji, you so sir. much for presenting your topic. I really find it's very, very genuine and scientific topic for a research. Thank you, You sir. have done a really wonderful work. Thank you, In sir. the entire session, this your paper is really, really very good. The And the topic sequence, is very good. yes, the sequence was also very much set, and she was very clear about the picture of how the steps of research should be taken, and it was very crystal clear. Thank you. The Thank other you. Thank you, researchers sir. may learn from her that how the presentation should be, and within I think 6 minutes you presented the entire paper. So when there is a clarity of mind, sequence is very clear, so you are able to express yourself very nice. Congratulations, Twinkle ji. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Jiten sir, I think someone is left. Yeah, yeah. Is there anyone who want to present the topic and earlier had mentioned the name? Sir, Kumari Priyanka. Kumari Priyanka. Yeah, your सर name मैं is left. मधु प्रधान प्रेजेंट करना चाहती हूँ सर। आपका नाम है इसमें? जी, मधु प्रधान, SBU रांची। ओके ओके, एक मिनट देख लेते हैं। कुमारी प्रियंका LNIP। हाँ, कुमारी प्रियंका जी का तो नाम आज में ही था, तो आप Yes, sir. रेडी हैं? कुमारी प्रियंका जी, Yes, sir. प्लीज मैं present your topic. प्रियंका जी, हाँ प्रियंका जी आप शेयर करिए स्क्रीन। Yes, sir. आपका नाम देख रहे हैं मैडम, रुकिए। प्रियंका जी आप प्रेजेंट करिए। सर प्रेजेंट हो रही है इसमें? हाँ, Okay, प्लीज sir. प्लीज यू कैन स्टार्ट। Good evening, all of you. Good evening, respected teachers, and good evening, my professor Brinita Bajpayee Vishra ma'am, and my co-guide Dr. Manorma Nikra ma'am. And my topic is प्रज्ञा योग अभ्यास का महिला कैदियों के आक्रामकता स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। इसका हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रज्ञा योग अभ्यास द्वारा महिला कैदियों के आक्रामकता स्तर का अध्ययन करा, उनके एग्रेशन लेवल को चेक करना है। इंट्रोडक्शन यदि देखें तो हम देख रहे हैं कि आज का जो समय है, हम जो महिलाएं हैं वो काफी आगे जा रही हैं, हर फील्ड में आगे जा रही हैं। अगर कहीं दूसरी तरफ देखें तो वहां पे उनके महिलाओं में आपराधिक की क्षमता बढ़ती जा रही है, अपराध की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो ये हमारे समाज के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। इससे क्या हो रहा है, इससे हमारे परिवार के साथ साथ समाज में भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी, नीड ऑफ स्टडी। अगर आज का समय जो है, जो महिलाओं में तनाव, अवसाद जैसी चीजें हैं वो विकसित होती जा रही हैं। आक्रामकता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है महिलाओं को, उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। इसलिए शायद उनके अंदर अपराध का जो भाव है वो आ जाता है और इसलिए वो गलत काम कर देती है, जिससे उन्हें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य की दिशा में सही और समृद्ध दिशा नहीं मिल पाती है। इसलिए मैं इस अध्ययन को कर रही हूँ। जेल में मानसिक स्थिति कैसी रहती है महिला कैदियों की। महिला कैदी से तात्पर्य हम जानते हैं कि जो किसी अपराध के लिए दोषी ठहराई जाती है और वो सुधार गृह में सजा काट रही है। उनकी मानसिक स्थिति जो है समय की अवधि पर निर्भर करती है, कैदी की व्यक्तिगत स्थिति करती है
और जेल में कैसी सुविधाएं उनको मिल रही हैं उस पर भी उनकी मानसिक स्थिति निर्भर करती है। और सामाजिक संपर्क, पहले वो सामाजिक संपर्क में थी, अब वो जेल में रह रही लोगों के संपर्क में है, तो उनसे भी उनकी स्थिति पर इफेक्ट पड़ता है। तो इन कारणों से उनके मानसिक तनाव और उदासीनता ये चीजें बढ़ जाती हैं। आक्रामकता, जैसा हम सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति की क्रियाओं और व्यवहार को हिंसक करता है, ये मनोवैज्ञानिक शब्द है। व्यवहार उत्पीड़न, आक्रमण, रोष जैसी धमकी, विरोधाभासी व्यवहार को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। आक्रामकता के कारण हम जान सकते हैं, जेनेटिक कारण है, आनुवांशिक भी हो सकता है। उनके परिवार में यदि किसी के भीतर एग्रेशन बहुत ज्यादा रहा होगा तो इसके कारण भी आ सकता है। अभावग्रस्तता, यानी उनके पास किसी भी चीज की कमी रही होगी, इस कारण भी उनके अंदर आक्रामकता आ सकती है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, उनके पर्सनल कोई इश्यूज हो सकते हैं। सामाजिक प्रभाव, समाज में रह रहे लोगों के साथ उनका उठना मिलना कैसा है, तो उसका भी इफेक्ट इस पे आक्रामकता पर पड़ता है। इसमें मैंने अपनी स्टडी में प्रज्ञा योग अभ्यास को लिया है। प्रज्ञा योग अभ्यास जो कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने दिया है, इसमें स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही तरह से व्यायाम को किया जाता है। स्थूल में हम शारीरिक क्रियाओं के साथ करते हैं और सूक्ष्म में हम इसको मंत्रों के साथ करते हैं, श्वास प्रश्वास के साथ करते हैं। इसमें 16 स्थितियों का वर्णन किया गया है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, 16 स्थितियां। सबसे पहले हम ताड़ासन की यदि बात करें तो ताड़ासन में हमारे शरीर में मेरुदंड का सही विकास होता है। मेरुदंड का सही विकास होने से नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है। और फिर इसके बाद हम पादहस्तासन की बात करें तो इससे इड़ा पिंगला नाड़ी को, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना को बल मिलता है। वज्रासन की यदि बात करें तो वज्रासन में हृदय बलवान होता है, मेरुदंड, इड़ा पिंगला सुषुम्ना को बल मिलता है और पीठ के दर्द में आराम मिलता है। फिर इसके बाद सॉरी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ प्रियंका जी, आप एक एक आसन के उसको इफेक्ट वो मत करिए। आपने जो फाइंड आउट किया है ना, आप प्लीज को बता दीजिए। मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हूँ, प्रज्ञा योग हमने किया है, जितेंद्र जी ने किया है, तो वी नो ऑल दिस डिटेल्स, है ना। प्लीज आप उस पर आ जाइए कि आपने जो ये मैंने डेटा कलेक्ट किया है। डेटा कलेक्शन के लिए मैंने राजीव लोचन भारद्वाज सर की एग्रेशन स्केल को लिया है, जिसमें 28 आइटम्स को लिया गया है। मैंने 20 महिलाओं को अपने इसमें रखा है ग्रुप में। इसमें 10 महिलाएं जो हैं उन पर मैंने वर्क किया है, उनको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखा था। 10 महिलाओं को मैंने कंट्रोल ग्रुप में रखा था और 1 वीक का मैंने इन पे पायलट स्टडी की थी। तो इसमें सबसे पहले हमने इनको अभ्यास कराया। हमारा ये पूरा सेशन 1 घंटे का लगभग चलता था। तो उनको सबसे पहले अभ्यास 1 घंटे तक वो कोऑपरेट करते थे आपसे, ये सब कैटेगरी वाले? यस सर, महिला मतलब कैदी हमारे साथ बहुत अच्छे से योग करते थे। जो बाहर लोग इतना अच्छे से नहीं करते जितना कैदियों ने हमारे साथ काफी अच्छे से किया। अच्छी बात है ये आप लकी थी फिर, क्योंकि हमारा एक एक्सपीरियंस है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि कैदी आपसे कोऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि एक बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, प्लस उन्होंने फीडबैक भी हमें बहुत अच्छा दिया। चलिए बढ़िया, आगे बढ़िए मैम। इसमें हमने 28 आइटम्स, सॉरी राजीव लोचन भारद्वाज के जो स्केल है उसमें 28 आइटम्स थे। और फिर इसकी स्कोरिंग हमने बाद में की आफ्टर 1 वीक। स्कोरिंग में 5 4 3 2 1 इस प्रकार से इनकी स्कोरिंग दी गई थी। तो जो हमारा कंट्रोल ग्रुप था उसमें कंट्रोल ग्रुप में आप देखेंगे कि इनका जो आक्रामकता स्तर है 86.28% है, यानी ये वेरी सैचुरेटेड था इनका। और 1 सप्ताह बाद भी देखा गया तब भी इनका वेरी सैचुरेटेड रहा। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उनका 79.42% था, वेरी सैचुरेटेड था। बट 1 वीक बाद देखा गया इनका 69.57, तो ये हाई लेवल पे रहा इनका। इसमें थोड़ा अंतर देखने को मिला हमको। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जिन्होंने प्रज्ञा योग का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया उनकी आक्रामकता स्तर में अधिक परिवर्तन नहीं पाया। इसलिए महिला कैदियों के लिए प्रज्ञा योग अभ्यास शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वास्थ्यवर्धक और उन्नति कारक है। अतः ये शोध हमारे समाज के लिए प्रेरणाप्रद और नवीन एवं अत्यंत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही शानदार। जब कभी भी प्रज्ञा योग पर कोई रिसर्च सुनते हैं या फिर देखते हैं तो लगता है कि हाँ काम हुआ है कि नहीं, और आपके ऑथेंटिसिटी आपके प्रेजेंटेशन में दिख रहा था। जितेंद्र सर, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? अच्छा, आप प्रियंका जी, ओके फाइनली, ऑल द बेस्ट। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम बढ़ाइए। बहुत शानदार, वेरी नाइस। जितेंद्र सर
कुछ कहना चाहेंगे आप, या और किसी कंटेस्टेंट को बुलाना है? My professor is here. My guide is here. अरे वाह, नमस्कार। नमस्कार। अरे नमस्ते मैम, बहुत बहुत ध्यान से आप पूरा सबका सुन रही थी, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपके गाइडेंस में हो रहा है तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा हो रहा होगा। और कभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आता हूँ तो आपसे आपके दर्शन करूंगा। जी डेफिनेटली। ठीक है Sir, मैम, we ओके। are from LNIP, Gwalior. अच्छा, ग्वालियर। सॉरी सॉरी, मैं ओह कंफ्यूज हो गया। ग्वालियर, ग्वालियर, सॉरी सॉरी। जी जितेंद्र सर, जी जी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेम, कुछ लोग हैं लेकिन उनका नाम नहीं है सर लिस्ट में। लेनोवो कोई है करके? मैं श्वेता कुर्रे सर। हाँ, आप कर दीजिए, हाँ आपका हो गया सर, पीपीटी क्या रेडी। सर सॉरी उधर सर, से आप ये चक्रवात के कारण 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण यहाँ नेटवर्क नहीं हो रहा है, उसके नहीं नहीं, कारण कोई मैं नहीं कोई नहीं, नहीं आप कर प्रेजेंट पाई। करिए, प्रेजेंट आप कर करिए। दीजिए। आप कर दीजिए। हाँ, थैंक यू नमस्ते सो मैम, मच कैसे हैं मैम आप? जितेंद्र को प्लीज शेयर कर दीजिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम श्वेता कुर्रे है। मैं अभी पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में अतिथि प्राध्यापक के रूप में योग विभाग में कार्यरत हूँ। और मैथ्स विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में डॉक्टर सुनील कुमार मिश्र सर के अंडर में मेरा पीएचडी चल रहा है। अभी जस्ट मैंने कंप्लीट किया है सर। मैं अपना एक पेपर अभी बनाई हूँ जिसे मैं प्रेजेंट करना चाहूँ। टॉपिक बोलिए और सर आप मेरा प्रेजेंट टॉपिक करिए। है यौगिक अभ्यासों का महिलाओं के भावनात्मक एवं बौद्धिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। वेरी नाइस, चलिए यौगिक बढ़िया। अभ्यासों का महिलाओं के भावनात्मक एवं बौद्धिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। ओके, उसमें अब बताइए, रिसर्च मेथोडोलॉजी सर बताइए। सर मेरा थ्योरिकल है। मैंने इस पे देखा है कि महिलाएं जो है अत्यधिक भावुक होती है। भावनात्मक होने के कारण उनमें बहुत सारी समस्याएं होती है जिसे किसी को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यौगिक अभ्यासों के थ्रू उनके जो भावनात्मक स्तर है बहुत सा उस पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद सर मैंने अपना उद्देश्य बनाया है यौगिक अभ्यासों का महिलाओं के भावनात्मक और बौद्धिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। सर मैं जल्दी जल्दी कवर करना चाहूंगी। आपने यौगिक अभ्यास में कौन कौन से आसन और कौन कौन से ऐसा पैकेज क्या डिजाइन किया है? कौन से यौगिक अभ्यास लिए हैं आपने? हेलो, थ्योरिकल भी किया है। हाँ हाँ, थ्योरेटिकल किया है, बट कुछ ऐसे अभ्यास को सेलेक्ट किया है क्या? रिव्यू पेपर है डॉक्टर साहब, ओके, रिव्यू theoretical study है। They have not taken any asanas for practice session. अच्छा, just they have just studied so many papers and they have written their Yeah. assumptions, right? Okay, ठीक है, ठीक है। जी जी सर। सर मैं वो पढ़ना चाहूंगी। सर इसमें मैंने देखा है कि एस वेलिजली के अनुसार महिलाओं के भावनात्मक एवं बौद्धिक स्वास्थ्य पर बहुत अधिक अंतर पाया गया है। उन्होंने कॉलेज की महिलाओं के भावनात्मक बुद्धि स्तर को बढ़ाने में शोध किया है, जिसमें 60 न्यायाधीश का चयन किया गया था। दो समूह में उन्होंने बांटा था। 20 मिनट तक उन्होंने योगाभ्यास नियमित रूप से कराया सर। तो जो दो समूह में बांटे थे, प्रयोगात्मक और नियंत्रण, उसमें उन्होंने देखा सर नियंत्रण ग्रुप में कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, जबकि प्रयोगात्मक जो समूह था उनके भावनात्मक और बौद्धिक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव देखा गया। सर उसके अलावा कॉस्टिनो जी ने एक घरेलू हिंसा का अनुभव कर रही महिलाओं के ऊपर शोध किया था। योगाभ्यास का परीक्षण कराया, जिसमें उन्होंने पाया कि योगाभ्यास करने वाली महिलाओं में घरेलू हिंसा का जो भावनात्मक इफेक्ट था उसमें उन्होंने पाया कि वो भावनात्मक रूप से मजबूत होती गई। और सर एक उन्होंने एक तीखी शाम गणपति अपने शोध में मध्य प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पीएचडी के 60 छात्रों का चयन करके उन्होंने भावनात्मक स्तर को जानने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने देखा कि जो नियंत्रण ग्रुप था उस पे उनका जो योगाभ्यास था उन्हें नहीं कराया गया, और जो कराया गया उस ग्रुप में उन्होंने सकारात्मक परिणाम देखा गया सर। ईसा माल्या आनंद प्रेम के अनुसार जी के अनुसार उन्होंने किशोरियों के अंत व्यक्तित्व भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर योगाभ्यास का प्रभाव देखा। उसमें उन्होंने पाया व्यक्तित्व पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता में काफी सुधार पाया गया। और डॉक्टर प्रणव पांड्या जी और मनोरमा निखरा जी के अनुसार के शोध में सर मैंने देखा कैदी महिलाओं पर उन्होंने
प्राणिक ऊर्जा और प्राणिक हीलिंग पर योगाभ्यास का प्रभाव देखा, जिसमें ग्वालियर के केंद्रीय हाँ वही चल। जी आप उसमें लास्ट 25 से लास्ट 65 वर्ष की कंक्लूजन आयु। पे, श्वेता जी कंक्लूजन पे आ जाइए, व्हाट यू फाउंड आउट। जी जी सर। ओके ओके सर। सर मैंने रिव्यू के आधार पर जो निष्कर्ष पाया, उसमें मैंने पाया सर, जो योगाभ्यास करते हैं और गैर योगाभ्यासियों के बीच योगाभ्यास करने वाली महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। योगाभ्यास नहीं करने वाले महिलाओं पर इसका प्रभाव जो है वो यथावत रहता है। बहुत सुंदर। योगाभ्यास करने से महिलाओं के भावनात्मक और बौद्धिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, वो सकारात्मक होती हैं, उत्साह उनका बढ़ता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। अब थैंक यू सर। वही टेक्निकली थोड़ा सा आप ग्रो करिए, रिव्यू पेपर लिख रहे हैं तो बस जी ये जी है सर। कि फ़ॉन्ट वगैरह जब आप ध्यान में रखते हैं तो पीडीएफ करके रखेंगे, ऐसा ये सब चीज़ें थोड़ा आप अपडेट करिए, बाकी ठीक है। जितेंद्र सर। जी जी सर, थैंक यू सो मच सर, आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ, और कोई बचे हुए हैं जिनका लिस्ट में नाम है, जो पीडीएफ शेयर हुई थी उसमें कोई बचे हुए हैं क्या? सर मैं मधु प्रधान। मैम आपका नाम इसमें शो नहीं हो रहा है, मतलब प्रेजेंट कर लीजिए डॉक्टर भारद्वाज हाँ सर। हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ, कैरी मधु ऑन। प्रधान, सरला बिरला यूनिवर्सिटी। ओके हाँ ठीक है। जी आयुर्वेद जी में वर्षर्ग काल के आहार विहार पर एक समीक्षा। ठीक है मैम, आप शेयर करिए स्क्रीन, प्रेजेंट कर लीजिए। सर आपको मेरा स्क्रीन दिख रही है सर? अभी यस, आ गया आ गया। बाप रे, अपने फोन इतना छोटा रखा है मैडम, कैसे दिखेगा नहीं सर, बताइए। लैपटॉप से सर है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, शुरू करिए, आप स्टार्ट करिए। सर उपस्थित सभी मेरे आदरणीय गुरुजन को नमस्कार। मैं मधु प्रधान, सरला बिरला यूनिवर्सिटी से रिसर्च स्कॉलर हूँ। मेरा सब्जेक्ट है सर विसर्ग काल में आहार का सेवन। विसर्ग काल में सर आयुर्वेद के अनुसार हमारे 6 ऋतुएं होती है, जिसमें 3-3 ऋतुओं का एक समागम बनाया गया है, जिसमें आदान काल कहते हैं और एक हमारा होता है विसर्ग काल। विसर्ग काल में सर हमारा 3 ऋतु आती है, जो कि वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु। इन तीनों ऋतुओं को मिलाकर हम विसर्ग काल कहते हैं। मुझे शोध की आवश्यकता सर इसमें इसलिए पड़ी क्योंकि आजकल मॉडर्न सोसाइटी में लोग गलत पथ्य अपथ्य का सेवन करते हैं, विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं, जिस वजह से लोग समय से पहले ही अस्वस्थ हो गए हैं। इस वजह से मैं आयुर्वेद से जो भी एक सरल भाषा में अपने आयुर्वेद में जो कि स्वस्थ एक व्यक्ति को एक स्वस्थ आहार का सेवन करके लंबे समय तक स्वस्थ रह सके, वैसे आहार को बाहर निकाल कर और उन्हें एक समाज में इसको प्रदर्शित करना है, ताकि सरल भाषा में लोग उसको सेवन कर सके। इसी में विसर्ग काल में मैंने एक प्रेजेंट किया है कि विसर्ग काल में जो हम सेवन कर सकते हैं सर, उसमें मैंने एक मिनट से स्क्रीन थोड़ा स्क्रीन नीचे कर, जस्ट अ मिनट सर। ठीक है ठीक है। आप कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीन हो जाएगा शेयर। सर जैसे मैंने इसमें आपको बताया है, मैंने पेपर में लिखा है सर कि इस वक्त हमारा दक्षिणायन में हमारे सूर्य की जो स्थिति रहती है, जिसमें सूर्य की स्थिति होती है कमजोर हो जाती है और चंद्रमा की स्थिति होती है वो काफी मजबूत होती है। जिस वजह से चंद्रमा की स्थिति ज्यादा मजबूत होने से हमारा डाइजेशन जो होता है सर, इसमें ज्यादा स्ट्रांग होने लगता है। सूर्य की स्थिति कमजोर होने से रात्रि इसमें सर ज्यादा लंबा होती है, जिस वजह से समय ज्यादा मिलता है खाना को पचाने के लिए। स्ट्रांग हृदय में भी सर मैंने देखा कि इसमें इस ऋतु के विषय में बताया गया है, जिसे विसर्ग काल में और कुछ पथ्य और पथ्य का अपथ्य और पथ्य का इसमें सेवन बताया गया सर। जैसे मैंने इसका आपको, आप देख पा रहे होंगे सर कि मैंने आपको एक मिनट सर,
ये मैंने सर एक आपको संवत्सर 6 ऋतुओं का जो मैंने इसमें बताया है, प्राकृतिक भाव का भी मैंने वर्णन किया है, जो कि आदान काल और विसर्ग काल, जिसमें सूर्य की स्थिति के साथ हमारे जो प्रकृति होती है सर, उसमें किस किस का सेवन करना चाहिए, जिससे सेवन से हमारा शरीर स्वस्थ रहे। वर्षा ऋतु में कुछ आहार विहार का मैंने वर्णन किया है, पत्ते और पत्ते का सेवन किया है। पत्ते के सेवन में मैंने बताया है कि इसमें वर्षा ऋतु में पुराने अनाज का सेवन करें, जैसे पुराने गेहूं, शाली चावल, साठी, मक्का, सरसों, खीरा, खिचड़ी, जिससे कि ये डाइजेशन हमारा, क्योंकि वर्षा ऋतु में हमारा डाइजेशन गर्मी ऋतु के बाद थोड़ा बहुत कमजोर होता है, ताकि पचने में थोड़ा आसानी हो, इसलिए हल्के भोजन का सेवन करने की मैंने दिया है। और अपथ्य विहार में मैंने बताया है कि जैसे कोई रूखे पदार्थ, उड़द, मटर, इन सबों का, अगर कटहल, करेला का अगर सेवन करते हैं, सत्तू का सेवन करते हैं, तो हमारा डाइजेशन क्या होता है सर, इसमें खराब होने लगता है, इसलिए इसका हम सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैंने शरद ऋतु के बारे में बताया है। शरद ऋतु में, ये वर्षा ऋतु के बाद का होता है, और ये इसमें क्या होती है, सूर्य की ऊष्मा थोड़ी तेज होने लगती है, जिससे हमारा पीत दोष क्या होता है, प्रकोपित होने लगता है, और जिससे शरीर में बुखार, फोड़े, फुंसियां, जो कि कॉमन बीमारी होती है, उत्पन्न होने लगती है। अगर ऐसे में भी अगर एक स्वस्थ व्यक्ति अगर थोड़ा सा अपनी भोजन को संतुलित कर सके, दही, मट्ठा, दही, घी, मलाई, श्रीखंड, इन और सब्जियों में सर जो कि हमारे सीजनल होते हैं सर, बथुआ, लौकी, तुरई, अगर गोभी, अनार, फल में आंवला का अगर सेवन करता है, तो वो उसका डाइजेशन सही रखेगा और वो स्वस्थ व्यक्ति रहेगा। कुछ अपथ्य का मैंने सेवन किया है, जैसे इसमें मट्ठा, सौंफ, लहसुन, करेला, हींग, काली मिर्च, इनका अगर अवॉइड करता है तो ये उनके सेहत के लिए ठीक रहता है। साथ ही मैंने एक सबसे बड़ी बात की, बिना भूख का कभी भोजन का सेवन ना करें, क्योंकि अगर बिना भूख का अगर हम भोजन का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में विष का रूप लेने लगता है, जिससे हमारा शरीर धीरे धीरे विषाक्त हो जाएगा और हमारे अनेक बीमारियां हमारे ऊपर आंदोलन करने लगेंगी। उसके बाद मैंने हेमंत ऋतु के बारे में बताया सर कि उसमें कौन से आहार विहार का सेवन करना चाहिए। हेमंत ऋतु में सर पाचन शक्ति काफी स्ट्रांग हो जाती है, जिस वजह से अगर हम अच्छे भोजन अपने शरीर को ना दें, तो हमारा शरीर क्या होती है, भूख के कारण वो हमारे धातुओं को खाने लगती है, जिससे शरीर हमारा क्या होगा, कमजोर होने लगा। इसलिए इस मौसम में हमें बिल्कुल ही अच्छे सुपाच्य भोजन लेना चाहिए और शरीर को बलिष्ठ देने वाले, जैसे पत्ते में मैंने बताया है, चने की रोटी, गेहूं, मूंग और कॉर्नफ्लेक्स, मक्के की रोटी, मौसमी फल, सेब, आंवला, अनार आदि, इनका सेवन निरंतर करते रहें। साथ ही आपको सब्जियों में जो कि सीजनल होते हैं, मटर, पालक, बथुआ, मेथी, इनका भी सेवन करें, तो उनका शरीर डाइजेशन सही रखेगा। इसमें सर पथ्य विहार में कुछ विहार बताए गए हैं, जो कि इसमें वात को क्या होते हैं, प्रकोपित करते हैं। शीतल वात को प्रकोप से सीजनल बीमारी, खांसी, श्वास, गठिया जैसे बीमारी होती है, उत्पन्न होने लगती है। इससे बचने के लिए हमें आहार विहार जो कि उसका सेवन करना चाहिए, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और देर रात्रि तक जागने का प्रयास ना करना चाहिए। जो मैंने इसमें शायद आपने कुछ वर्णन किया है कि मधुर रस में क्या होते हैं, अम्ल रस क्या होता है। अम्ल रस में अगर हम शरीर में अम्ल रस जब आपका बढ़ाते हैं तो पीत और वात नाशक ये हो जाता है। कटु रस होता है वह कफनाशक होने लगता है। आहार मैं निष्कर्ष में सर, ये चूंकि मेरा ये सर थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए मैंने इस पे किसी व्यक्ति पर सर्च नहीं किया, बस मैं शास्त्र के हिसाब से जो आहार का वर्णन है उसको मैं सरल भाषा में सर परिमार्जित कर कर समाज के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। बहुत सुंदर। आहार में भी सर आयुर्वेद में 3 चीज बताए गए हैं जो कि शरीर के उपस्तंभ होते हैं, आहार, ब्रह्मचर्य और निद्रा। मैंने इसको आहार को पकड़ा है, और चूंकि मेरा सब्जेक्ट टॉपिक है, एसबीयू से कर रही हूँ, तो उसमें मेरा टॉपिक है योग शास्त्र में आहार का सेवन। लेकिन आपके इसमें इस आर्टिकल में मैंने छोटा उसके करके विसर्ग काल को बना के पेपर देने का प्रयास किया है। और शरद ऋतु में सर जनरली हमें मधुर, तिक्त और कषाय रस का सेवन करना चाहिए। और इस आर्टिकल को लिखने के लिए सर मैंने अष्टांग हृदयम, चरक संहिता,
आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, इन सारे किताबों का मैंने शॉर्ट फॉर्म में अध्ययन किया सर, जिसको मैंने रेफरेंस में लिखा है, आप देख सकते हैं सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। एक बार थोड़ा रेफरेंसिंग ऊपर करिएगा थोड़ा। जी और ऊपर आपने कोई फॉर्मेट यूज नहीं किया है ये संदर्भ सूची को लिखने के लिए? सर एपीआई स्टाइल में किया है सर। ठीक है ठीक है। तुम्हारा क्या मधु शर्मा जी, दिस इज नॉट इन एपीएस स्टाइल। जी सर, एपीए स्टाइल में तो नहीं है मैम रेफरेंस ये। इज नॉट इन एपीएस स्टाइल। सर रेफरेंस में तो मैंने एपीए में ही सर डाले थे सर। यू शुड हिंदी डू में इन लेटेस्ट। पृथ्वी में नहीं ले रहा था, तो फिर सर इंग्लिश में ही मैंने एपीए में ही डाला सर। मैम जैसे बहुत मैंने दिक्कत नहीं है। बालकृष्ण जी का आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, उसका मैंने अध्ययन किया, उनका मैंने पढ़ा था, चरक संहिता पढ़ा सर, अष्टांग हृदय भी बालकृष्ण जी का ही मैंने। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आपने नहीं पढ़ा या पढ़ा, हम बस ये कह रहे हैं कि फॉर्मेट में ये नहीं है। आप एक बार एपीए फॉर्मेट ठीक है का सर, लेटेस्ट चेक कर फॉर्मेट लूंगी चेक। सर। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इट शुड बी इन लेटेस्ट एपीए फॉर्मेट, लेटेस्ट 7 चल रहा है, ठीक है। ठीक ओके सर। ठीक ठीक सर थैंक एक यू। रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सर, अगर आप लोग सुन सर, बोलिए मेरे बोलिए। को कुछ सजेस्ट करिए, क्योंकि हमारा सरला बिरला यूनिवर्सिटी से, जहाँ से मैं पीएचडी कर चुकी है, मेरे घर के नजदीक है सर, और बाहर में जा नहीं सकती सर, मेरी फैमिली है। तो अगर आयुर्वेद के इस पर अगर आप लोग कुछ आइडिया मुझे दे सकते हैं, ताकि कुछ और बुक से कुछ हेल्प कर सकते हैं, ताकि मेरा रिसर्च पेपर सर और अच्छा हो सके सर। बिल्कुल अगर आप मैम, लोग का ना वो उसके लिए हम लोग अलग से कांटेक्ट में आपको जितने भी योगा एक्सपर्ट्स हैं उनके नंबर जो कल आपको शेयर होंगे, या आप जी श्री राम योगा सोसाइटी से आप जुड़े रहिएगा। जितेंद्र जी का नंबर है आपके पास, नवीन जी का नंबर है, आप अलग से बात करिएगा। अभी हमें रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशंस लेना है, क्योंकि आज नहीं और बस, कल में थैंक यू सर, बस कॉन्फ्रेंस खत्म होना है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ एक बार मैं लास्ट नाम बोल दूं सर, कोई हाँ, अगर हो तो, जो इनका लिस्ट है, अदिति सोनी जी, आदित्य सोनी नहीं है। अक्षय वशिष्ठ जी ने कर दिया, अंकिता हाँ। बोर ठाकुर जी ने कर दिया, अनुजा कुमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नहीं उनका नहीं है। इनका भी नहीं हुआ। ठीक है, आरुषा उपाध्याय ने कर दिया, डॉक्टर राजेश कुमार मौर्य जी ने कर दिया, हेतवी बेन धीरज इनका लाल हो गया। इन्होंने कर दिया, करण सती जी, नहीं हुआ। हाँ तो करण ये आप सती जी देर हैं नहीं यहाँ है, पर, नहीं है। नहीं है, नहीं। खुशबू बी भाटजा जी, लकुलिश यूनिवर्सिटी, कर दिया मुझे लग रहा है। हाँ इन्होंने कर दिया। हाँ हाँ। खुशबू, ओके ठीक है। मधु प्रधान जी ने कर दिया, मोनिका देवी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मोनिका देवी जी, है। इनका भी हो गया, मुझे लग रहा हो गया होगा। मैं बीच में 10-15 मिनट के लिए नहीं हाँ था, हाँ, जब खाना आप खाने जब गया। नहीं थे तब हो गया। ठीक है, नीति सिंह जी, नीति सिंह का नहीं हुआ अभी। परिचिति शाह जी, इनका हो गया। प्रियंका कुमारी जी हो गया, रश्मि हाँ, तिवारी जी हो गया, रेखा पठानिया जी, इनका हो गया प्रेजेंटेशन। रुपेश कुमार, ये रुकेश कुमार सर उनके साथ थे, ये एक और हाँ दूसरे बंदे ने प्रेजेंट किया था, ट्विंकल हाँ हाँ डोगरा जी हो गया। आई थिंक यहाँ हाँ। सबका हो गया, और एक जो नाम आपने और भेजा था अलग से, जिन्होंने चेंज कराया था, मैं उसका, अंकिता जी जो आई एम थी। मैं एक मिनट देख लेता हूँ। और कोई है? सर मैं खुशबू, मेरा हो गया है। हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। और कोई है ऐसा जिसको? जी सर, आरती कुमारी। आरती कुमारी जी, प्लीज कंटिन्यू। आरती जी का नाम जी है? सर कल के लिस्ट में है, बट कल मेरा बिहार टीचर वाला पेपर है सर, बिहार में। हाँ हाँ, अच्छा ठीक अच्छा, ठीक। आप जन के लिए कर दीजिए कर दीजिए। 5 मिनट है मैडम आपके पास। हाँ प्लीज, है ना, हमारा ये ठीक है सर। हम ऑफिस में हैं, तो हमें 5 बजे बंद करना होगा। आप शेयर कर दीजिए मैम, पीपीटी शेयर करिए। जब तक मैम पीपीटी शेयर करिए, मैं फटाक से ये वाले नाम बोलता हूँ। अभय शर्मा, गरिमा पुरी एक साथ इन्होंने किया था, श्वेता कुर्रे जी ने कर दिया, डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा ये नहीं थे, जूहू कुमावत जी ने कर दिया, जूही है एक्चुअली ये, कुमारी प्रियंका ने कर दिया, अभिषेक मौर्य जी ने कर दिया, उपमा मिश्रा जी ने कर दिया, अक्षय वशिष्ठ हो गया, महेश जी ने कर दिया, नेहा बीएचयू ने कर दिया। ठीक है मैम, आप प्रेजेंट करिए। सर क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है? परफेक्टली दिख रहा है, आप शुरू करिए मैम। फुल वो कर ठीक है दीजिए सर। जूम। ओके सर। परफेक्ट दिख रहा है, शुरू करिए मैम। सर यहाँ
यहाँ सीधा उपस्थित आप सभी गुरुजनों को मेरा सीधा प्रणाम। आप उस पर आइए, आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी जी क्या सर। यूज की और कैसे किया? आरती जी मैं प्लीज रिव्यू जो पेपर है बहुत ही ब्रीफ जी में सर। आप प्रेजेंट करिएगा, मेन चीजें जी जी आपने जो है जी सर। ऑब्जेक्टिव बताइए सर स्टडी का, मैंने टॉपिक और ऑब्जेक्टिव। सर मेरा जो टॉपिक है वो है आयुर्वेद और योग, शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के प्रति एक संपूर्ण दृष्टिकोण। सर मैंने एक इसी रिव्यू पेपर बनाया है। अच्छा, ये जी रिव्यू सर। पेपर है, ओके। तो सर जान है तो जहान है, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। ऐसे हजारों स्लोगन हमारे प्रतीक हैं। ये सभी आपकी आवाज स्लोगन बहुत हमें स्लो है, अपने स्वास्थ्य आवाज। के प्रति करने क्या सर? हाँ हाँ ठीक, बताइए बताइए। ये सभी हाँ हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के साथ ही साथ स्वास्थ्य के महत्व को भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे जैसे मनुष्य प्रगति कर रहा है, उसकी जीवन शैली में बदलाव आते जा रहा है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। ऐसे में योग और आयुर्वेद का महत्व और भी बढ़ जाता है। स्वास्थ्य के बिना मनुष्य संसार में अपनी इच्छा अनुसार कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित करते समय लोग अक्सर ये कहते हैं कि मन लगाकर काम करो। तो इसका मतलब यही हुआ कि सफलता के लिए मन का नियंत्रित होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार शरीर को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। कहा भी गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात धर्म का साधन शरीर है। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद एक शाश्वत संपूर्ण जीवन विज्ञान है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की मूल साधना आरोग्य का वर्णन है। आयुर्वेद का सामान्य अर्थ आयुषो वेद है, अर्थात आयु का वेद। एक प्रकार से देखें तो आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु प्लस वेद। आयु का अर्थ होता है जीवन और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। अब हम योग के अर्थ के बारे में जाने तो भारतीय दर्शन एवं भारतीय संस्कृति में योग विद्या का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह विद्या सभी विद्याओं में सर्वोपरि और विशेष स्थान रखती है। योग को योग की उत्पत्ति की बात करें तो योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सम्मिलित होना या एक होना। यहाँ एकीकरण का तात्पर्य जीवात्मा तथा आत्मा का एकीकरण, यानी मनुष्य के व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक पक्षों के एकीकरण से लिया जा सकता है। आयुर्वेद के संबंध को देखें तो आयुर्वेद और योग दोनों विद्याएं भारतीय वैदिक साहित्य सागर से उत्पन्न अमृत रस हैं, जिनका मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वस्तुतः योग आयुर्वेद का ही एक अंग है। इन दोनों का ही उद्देश्य मानव जाति का उपकार करना है। संसार में दृष्टिगोचर होता है कि प्राणी मात्र की सर्वप्रथम कामना है सुखमय दीर्घ जीवन की प्राप्ति और उत्तम स्वास्थ्य एवं आरोग्य की प्राप्ति। चूंकि योग का स्वास्थ्य से निकटतम संबंध है और स्वास्थ्य आयुर्वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, इस दृष्टि से योग और आयुर्वेद परस्पर संबंधी शास्त्र हैं। इसके अलावा योग और आयुर्वेद दोनों विज्ञानों की ही उत्पत्ति की बात करें तो दोनों की उत्पत्ति वेदों से मानी गई है, और दोनों ही विज्ञान जो है पुरुषार्थ चतुष्टय यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष दोनों को मानते हैं। योग और आयुर्वेद दोनों की ही शिक्षा पद्धति जो है वो गुरु परंपरागत रही है। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो ऐसा आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिलता है कि आयुर्वेद ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ था। ब्रह्मा जी ने अपने शिष्य पुत्र दक्ष प्रजापति जी को दिया, उन्होंने अश्विनी कुमार को दिया, अश्विनी कुमार से ये इंद्र जी के पास गया, इंद्र जी से भारद्वाज ऋषि को प्राप्त हुआ और वर्तमान समय में चरक संहिता के रूप में हम सभी के समक्ष उपलब्ध है। और वहीं हम योग की उत्पत्ति की बात करें तो श्रीमद् भगवत गीता में हमें उल्लेख मिलता है कि योग का ज्ञान सर्वप्रथम भगवान विष्णु जी ने विवस्वान जी को दिया, विवस्वान ने मनु जी को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु जी को, और इक्ष्वाकु के बाद अन्य राज ऋषियों के द्वारा वर्तमान में जाना गया। योग और आप आयुर्वेद अरे सर जो है आरती जी, आप जो फाइंडिंग पर फोकस करिए, मेन बस फाइंडिंग, ठीक है। इसके बाद कोई और है प्रेजेंटर? जी जी, फाइंडिंग्स पे आइए, बिल्कुल फाइंडिंग्स पे आइए, बस लास्ट में।
ये सर हितायु अहितायु ये सब डिफाइन नहीं करूं? नहीं नहीं, ये मत बताइए, हमें फाइंडिंग्स बताइए। ये तो आप बताएंगे तो मुझे पूरा समय निकल जाएगा, काफी समय। हमें फाइंडिंग्स बताइए, जो आपका टॉपिक है तो थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल में आपने क्या फाइंडिंग्स मिली आपको? सर इसमें हमने यही देखा कि जो योग और आयुर्वेद है दोनों ही मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और संपूर्ण पक्षों पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। यदि हम इसका नियमित रूप से अपने दैनिक दिनचर्या में प्रयोग करें तो हमें इसके काफी अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। और हमारा जो वर्तमान जीवन विभिन्न दुखों और उतार चढ़ाव से युक्त है, अगर हम अपने जीवन में इनका समावेश करते हैं तो हमें विभिन्न लाभ प्राप्त होते हैं। जी जी। अरे आरती जी, आप एक जी चीज ध्यान सर। दीजिएगा। देखिए, जब भी हम टॉपिक बनाते हैं तो हर एक टॉपिक जो रिसर्च टॉपिक होता है खासकर, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशन का यहाँ अभिप्राय ये है कि एक टॉपिक की जी फिजिबिलिटी कितनी है, ठीक है, और आप जी उसको एक एज रिसर्चर उसको कितना किस लेवल पे आप उसको स्टडी करें। आपने योग भी ले लिया है, आपने आयुर्वेद भी ले लिया है, आपने कई सारे डायमेंशंस भी ले लिए हैं, ठीक है। तो ऐसे में कई सारे डायमेंशन और इतना भारी भरकम जो है एरिया लेकर के फाइंडिंग्स निकाल पाना, एक साइंटिफिक फाइंडिंग्स निकाल पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो ऐसे में जब जी भी जी आप कोई टॉपिक सर लें पहली तो ये बार ध्यान। प्रेजेंट हाँ, करें नहीं इसलिए सर नहीं, आगे इसीलिए तो आपको हाँ बता रहे हैं। नहीं नहीं, इसीलिए आपके ऐसी जी कोई बात नहीं, इसीलिए आपको बता रहे हैं इनिशियल स्टेज पे आगे कि आप हमेशा इसमें ध्यान रखिए कि आपका जो टॉपिक हो वो ऐसा हो कि आप किसी जैसे पहली बार प्रस्तुत करें तो कोई एक डायमेंशन लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में और उस पेपर बनाने में थोड़ी आसानी होगी। आप मल्टी डायमेंशन से ले लेंगे ना, तो आप हर डायमेंशन में भी एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे और एक डायमेंशन भी आपसे छूट जाएगा, ठीक है। जी जी सर। चलिए, धन्यवाद। ठीक है सर, मुझे लगता है थैंक यू। कि अजय जी और कोई तो है नहीं, प्रोफेसर अजय। चलिए, धन्यवाद सभी का। आप लोगों ने जितने लोग हैं अभी जुड़े हुए हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों की वजह से ये कॉन्फ्रेंस जो है इतने बड़े लेवल पे हमेशा आयोजित हो पाती है। 6 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इससे पहले 5 अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस इसी तरीके से आयोजित किए गए हैं, और मोर देन 200+ पार्टिसिपेंट हैज रजिस्टर्ड इन दिस कॉन्फ्रेंस। एंड आप देख ही रहे हैं कि हम लोग जो है लगभग में 1 बजे से कॉन्टिन्यूअस पेपर प्रेजेंटेशन चल रहा है, और इट्स गोइंग टू 5 PM। लगभग में 4 घंटे हो गए, 4 आवर्स। और 4 आवर्स में नियर अबाउट 50% 50 पार्टिसिपेंट्स, मोर देन 50 पार्टिसिपेंट्स हैव प्रेजेंटेड देयर पेपर। एंड लॉट्स ऑफ फाइंडिंग्स वी हैव सीन, अलग अलग डायमेंशन पे, योग को लेकर के, आयुर्वेद को लेकर के, कंपेशंस पे, वर्किंग मेमोरी पे, कॉग्निटिव डिफरेंट कॉग्निटिव फैकल्टीज पे, और फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल, और बहुत सारे डायमेंशन, मैथमेटिक्स, कंपेशन को लेकर के अलग अलग टॉपिक पे लोगों ने अपने पेपर प्रस्तुत किए, और अलग अलग फाइंडिंग को भी प्रस्तुत किया। कुछ पेपर ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल थे, और कुछ ऐसे पेपर जो है हमारे जो है इम्पेरिकल हमें मिले। तो आप सभी से निवेदन है, इन फ्यूचर जब भी आप टॉपिक प्रस्तुत करें, खासकर कुछ लोग जो नए थे और कुछ लोग ऐसे थे जो काफी एक्सपर्ट थे, तो टॉपिक को रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने से पहले ये सोच लीजिए कि एज अ रिसर्चर यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर सेल्फ, नॉट टू योर सेल्फ बट योर यूनिवर्सिटी, योर गाइड, योर इंस्टीट्यूट। तो आप सब चीज प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपके साथ सारी चीजें आप जब प्रेजेंट करते हैं अपना टॉपिक बेहतर तरीके से, तो आपके गाइड हैं, आपका इंस्टीट्यूट है, आपका डिपार्टमेंट है, इस सबकी प्रशंसा होती है कि आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिला। और जब आपका पेपर थोड़ा भी गड़बड़ होता है तो आपके साथ जो बाकी जो आपका बैकग्राउंड है, जो आप अपनी एक चीज हायरार्की लेके चल रहे हैं, एक सिस्टम आपके साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ वो भी जुड़ जाता है। तो कभी भी चीज़ों को ऐसी प्रस्तुत करनी हो तो आप अपने एक्सपर्ट को दिखा लें, आप पूछ लें, और पूछने के बाद अगर कोई गड़बड़ी हो, इनिशियल यानी फेस वैल्यू हमेशा पेपर की अच्छी रहनी चाहिए। जैसे वो सिस्टमेटिक रूप से लिखा गया हो, उसके जो है कंटेंट जो है अंदर स्टेप्स जो हैं वो प्रॉपर हो सारे, इंट्रोडक्शन से लेकर के लास्ट कंक्लूजन और रेफरेंस तक के सारी चीज़ें, यानी फेस वैलिडिटी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। उसको इनिशियल स्टेज पे देख करके ये कभी नहीं लगना चाहिए कि इस पेपर में इनिशियल में गड़बड़ी है। बाकी तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, और हम पूरे लाइफ कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा कमियां बनी ही रहती हैं, क्योंकि हम सभी स्कॉलर हैं, एक्सपर्ट तो कोई नहीं है। और
हम थोड़ा कम जानते हैं, तो हमसे कुछ और ज्यादा जानते हैं, तो हम इस तरह से सीखते रहते हैं। तो निश्चित रूप से हम सभी ने मिलकर के कुछ ना कुछ सीखा होगा। हमारे इमिनेंट स्पीकर्स थे, उनसे हम लोगों ने सीखा, नरसिम्हा राव जी से सीखा हमने, फिर जो उसके बाद में रजनी मैडम जुड़ी थी, डॉक्टर रजनी तिवारी मैडम, उनसे हमने सीखा। और कल भी हम इसी तरह से सेशन में जुड़ेंगे और भी लोगों से चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे। आप सीखिए और नोट करिए कि कोई पेपर अगर अच्छा प्रस्तुतिकरण हुआ तो उसमें क्या क्वालिटीज़ थी, कोई अगर गड़बड़ हो गया तो क्या कमियां रह गई थी, और इससे अपना पेपर बनाइए। और इसी तरीके से हम फ्यूचर 7th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग कनेक्ट में रहिएगा, और पेपर के साथ आपका सर्टिफिकेट भी जाना है। तो अगर आपके कोई यहाँ आया हो तो उससे आप पहले कह दीजिएगा कि आपका सर्टिफिकेट लेकर चला है, और कोई चीज़ होगी अगर तो हम बाद में उसको देख लिया जाएगा। ठीक है, सभी का धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट हाँ। प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रणाम सभी को। हरिओम सर, हरिओम। हरिओम।